So, is anybody joined from school? Yes, I can hear you. Okay. I'm not sure if anybody joined from the school. Yeah, let me check with. I don't know. So, meanwhile, all who joined, we are waiting for the school team to join us live. Then we will start our meeting for the day. So, thank you all for joining. Very good morning to all of you in India. And if somebody joined from US, very good evening to them. Hey, Pradeep, have you solved your hearing problem?
And meanwhile, just to all participants who have joined, as we have not allowed everybody and we have viewed all of them to make smooth operations of this meeting. So for any conversations or any message, you can use the chat options of Zoom, and just you can let us know if you want to problem facing any problem or any sort of issues. We have also shared the contact point if you are facing issue in joining Zoom meeting, either to audio or any sort of issues, reach out to Pradeep, reach out to Rahul, reach out to Aman, and they will be help you out joining this meeting. So I just had a call with school. They are just getting ready and will be joining soon in 5 minutes or so. So just wait for a few more minutes and we will be on for today's connect. And just to inform you all, some of Navodaya alumni also reached Navodaya. So they will be joining from there
and one of our batchmate Rameshwar Yadav have also reached there. They will be soon live from the JNV team from JV Shivpuri. So Deepak, just for your information, that counter is reached to around 170. So the test and all. Congratulations. Right. What you were trying to test, right? So Yeah, thanks a lot, Pradeep, Raghav bhaiya. Yeah, now yeah, I can speak. So, okay, very warm winter morning to all of you. Yeah, so we are just waiting Navodaya team to join us. Then we will start very soon. right. Yeah, we have reached. Yeah, I Yeah, can see so Ankit, 173. you joined, and lot of others. KP, thank you all for joining and saying. I think I can see a lot of good morning messages. Happy good morning to all of you. And we are just who have joined now. We are waiting for JNV team to on, and then I think JNV team is on as well. So we will be starting soon our meet for the day. Raghavendra, I'm starting the recording on my side, I think, because I will forget about it. Right. Okay, I will also start from my own. I have also unmute the JNV Shivpuri handle, I think. So let's wait to hear from them. Isn't it amazing that because of COVID-19, there's something is so possible to able to join this kind of event, which I never dream about that, after 31 years. Right. This is some sort of unique opportunity, especially so far from our JNV, right? Yeah. Hey, Ankit. So, Raghavendra, do you want to tell some housekeeping thing? People are raising the hands, and do they really want to speak something, or it just? Mm, right. So what we can do instead of raising hands, because Pradeep, how do you want to reach out to everyone who is, because there are a lot of raising hands. I don't know whether they are raising for some purpose. So better if anybody have any say, they can drop the message. They can drop the message in the chat box, because we may not be able to handle what are the problems, why are you raising hands. So better if you can drop the chat message. And in chat, I request Pradeep, Ghanshyam, Aman, Rahul, just keep monitoring the chat messages and let us know if we can do something and we can resolve the issues of participants.
Pradeep, did we get message from JNV Shivpuri? I think somebody joined, but we are not able to connect. So can you check if they are facing any issue in connecting or what? Here you go. Yeah, I think it shows the preparation are still on in JNV Shivpuri, and they will be coming soon online, and we will able to start. Which place is this, Raghavendra? This is the same hall. Which hall is this? Yeah, Team 40, so I have requested them that can formalities can be done later.
Raghav Bhaiya. Yeah, Pradeep. What do you think they're doing for some formality? Yeah, also parallelly, yeah, also I got a call right now, so let me talk to Ravi sir once again. Then I will Okay, sure. let you know everything what message is there. Okay. Okay, sure. Ravi, do you mind quickly sharing your screen if you want to share something? I have given permission only to host. I want to make sure that you can share it. Okay, sure. I can share, but actually, let me share the schedule at least so people can know what we are waiting for. Hey, Deepak, can you see my screen? Yeah. Okay, good. So I have just shared the schedule for meet today, and thank you all for joining this meet. As per our schedule, we are waiting for JNV team to come online and start for inaugurate the meet for the day and welcome speech from the principal chef. So let's wait for a few more minutes. I think some connections or technology issues there with JNV. So we will be able to start. Deepak, can you check? I think there's something Yeah, in the you need to disable that option. Okay, okay. Let me see. Okay, we request all participants don't to experiment too much because this is also first time we are going to organize online meet at such a large level, and we may face some technical issues. So bear with us and try to be in the audio mode only, and just to be there. If you face any issues, reach out to us, but do not experiment much so that we do not interfere our ongoing schedule.
So Pradeep, are you done with the call, or what's the issues in the JNV? Deepak, can you unmute Pradeep? I think he is again facing. Sure. Is a Pradeep Bilaya? Yeah, right. Okay. Okay, thanks a lot. So I have already done a call at that time, and we can start. We have already late by 20 minutes. So yeah, everyone is ready at JNV Shivpuri. So let's Okay. start now. Okay. And Pradeep, I'm making you a co-host, so in that way you can unmute the right people. Is that okay, Raghavendra? Yeah, that's fine. Yeah, sure. So, okay, then in that case, I will stop sharing my screen. And Pradeep, have you discussed which one we need to unmute? Is this JNV Shivpuri from where we will get live? Yeah, it's JNV Shivpuri. They are getting live from. Press the unmute button. They need to unmute from their side. Yeah, I have pressed the ask to unmute, and you can ask them, Pradeep, to unmute themselves. Okay, sure. Let me dial them They are on. once again. Yeah, they are on, I think. Okay. Yeah, so let's start with the principal, sir. So at JNV Shivpuri, can anybody hear us? Ravi sir, Sir? Yeah, Yes, yes, sir. Principal sir. So voice is not coming, sir, properly. Can you come closer to the? Probably Raghavendra, you may want to mute JNV Shivpuri, and you may want to unmute Principal Sir. I Okay. think it will be easier because he's close to mic. Okay. Let me. Okay, Principal sir, I have unmuted you. Can you unmute yourself and? Yes, sir. Are you able to hear, sir? Yes, now perfectly. Yes, Fine. yes, sir. Thank you, Raghavendra ji. First of all, I apologize for a delay in the starting meeting from 15 to 20 minutes. It's not a casual delay due to actually part of a program. It is delayed, but anyhow, I apologize everybody for the delay of 15 minutes. Once again, with me, Honorable Rameshwar Yadavji, SP Lokayukta Sagar, and Alumni 94 passout batch, and maybe in online Bharat Yadavji, Honorable Bharat Yadavji about to join or maybe joined. Honorable Vikram Joshi sir, Deputy Commissioner Personnel, Navodaya Vidyalaya Samiti, Noida, Delhi. Most respected Assistant Commissioner Cluster in Charge, Sri Mariappanji, Assistant Commissioner NVS R.O. Bhopal, and my learned staff members, and my dear respected alumni of at various positions. I'm sorry for telling all the names, but I heartfully welcome every one of you. It is your day. So definitely, automatically, the respect goes and credit goes to you only. And I am very much thankful to, special thanks to Raghavendra ji for hosting and making all these technical support and bringing all the alumni at one platform. I am very happy. And I also am very much happy to be part of
JNV Shivpuri and associating with alumni. I feel it's my not only personal, and every one of you are feeling that the alumni is a major strength to the JNV Shivpuri. Okay, I want to, from the beginning, I joined 1 year back, December 16. Recently, I completed 1 year. But unfortunately, most of my time I spent in the COVID only, from March to December. Okay, out of a 12 months, only 3 months a formal working, and remaining all will be online working only there. Much contact with the alumni not taken place, but so many of alumni have come and meet me, and they extended support for the JNV Shivpuri, for which I am very much happy. Okay, so this is the, I already told, Navodaya alumni, JNV Shivpuri alumni is a very strong alumni, like Bharat Yadavji, Honorable Bharat Yadavji, IAS, Rameshwar Yadavji, IPS, and Ayush Ahmadji, IRS, working in Bombay, and Ankit Gupta ji, working as a senior neurosurgeon, Dr. Ankit Gupta ji. Okay. Mr. Raghavendra ji, working as a software engineer in various in USA, and creating the platform for the alumni in Shivpuri, and he's also one of the member in the Bhopal region alumni also. So I welcome all the members. I welcome all the alumni members for this alumni day in JNV Shivpuri. My special welcome to Honorable Deputy Commissioner Vikram Joshi sir, who is a product of JNV Shivpuri, who is a teacher of JNV Shivpuri, and we are feeling happy, and the family of JNV Shivpuri is feeling happy to be raising your highest position by all the staff and students. And also, I'm also welcoming our Honorable Assistant Commissioner sir, Mariam sir, and all the alumni members, all my staff members, and all my dear students from class 6 to 12 and pass out 12 also. So for this alumni day. And I want to thank, first of all, I want to thank my alumni for initiating the platform, number one. Number two, they have mobilized some fund and making the gate, main archery gate in the in front of the Vidyalaya planning, and about to start shortly. And also they have provided a few mobile phones to the needy students during online classes. I am very thankful the concern over the students for the learning of online classes. And they have taken the initiation to conduct career counseling course monthly once. A counseling cell was created, and monthly once the career counseling classes are started and taking place every month on Sunday. And also made some alumni registration. Almost all Raghavendra ji sent from various batches. 250 students were list was sent from the alumni batches. That one. So all this, and also one important thing I want to tell: when adverse condition, our target of JNV Shivpuri is 3,300. I'm happy to say that we reached the target. But once upon a stage, our target, our registration was 650. Under those circumstances, staff and alumni taken the initiation, and we are able to reach our target 3,300 registration of class 6, and class 9 1,000. We about to cross 1,000. So for which some of the alumni in Pichor and Badarwaj, Kanyadana, they have taken much initiation. They have opened the helpline desk and registered the students, for which I am my heartfelt thanks from JNV Shivpuri for you. And this sort of help will be always remembered by the JNV Shivpuri. And also, I request all the alumni in future will together working together. We request our Honorable MP one needy thing, that is the road condition in the Vidyalaya is very poor. So all our alumni and will meet and will utilize the MP lads for the inside the road, that one. This is one work we require. I request all the alumni. And my second request is what, wherever you are there, whenever you are coming to nearby Shivpuri, please visit and counsel the students.
and help the students. It will be a one of the role model to our students, and they will choose your success career path by our students. So for which I am requesting, whenever you are coming to nearby Shivpuri, please interact with our students, and students will be benefited with that one. Okay. And my third request is now all the students in respective villages, they are taking the online classes. Definitely emotionally, they have one kind of fear that whether they are doing properly or not, some kind of emotional imbalance will be there. So I request my alumni, wherever you are there in your block, please visit such type of students and counsel them and give confidence them. That's my one request. And my last and fourth request for alumni is, there are so many doctors were produced by the Shivpuri JNV. And I request all those doctors will make a one medical camp for the thorough checkup of the students and staff in the I think there seems to be some disconnections from. Yeah, that's why I thought it's me, but it seems like Yeah, maybe the internet connections is not that much good. Maybe let's wait for a minute. I think they will connect back. आणि ते सर्व आपण लावले होते आणि ते अशा प्रकारे वाढत आहे. आणि हे त्रिस्तरीय रचना आपण केलेली आहे. त्यामध्ये पहिला थर आहे आपला हिमालयन पेंटास, हा जो पहिला थर दिसत आहे. I think आणि ह्या सर्व झाडांचं संगोपन गेल्या वर्षभरापासून आम्ही करत आहोत. त्यासाठी बरेचसे प्रयत्न आम्ही केलेले आहेत. Meanwhile, yeah, I think live streaming of this our today's meet is also started. Thanks. Chat box. Even if people facing any problem in connecting with Zoom, they can make ह्या रोडच्या बाजूला directly use on the Facebook or other platform to get live telecast of this meet. Thank you, Pradeep. Yeah, Pradeep, you are still not able to. Yeah, I am able to. Okay, good. I think there seems to be some disconnections from JNV. Yeah, I am dialing them, bhaiya. Okay. Just a second, I am dialing them. सनी सर कुछ डिस्कनेक्शन इशू है, प्रिंसिपल सर नॉट विजिबल ऑन. Yeah, so they are dialing us back. Till then we will start Navodaya prayer.
That's what I get message from them. So okay, so but that also will be started from there, right? JNV. yeah. They are starting Navodaya prayer first, then principal sir will be back. I think that's what I get from Ravi sir. Okay, no problem. So just check which handle we need to unmute. Accordingly, we can allow Yeah, that to. let me dial in once again. हेलो हाँ सर, कौन सा हैंडल से आप नवोदय प्रेयर करा रहे हैं? JNV शिवपुरी और आपके नंबर से? ओके श्योर, थैंक यू. Okay then. Yeah, please unmute Ravi sir number, that is Ravi Navodayan. He will be dialing us from that number. So Okay, done. Yeah, I think he is able to hear it. Yes, Ravi sir, we can hear you. Your voice is coming. Hello, Ravi sir, can you hear us? Hello, sir. Yes, sir, your video is not on, I think. हेलो. हेलो हाँ जी सर. शिवपुरी का ऑडियो खोल लीजिए सर, हो गया. ठीक है, ओके. Yeah, Raghav भैया, please turn on. Am I audible? Yes, Pradeep, Am I am doing. Yeah, JNV. please turn on JNV Shivpuri. Yeah. That is fixed now, so they are live from JNV Shivpuri only. Please turn on that. Yeah, done. चालू है ना? चालू है. अब चालू है सर.
Okay, I think about the prayer done. It's wonderful. I think maybe technology-wise we are not able to hear properly, but I know that everybody have lived the moment and they can remember the one time we used to be there and used to be sing the same prayer. So let's continue moving to our next agenda for the program schedule, and then let me share my screen and I will present the alumni initiative presentations, and then we will go from there. So Ravi sir, anything you wanted to, or principal sir wanted to share before we start for next item? Can it from JNV? Can we continue on our next item for the schedule? Pradeep, can you check if they are planning to share anything, or we can continue? Yeah, Ravi sir is online. Ravi sir, can we proceed further, or is there anything from your end? Yeah, let me dial him. I think he is a bit busy with other stuff, so I am dialing him. Hasan? No. Sir, you can process, sir. Yes, sir. Raghav Bhaiya, we can proceed further whatsoever in our plan list. Okay, sure. So the next stage, alumni initiative presentations, and I'm going to share my screen. So let me Pradeep confirm once you can see my screen.
Yeah, your screen is visible. Okay, thank you. So thank you all for continuing. I don't see your video. I don't know if intentionally you have closed or just not on. Oh, let me Yeah, check. so Raga Bhaiya, can you click on that present instead of this? So it will cover complete screen rather than on center No, it's at the different. bottom. No, it's Yeah, at the it's different, Pradeep, click from on the this. Google Meet, I think. So I will make into the presentation mode, then confirm. Is it good now? Full screen? Yeah, it's perfectly fine now. Okay. So thank you all for joining. We are continuing to move forward on our program schedule, and this is Alumni Initiative presentations for what our alumni of JNV Shivpuri are doing for JNV Shivpuri community, and a short summary of this year initiatives and some plans further, and few other things which are relevant to the audience today. So myself, Raghvendra Chauhan. I am from first batch of JNV Shivpuri, 1987 to 94. And then currently I am working as IT professional in USA, Washington, Redmond City. And I will continue my presentations for alumni initiative. So as part of the program schedule, we have already discussed, so will not take much time, and we will go through each item. So we are currently on the alumni initiative presentations, and bear with me for this journey. It will be, I know, quite informative for you who are new for the first time or who are already part of this initiative. They will be also able to support me for this presentations. So JNV Pangata Shivpuri alumni teams, we are working hard to connect with all the Navodayans pass outs from the JNV Shivpuri, and we have come up with some common objective. And our common objective is to promote connectivity and support among Navodayans from JNV Shivpuri and assist school and fellow alumni for Navodaya objective, come to learn and go to share. So uh, the my presentation is English, but I will also try to cover in Hindi. I know that English we will try to mark on so that it is more understandable to each of us who have joined us today. So सबको पता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए जो हमारा है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हमने जेएनवी शिवपुरी कम्युनिटी के लिए लिए हैं और उस पे जितना हमारे प्रोफेशनल और पर्सनल कमिटमेंट के साथ हम लोग contribute कर पाते हैं, we are doing our best. So the team what we have comprised of, we have taken each 2 or 3 coordinators who are helping us coordinating with their batches, because 27 batches are pass outs from JNV Shivpuri. It's a huge, when we passed out in the 94, it seems to be a not so much of time, but still after seeing all those glimpses of the Navodaya, we still started living the same memories in our memory. So, and how we are connecting, these are some modes of how we are connecting with the teams, active discussions through WhatsApp group, online conference. We are having each monthly uh, conference with our coordinators, and we are trying to progress and monitor what initiatives we are doing. So this is what a brief about the team. Now, who are all part of team, how we are going forward. Next slide is about that only. So if you will see from 1987, there are 27 batches are pass outs. I will stop here for some moment so that all can know who all are. I know there are alumni from different batches. They are already aware of who are the coordinator of their batches. If not, they can know. And the purpose of this team is whoever having some time, some bandwidth to contribute for JNV Shivpuri, they can come and join our coordination team. Whatever we do, they need to coordinate with their batches, whatever small initiatives we are doing. So that is part, that are the some
expectations from this team, and till now they are trying their best in their busy schedule. I know the professionals are from different fields, and whenever they are getting time, they are trying their best to contribute. We'll stop for a moment so that everyone can go through it, and then I'm moving to the next slide. And these are some wherever team presents Sage on the social media and platform, and how the other alumni who are not part of this team can contact us and reach out to us for different initiatives, which I'm going to take it further. So these are some we have tried to get representations from different, because being a establish a connectivity in 27 batch, it's quite difficult, but we have taken, and people are reaching out and they are helping out us a lot. And this is the email address, Facebook, where we are trying to share our details of initiatives on any expectations we are expecting from alumni. This is our Twitter handle, and we have also YouTube channel where we will start. Recently, we have started, and we will start publishing videos or some informative material for students or alumni. So, key initiatives of the year 2020. So, the journey for alumni and JNV Shivpuri, if I will say, it started for me. It started in the year 2000, and I remember Kushwa sir used to be there as the alumni coordinator that time, and we were not aware. Suddenly, one day we got a letter that you are invited for some function in JNV. It was quite surprised, but that I still remember that day. So year 2000, and there was one more, my batchmate Gopal Gill was there. So two of us was there, and that's where what I remember alumni meetings in the JNV Shivpuri started in year 2000. And today we are going to complete 20 years, 2 decades. It's a long time, but still I cherish those memories, and that is the some motivations which triggers me, and I am able to contribute lot and lot more for JNV Shivpuri and other Navodayas around the country. So now what we have seen, that first is to know each of us. So we have started developing the alumni directories and the photo albums so that people can feel connected, and they can reach out for contacts for whichever field they are looking for. Then promote constructive discussions and support among JNV Shivpuri. So through Facebook, WhatsApp, different batches, we are trying to do best on this part, and then conduct alumni guidance and informative sessions for JNV Shivpuri alumni and students. So here also, I will go through each of these in detail, but just a sort what I'm going to cover next. That's what I was saying here. JNV Shivpuri main gate innovations, career guidance and sessions we are working on. Mobile bank initiative is one of the initiatives where we have done good in this year. Now, moving next to these initiatives, some more detail so that we can know more about these. So our batch coordinator helped us a lot in collecting information from alumni, and they shared us in the form so that whenever required, we can reach out to them. And if any different profession, suppose doctor or somebody engineer or somebody in the different government sector, if they have need, they can reach out easily. So we are trying to develop the alumni directory for the whole our pass out alumni, but it is still in progress. But we have made a good progress in the last couple of months. I will try to show. Let me go through. I'm not able to. I will show this directory. So there are around 1020 alumni are part of this directory. There are some issues I am not able to open. I will open at the end of the presentation if required. So, and this is available with our coordinator. So whenever, if they need, they can search out based on the different professions, and the contact number can be provided so that help can be reached out to the needy Navodayas. That is the purpose of this directory. And then we have also created a photo albums. We have got the
different memories of Navodaya's group photos and all. We have started putting on this. I will also share this link so that more JNV Shivpuri alumni can take a look and enjoy their past memories. Next is support among JNV Shivpuri community. This is an important part because the way we are connected, the way we spend 7 golden years in the JNV, the support whenever in the needs, it should be triggered, and it is there what we seen with our different initiative recent. I will go through some of the examples where we have done. We have provided the financial support to the families. So these are the two of our batchmates, first batch who passed away recently, and our batch and other JNV Shivpuri alumni came forward and did a wonderful job in making a best possible donations and for their families. So that is a really wonderful initiatives which is done by different alumni of JNV Shivpuri. Then we have in this couple of months back, we found then Kaka, who was one of the family members of our JNV Shivpuri. He met a accident, and when we came to know that he is facing some financial need, then we contact, and immediately within a few days we provided the required support to him. We have also worked on the financial need of students who are passing out from the JNV Shivpuri. So these are some recently pass outs where we help them. Not only financial support, we reach out to the concerned college, we reach out to the concerned alumni who are part of their colleges and provide every possible guidance and even financial support so that they can deposit the fees on time and they do not need to worry for the immediate financial needs. And the example I would like to mention here that is important, that how we do these financial contributions. We reach out, as I told you, we have different batch coordinators. They reach out to their batches, they collect and they share the detail with us, and accordingly we transfer to the needy people. So one of the example I would like to mention here that will show you how connected we are, whether it does not matter how financially strong you are, but what it matters, the thinking, the thought process for the Navodayans whom you are connected with. So one of the recently pass out students, they have collected some 10 to 11, 10 to 12 contributions, and the contributions are in the form of 200, 150, and even 25. So it does not matter whether you are how financially independent you are, but when you are pass out from Navodaya, this is the difference which you will not find outside anywhere. That they have come out, and when I ask them from where you are managing, they are saying it does not matter. We can compromise our pocket money and make sure that requirements get fulfilled, or some small contributions can be done from our budget. So really commendable thinking what we are looking for, especially in such case of needs whenever we are expecting support from fellow Navodayans. Moving to next slide. JNV Shivpuri main gate renovation, as I think Principal Sir also mentioned in his that we are working quite consistently. We are trying to. I know that we cannot dedicatedly spend some time. Alumni are busy in their professions, but this is really good initiatives, and I appreciate the batches who are involved into and part of this initiative. So the purpose of our initiative is to renovate JNV Shivpuri main gates. We have come up with a good contributions of around 1,59,000 and still counting if required. And then we have a specific, I will would like to mention here the contributions from batches who are from 2002 to 2007. They have really commendable. They have come out, even being not so financial dependent, but they have come out for the need of when Ravi sir mentioned the need of getting a renovate our JNB gate, and that's really appreciable. And this is the pictures what we have come out. I appreciate one of our
alumnus who is civil engineer Rakesh Dakar from 2002 batch. He regularly followed for this design and come up with a design so that constructions and other things can be planned. So this is an image which is going to be a soon in the realities for our JNV Shivpuri gate. And these are the key contacts going forward where Chetan is from 25 batch. He is there nearby to our Navodaya. He is going to he taken the responsibility to get this done. And we are hoping to initiate the work on this initiative soon, construction soon on this part, and we will have a new innovative kit for our JNV. We thanks for Ravi sir's underage guidance or under his support from all alumni. We are moving forward on this initiative. Moving to next. Mobile bank initiative. So this is one needs where in especially in this COVID scenarios where we feel and when we found when we have discussions with JNV, Ravi sir told us that there are some students who are not able to afford mobile phones and they are not able to attend classes and there are a lot of issues facing and school need to communicate the study material regularly to them. So we had discussions with our batches. We have come out how best we can help out, and I appreciate alumni's response, especially from my batch, first batch. They have come forward for whatever possible help they can do, and then we have come up with we have formed a initiatives where proper we can take this for a longer terms, not for a one-time support or one-time help for the students. So what we have decided here, we have contributed money and we have also make it open that if some have old phones which are not that huge, it happens, they can also donate their phones to the JNB and those we will use as a mobile bank for the JNB and whoever in need, they can get use of it. And whenever their need is over, they can deposit again into the library so that other needy Navodayans can make use of it. And there are some guidelines of the functions, how it will functions. We have noted down here. You can go through it. I will not going one by one, but this is how we have planned. Then whoever, when we found there are some 7 to 8 students, we have reached out to each of the students that what kind of problem they are facing. And on this initiative, I appreciate the efforts of Ranveer Singh Dangi of my batchmate, who really even he lives in Shivpuri, but in different part of states, a different part of districts, he went and find out what kind of problems, and then we figure out these 4 students. Then we purchase Samsung new mobile, and we have given to them so that they able to start their uh, online classes properly. And we have also checked with the schools, Ravi sir, that now they are able to start. And we have also hopefully some of the beneficiary maybe there at the school today. We will able to hear his experience, what the change, how this initiatives of alumni benefited them. We can maybe connect later and we will share the experience of the beneficiary. But going forward, this is what consistently we are trying to make, and if required, we will explore further on this. Okay, so the next is the career guidance initiatives, what we are working on. So recently we started some direct sessions with the students, and there when we found out what kind of interest students have, so we have come out with this sort of response where most of the students are looking for like IIT, as usually happens for engineering and for some medicals. And then there are some looking for CA, then there are some looking for competition exams, then there are still for some UPSC targets or some SSC targets. So we are going forward to plan proper sessions so that we can fulfill their needs. And with the interest, there are also challenges which usually happens in the Navodayas because of our background or because of
the rural areas the students who all come from belongs to. So the second, what are the challenges? We are also working on that. So the challenges, what we found, there are different challenges accordingly. So we will try to best how we can utilize our resources and try to reduce. I know that we cannot fulfill all, but we will try our best to how far we can go. So the major challenges are the guidance, which is the 30% student says the guidance. That is what we can fulfill here. And that is what we have some plans, and going forward also we will have more plans which we can truly work on. The other thing is the financial needs. So this is also we are thinking how, as I told you, we have already helped few alumni. We are trying to work on more detailed plans, how more effective we can make it, either through education loans, either through some other means, how we can make use of. There are some government schemes, we can make them aware, how they can make use of it. And some other challenges are like facilities or some motivations. So I think there are more of things which alumni, at least if we will able to establish a good connect, we will able to solve their problems or solve these challenges or come down of these challenges. So we are looking forward with this, and we have some already some planned some sessions for this. So one sessions which is done on 29th of November. We have a detailed report of this. This I can share later if anybody interested. Then we have some sessions for future sessions which are planned to handle different needs based on the inputs which I have shown you in the past. So counseling to handle study, but we found that because of this online study, there are a lot of depression in the students. So we are looking forward for some counseling so that we can uplift their moral and motivate them for the upcoming exams. Then we have as I mentioned you, we have seen the interest. So we are picking up topics which are more of interest. So like the engineering, so we are going to set up one session, planning sessions on. These are the bi-weekly sessions which we are planning, and we will see if more can be required. We can see if more can be provided on the other as when required. So these are some sessions which we are looking forward, and we have the resource persons, we have the specialist or in these areas, and we are in touch with them to provide the best possible support for them. So these were some recent initiatives which were part of this year. Going forward, there are a lot of which are still not fulfilled. We are continue to work on those initiatives in the upcoming year. We will also plan to some awards and recognitions for alumni who are doing good, who are doing not good for themselves, but also assisting other alumni or students. And for in the same way, if any students is doing good, I have done this sort of student of the year award sometime back when I used to visit Navodaya in 2010 or 11. Some people may be remembering that. I will share some quick references if anybody want to go. So would like to go take this sort of initiatives where the people, alumni or students get motivated and they can come forward for the objective or initiative what we plan for. We are also planning to develop e-magazines where if at least not annually, if we can come up with some sort of where we can publish good work by alumni of JNV Shivpuri community and some good activities where our students are involved in either in sports or all, so that all a part of JNV Shivpuri community can be benefited with this. And any suggestions as part of, I see a lot of alumni and the students all are part of this. So we will welcome any suggestions and we will look forward in our capacity and we will work on that part. Next, connecting Navodayas beyond JNV Shivpuri. So till now I was just focusing on the part where we are talking about what we are doing for JNV Shivpuri community. But now as the technology is helping us,
we are connecting Navodayans beyond JNV Shivpuri. So though most of us are aware, but just throwing some lights. So how online platforms are helping us in connecting Navodayans from other JNVs and MPs and other states and even countries. So when principals are also mentioning is for recent NBS initiatives, I was part of one MP where they have created the MP level group where at least 20 to 30 different JNVs representative are there. They are doing good. So we have connected with them. If anything good is happening, we will share with them. If something is happening good, we will also share with our JNB team so that they can get benefited. As part of this website, JNBalumni.com, as I told you that I initiated or started my journey in 2000. From there some motivate me to do something. And when it was early time of my IT, I founded this website JNBalumni.com where the peoples can connect with each other. I will quick through as time permits some brief or how people can get benefited of this, and that will able to connect you beyond JNB Shivpuri, even some other states, other countries around the world. There are some Facebook groups which you all are already aware. INA is one of the groups. I was part of that team. We have put a lot of efforts. If we will get some time, we'll go through that. And IJA is there, Navodayans Worldwide Group, Global Navodayans is there. So Global Navodayans, which I am also currently part of, this is trying to connect Navodayans worldwide from different countries. So why I am focusing here, if you want to support even not in the JNB Shivpuri, if you have something outside our district, in a state, or even in the national level, we have the people who are coordinating different groups. We can reach out to them and we can make sure it helped you. Even if you have out of India, suppose in the Europe or somewhere in the Middle East, anywhere, we have Navodayans everywhere. So you can just reach out, especially you can reach out to us, and I am connected to most of the groups, and we will make sure that helps reach out to you. So it is not just to JNV Shivpuri. Because of this technology, digital, uh, we are not able to restrict to one person or one area. We are connected worldwide. And there is a recently YouTube channel or live streaming started by the Navodaya Info name on the YouTube channel, and that's what I was mentioning. Pradeep is coordinating this, and he also helped us for this our today's meet to get it live on this platform. So they also have some plans of live streaming of either weekends, or we can reach out to them. So whatever is, suppose something is happening in the Maharashtra, something is happening in the Bihar, that if they are doing live, you can get benefited of these live streams. NVS alumni discussions and expectations. Recently, there were some initiatives and some alumni meetings got conducted from the NBS different regional level, and then they have discussed some expectations. These are some briefs. We are also trying to work what we can do as part of our initiative, but hopefully there's, and the GNVs and the NVS will also come forward to make it. So in the brief, what I will mention, they are looking for promote connectivity, what I already mentioned. They are also, this is good thing, they are looking for mentor to students in career for 4 to 6 years and develop mentor and mentee relationship. This is what, because once we pass out, एक बार नवोदय से पास आउट होने के बाद हमारा कनेक्शन टाइप का टूट जाता है, तो उसके लिए we, this is if we can develop some mentor and mentee relationship, we will work on this part. Alumni who got settled in their careers, if they can help out the brilliant student till they have achieved or till they have got their career. Lecture series and webinars to students. So this is again career sessions I mentioned. We are working on career guidance. This is also one of the, we already covered helping secure career of Navodaya students. This is much in the need. And entrepreneur education is very much in need, because
We cannot wait for the jobs, government jobs, and especially in our time, we used to fight a lot, and the competition is growing day by day. The people have to think about. In today's also, we have some of the good speakers who will throw more lights on this. Thank you. That's it from my presentation side. I know there will be some questions or some queries on the initiatives which I presented. So I will request if you can drop on the chat box. We will try to cover as part of this sessions. We will also planning to cover a question and answer sessions after our other alumni will address the meet, and we will try to cover few. If not, we will reach out to you and try to uh, hello. Yeah. So we will try to reach out and we will try to respond whatever queries you have regarding these initiatives. And if you want to be part of any of the initiative, you are welcome. If you are part of JNV Shivpuri or anyway, because that remotely, if we can contribute, it is quietly benefited to the Navodaya family. So that's it from the alumni initiative presentations from as part of this item for our today's program schedule, and then we will move to next schedule. And next we have, yes, we have schedule for Vikram Joshi sir. Let me check if he available. Yeah, I think he is available. Let me unmute and if he is able to. Hello, Joshi sir. Can you? I have unmuted you. Can you hear us? Yeah, Raghavendra, can you hear me now? Yes, sir. Thank you. Nice to see you. Oh my God, I can see so many faces over there. What a surprise! Sony, that Ankit is, I can see there. Raghavendra, I have already seen you. My Right. goodness. You were telling me that it was 20 years back when you started it. And I remember that it is almost half of my life when I started it. I was 23 or 24 years old and coming with all kinds of a nonsense from cities to a rural India. And it took me a lot of time to adjust. But you were so innocent, all of you, that you took me there. And rather, I lost myself in there and grew with you. That's the fantastic thing that happened कि तुम लोगों के बीच आकर के शायद मैंने अपनी जर्नी तुम लोगों के साथ ही शुरू की. मुझे भी लगा कि हाँ, there is something in life. And that's so, ये नई बिल्डिंग से तो बहुत जुड़ाव सा लगता नहीं है. पता नहीं तुमको शायद लगता होगा. मुझे तो वो पुरानी बिल्डिंग का टूटा हुआ छत, वो मेस, वो पीछे, I mean everything that about the old school is so mesmerizing, so touching. बार बार वही याद आता है. कई बच्चे इनमें से ऐसे होंगे जो आज, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा वो आज यहाँ हैं. I mean उनके स्ट्रगल वो जानते हैं. Everybody has a story. They must have gone through a lot of pain where they have reached. क्योंकि जिस हालात से हम आए हैं, जिन जगहों से हम आए हैं और जिन परिस्थितियों से हम आए हैं, बहुत सामान्य नहीं थी और आज भी सामान्य नहीं है. सो अभी राघवेंद्र कह रहे थे कि वो ई मैगजीन छापने वाले हैं. मुझे तो लगता है कि इन सब से एक एक छोटा छोटा राइट अप ले लो और उसकी एक बुकलेट बना लो. हर किसी को पढ़ने का मौका तो मिले कि किसने कितना संघर्ष किया है. लगता है अंकित ऐसे ही डॉक्टर बन गया, लगता है वो इतना बड़ा सर्जन ऐसे ही बन गया, भरत यादव ऐसे ही आईएएस बन गया. बहुत आसान नहीं है वो जर्नी. बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, जिनके संघर्ष के दौरान मैं उनके साथ था. धीरे धीरे बदलाव आता गया. बट आई स्टिल फील कि वो भी बच्चे होंगे जो मेरे साथ जंगल लकड़ी लेने गए होंगे, जो हमारे लकड़ियाँ गीली हो जाती थी और हम जंगल से लकड़ियाँ लेके आते थे और फिर पूरियाँ बनाते थे. वो आधी कच्ची पूरी होती थी और मेरा काम होता था सबको डांट पे लाइन लगाना, डरा के रखना, डांटना. आई डोंट नो, देयर वाज सो मेनी थिंग्स. कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं. आज बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. इट्स ऑलवेज कमिंग बैक. Everybody has to come back. You cannot fly very far. Wherever you fly, you have to come back. And come back where you really feel touched. और हमारे साथ मुश्किल यह है कि अगर हम चंद्रमा में भी पहुंच जाएं तो बात शिवपुरी की होती है. चंद्रमा भी उतना खूबसूरत नहीं लगता जितना शिवपुरी लगता है.
लोग बहुत मिलते हैं, बहुत किस्म की रोमांचक बातें होती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन मेस का पोहा, मेस की पूरी, हमारी बातें बदलती नहीं। वी आर सो ऑब्सेस्ड विद दैट लाइफ कि उससे अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। आज बहुत कुछ मिलता है, बहुत अच्छी जगह हम जाते हैं, बट इन द पार्ट ऑफ दैट there is always that Shivpuri. What I mean to say that, what a beautiful initiative you have done, Raghavind. ऐसा नहीं है कि तुम उन्हीं लोगों को मदद कर रहे हो. I have also reached out for you. मैंने तुमसे भी कई बार मदद ली है. अंकित is there. There are many other. ये एक ऐसा बॉन्ड है ना जिसको जिसको जिसकी कोई परिभाषा नहीं है. It's a seamless and very few people can understand it. हमारी हमारी दुनिया से बाहर हम लोगों के, जो हम लोगों को नहीं जानते, जो नवोदय को नहीं जानते, उनको हम लोगों को समझना बहुत मुश्किल है. इट इज इम्पॉसिबल. इवन हमारी स्पाउस, हमारे रिश्तेदार, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड. उनको हम क्रेजी से लगते हैं, बट वी आर, क्या कर सकते हैं, वी आर. लेट्स एक्सेप्ट आवरसेल्फ द वे वी आर, एंड वी फील फॉर इट मींस वी फील फॉर इट. 30 साल बाद भी मेरे बच्चों के साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो. मुझे आज भी याद आता है वो टीवी का मैच चल रहा होता है, तो एक कोई कहता था सर वो एंटीना पे कौवा बैठ गया है इसलिए वो थोड़ा झिलमिल आ रहा है. तो हम उस कौवा भगाने जाते थे कि ये कौवा भाग जाएगा तो शायद हमारा हमारा मैच ठीक आ जाएगा. तो कोई मेरी पाँव को इस तरफ बैठा होता था, कोई मेरे पाँव के इस तरफ बैठा होता था. हम इकट्ठा सीटियां बजाते थे, ताली बजाते थे. आई मीन नोबडी कुड हैव लिव्ड दैट लाइफ. बहुत लग्जरियस लाइफ हो सकती है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ हो सकती है, बहुत फैसिलिटीज हो सकती हैं. आई डोंट नो, बहुत कुछ हो सकता है जो दुनिया में है, लेकिन वो जो इमोशनल कोजीनेस थी, जो कंफर्ट था, पता नहीं कैसे लगा तुम बच्चों को. मुझे अभी आज लगता है कि 6 क्लास के बाद आए हुए बच्चे, 12, 13, 14 साल के बच्चे हम लोगों पर इतना ट्रस्ट करते थे मोर देन देयर लाइफ. आई मीन इट इज इम्पॉसिबल. पता नहीं, शायद तुम ही लोगों ने हमको रिस्पॉन्सिबल बनाना सिखाया. शायद थोड़ा बहुत पेरेंटिंग जो हम कर पाए वो भी तुम ही लोगों की वजह से. वेल, my all good wishes to all of you. It's so nice to hear. Raghavendra, you are doing a great job. किसी भी रूप में आप वहां पहुंचते हैं, it's not about finance. In whatever way, emotionally, physically, financially, socially, culturally, politically, if you go back there, it's not for the school now. No, it's for you only. अगर मैं तुमसे जुड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए नहीं जुड़ रहा हूं, मैं अपने लिए जुड़ रहा हूं. It feels me good. So जो जो कहीं है, जहां भी है, अगर वो जिंदगी में सुकून पाना चाहता है, कुछ अच्छा महसूस करना चाहता है, he should go back to the roots and must go where he feels. Those were the times जहां हमको वापस चल करके लगता है कि हाँ, बहुत कुछ अच्छा भी होता है. संघर्ष की चलता रहता है, बहुत कुछ होता है, समय बदलता भी है. इट्स, और आप लोगों ने जहां तक पहुंचे हो, वहां पहुंचने के लिए आप लोगों ने बहुत कुछ किया है. हमारा रोल तो बहुत छोटा सा था. कम से कम मैं तो ये मानता हूँ मेरा रोल तो सिर्फ इतना था, तुमको डांटना. बल्कि मुझे एक याद है, एक मेरा शेड्यूल होता था, मैं 9:30, 10 बजे हॉस्टल में जाता था और सबकी रफ कॉपी पर सिग्नेचर करके आता था कि तूने कल जितना काम किया अगले दिन मुझे कम से कम 12 पेज लिखे हुए मिलने चाहिए. तो कभी कभी मैं अचानक पहुंचता था तो कईयों की कॉपियां, किताबें उल्टी पड़ी होती थी. कोई किसी के हाथ में कुछ भी दे देता था. बल्कि एक तो याद है, कोहली थाली लेकर के बैठ गया, जिसको लगा कि जोशी सर आ रहे हैं, तो वो थाली पढ़ने लगा. जब बाद में आधी नींद में किसी ने बताया अरे तेरे हाथ में थाली है, तो वो घबराया, उठ गया. आई मीन it's something no teacher can narrate such incidents in their life. And I was so happy कि उनमें से एक बैच तो मेरा ये शायद अंकित वाला बैच था, जिनमें मैंने इनको बोला था कि सब मेडिकल कर लो, तुम सब डॉक्टर बन जाओ. पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने किया भी और ये सब के सब डॉक्टर भी बन गए. एक दिन आए मेरे पास, बोले हम सब डॉक्टर बन गए. तो आई मीन this is what happens. I'm so pleased that Raghavind, you gave me a call here, and I'm very happy to address you all. My best wishes to all of you, and I'm very happy that you are there. मैंने तो बहुत साल तुमको भाषण दिया है, मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा. मैं अब सुनना चाहूँगा लोग क्या कहते हैं. बट
whatever you say that my existence, whatever I am today, is because of Shivpuri, whether as a teacher or as a human being. Thank you very much for inviting me. I appreciate all your efforts. Thank you very much, Raghav. Thank you. Thank you. Thanks a lot, sir, for again revising those memories. Yeah, Raghav Bhaiya, we can't hear you. Yeah, can you hear me now, Pradeep? Yeah, go ahead. Yeah, so yeah, thanks a lot, Joshi sir, for reminding some of our memories with you. It is really unforgettable, the moment which we have spent that time. And obviously, we are going to moving forward in our program schedule, but we are still connected with our old memories. And as you mentioned, you still remember that old building. So that is the next thing what we are going to do. So we are going to play one song which will remind some of the old memories. Let me share my screen and play that song. Hey, Pradeep, can you hear the song? Raghavendra, you have to click on share computer sound. So go on the view option and there will be something called share computer sound. Stop video. Where? In the top? Yeah, it should be in the top. On your mic button. On Mic your button. mic button. Yeah, share Yeah, computer. on your mic button, there is a arrow. Okay. On that you can click. Can you? Can Yeah, you now hear it's now? yeah, now it's Okay, available. good. So this wonderful song, let's get tuned with us. I will make full screen. तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय, कुर्बान तुझ पे जगत की हर शय नवोदय, तेरी जय नवोदय। खाली सफा था जब तेरे आंगन में आया, तेरी ही ममता ने मुझे जीना सिखाया। 100 बार लिखा जिंदगी तूने जो मुझ पर, वो ही मेरी हर रग में बहता है नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। इंसानियत का पाठ तुमने ही पढ़ाया, दिखला के असलियत मुझे बेडर बनाया। जब भी धर्म की आड़ में होता गलत कुछ, फटते हैं मेरे जहन में कोई शय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। रोया हूँ जब बीता हुआ कल याद आया, बर्बाद था आबाद तुमने ही बनाया। आंसू था मैं तो शाद तुमने ही बनाया, यूं
रह नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। तूफान कोई भी मुझको आज हिला ना पाए, औलाद हूँ सूरज जिसे पिघला ना पाए। राहों से अब कोई मुझे भटका ना पाए, है राह मुझे दिखला रही एक लय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। अब द्योल को ये कहते कोई शर्म ना है, ये मेरी कोई जात कोई धर्म ना है। छोड़ा ही तूने मुझ में कोई भर्म ना है, ना ही कोई छोड़ा है तूने भय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। कुर्बान तुझ पे जगत की हर शय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। Teri Jai Navodaya. So this song is written or sung by some Punjab state alumni, but this beautiful work of connecting with our memories is done by none other than our Navodayan Ankit Gupta, and he is the next one who is going to come for our as part of our program schedule, and he will also share some memories, very good scripted or edited by him. We appreciate to refresh all those memories what even Joshis are referring to recently. And with this, I welcome Ankit. Ankit, I will going to unmute and then. Hey Ankit, can you unmute yourself? Yeah, I have unmuted. Can you hear me now? Yeah, I can hear you. Yeah, Ankit, welcome. So, good afternoon, everybody. Joshi sir, the principal sir, and all my teachers today in this virtual meeting. So, everybody has, Vikram Joshi sir has already explained too many things. He has narrated many things nicely. Nothing is left for me. So, at the outset, I would like to thank you, Raghavendra, and all the organizing committee for this virtual meet, for giving me the opportunity to speak in front of you now. Let me introduce myself. I am Dr. Ankit Gupta, presently working as a neurosurgeon in Indore. So I belong to Shivpuri, although my journey started from a very small place at the border of MP and Rajasthan, from where I started my journey. In 1982, my father came to Shivpuri, and then what a wonderful luck or fortunate I had that I got selected in Navodaya examination in 1987. So it's been around 33 years now when I came to the gate of JNV with lot of questions, ignorance, innocence, abounding heart, and wet eyes. But what JNV has given us, everybody knows. What they have made us, everybody knows. If I wouldn't have been JNV, probably I would have not be a doctor.
So then after JNV, I passed my examination, a competitive examination. That was the pre-medical test, and then I got admission in MBBS in MGM Medical College Indore in 1995. Then completed the MBBS in 2001. Then another competitive examination, I passed it again, and I got admission in general surgery. Then I completed my post-graduation in 2006. Then I worked with some neurosurgeons, and again, I was firm to become a neurosurgeon. So I worked with some neurosurgeons, and then I got selected in one of the most difficult examination in medical field, that is MCH. And I took admission in 2008 in MCH neurosurgery in PGI Chandigarh, which is one of the premier institute of India. After that, I am working as a neurosurgeon in various places, first in Bhopal, then in Indore. I have been to in Nairobi for 1 year. Then I am back here in Indore, presently working as a chief neurosurgeon in Bombay Hospital, Indore. So, you know, this medical journey has been so long. I mean, in 15 years, it took 15 years to reach to my goals. And so there has been many times, I mean, ups and downs in this 15 years. There were some challenges, financial challenges. There were a lot of competitions. There were a lot of competition failures. And, you know, re-examination, the exam paper leaks. I mean, whatever you can think we have faced. And it was not only that, the passing the examination, going entrance, passing entrance test and getting into the colleges. Even in the colleges, when in the residency period, we had lots of sleepless nights, you know, more than 48 hours duties in the wards with the patients, and a lot of depression, physical and mental fatigue, and sometimes, you know, emotional outbursts. But how could we sustain? I mean, it is very difficult, but how could we sustain? So what Navodaya has taught us, what base Navodaya has made us, that made it possible. So 4 things I usually count when, apart from our classroom teaching, and even I say for the upcoming aspirants, that the 4 things what you learn from the Navodaya is hard work, perseverance, self-confidence, and discipline. And this makes the difference. No other student can have those qualities in very deeply inculcated. So you remember when we were in the Navodaya, we used to start our day from a bell, and then just getting out of the bed. So waking up without your will. So that was the perseverance. Then you have to work for yourself, you have to work for your room, you have to study, you have to clean the grounds, you have to make the grounds. And I remember we used to make the cricket pitches. So those things have taught us the hard work. Then the teacher support, our competitions, the games, sports, these have taught us, I mean, they made us the self-confident. And then the hard work or discipline, you know, for everything we are standing in the line. Like Joshi sir just said that he was there to make you stand in a line. So this all things made us disciplined, and we follow this discipline. Even today also I follow all the disciplines what I have learned. So these are the things which have made actually different us, and these are the things which have helped me to walk tall in whole of my career. Nothing much to say. I just for advice, I mean, as we have already, Raghavendra has already spoken regarding the guidance and career guidance. I am ready to help everybody if you want to come for the medical career. Those who are looking for the medical career, they just have to see that it needs a long duration, a lot of patience is needed, slightly costlier as compared to the other one.
and a lot of exams, competitions. So you have to mind that, and of course the familial background also. Then who are already preparing for the NEET examinations or medical entrance examinations, my words are the key to success is the target-based study. So you just stick to that. Anything else in detail you want, you can contact me. You can get my number from anywhere. And those who are already into the medical line, those who are pursuing the degrees or maybe the post-graduation or the graduation, for them, I would suggest them to be more in the clinics. Books, obviously, they will help you, but what help is clinics that make you better person, a better doctor. So and for studying, you should know everything about something and something about everything. So that's the key. Then at last, I'm always there for Navodaya family. As Joshi sir has just mentioned, that we are actually very much deeply attached. Whenever I think of Navodaya or like that song, beautiful song, there is goose erection with me. I started having goose erection. And principals are mentioned about the health checkup or medical camps. So I think we have discussed once or twice in the with Raghvin, and it was in the pipeline, but somehow this corona has affected many things. So we will be planning that the medical camps, or not only for the students or teachers checkup, for charity also we will plan the medical camps under the banner of JNV, and probably in 2021 it will be in the picture. And on 24th January there is career guidance about the medical career. So I'm there always. Anybody can fetch me out anywhere. I will share my number, and that's it. Thank you for giving me the opportunity. And Raghavan, it's up to you now. Hey, thank you, Ankit. I know whenever we need anything, you are always there for Navodayans, any initiatives. I know even in our batch, you are always ready to come forward for any cause. We really appreciate, even in the busy schedule, you must have in your professions, but we really appreciate the way you come forward for any Navodayans need. And we look forward for more and more guidance from your side for students or alumni. Thank you very much for even today's coming out and spending your valuable time. And then next, as part of our address, we have Ajad Ahmad Kohli, and I think he messaged me that he got into some personal emergency and he will not able to, but still I am checking in the participant if he could be able to manage. No, I think not. So just brief, even I will tell. So Ajaj is the migrated students from J&K. That time there was a migrations in our time from J&K Navodaya. And very brief period of time he stayed at JNV Shivpuri, but he have lot of good memories and have sharp memories when we have met last time in Delhi. We were there in Delhi. We had a meet of our batch. We really shocked to see what one sort of memories even in that short period of time he have, and he have also achieved and cleared the IRS, and currently as a commissioner of customs he is there in Mumbai. So I think maybe sometime next time, this time he is not available to address you the JNB Shivpuri community, but maybe sometime next we hope he will address and we will get benefited from his experience. Next, I got a message that I think Ramesh should have some priorities, so I will check if he want to address. Can I not able to find the ID? So can from JNB Shivpuri anybody from which ID he want to address? Ravi sir, can you hear us? Yeah, just unmute Ravi sir. I think I just got his message, so definitely Okay. he can speak from Ravi sir ID. Okay.
So Ravi Navodaya, I don't able to see online. Okay, let me dial him once again then. Okay. Should we unmute JNV? Shivpuri? Let's see which ID he is using to address. I think I don't find his ID here in the participants. So meanwhile, I think though all knows that Rameswar also belongs to the first batch from 1987 to 94, and he have achieved and I think clear the PSC, become DSP. Then currently he is their SP in Sagar. So we will hear more from himself. But yeah, currently he is SP Vigilance Sagar Division in Madhya Pradesh. So he is also helpful for Shivpuri Navodaya for any cause and whenever we need, and even for guidance purpose, I think is quite reachable for alumni or students of JNV Shivpuri. Yeah, Raghav Bhaiya, can you unmute JNV Ravi sir Shivpuri. or either JNV Shivpuri ID? He is ready. Rameshwar Vaishwa is ready. Yeah. Okay. I have unmuted JNV Shivpuri ID. Can we check somebody at JNV Shivpuri? Yeah, principal sir just to unmute JNV Shivpuri, whereas Ravi sir asked Okay. me to No. join with his. Principal Bit sir, let me confusion unmute there. principal Just sir. bear with us. Okay, let me unmute principal sir. Principal sir, I have unmuted. Okay. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Are you able to hear? Yes. We can hear. We can see you. You can continue. Yes, sir. Yes, I think there is some disconnect. Hello. Yeah, Hello. I think now we Hello, can. Raghavendra. Yeah, now I can hear you. Yes, Rameshwar, you can continue. Maybe if somebody else is there in the room, they need to mute themselves. The speaker as well. एक बंद कर दीजिए, एक ऑफ कर दें इसको, वो चालू है ना, अनम्यूट है या फिर उसको बंद किया जाए। Raghav Bhaiya, can you unmute principal sir as Rameshwar Vaishwa has ready to speak? Yeah, I have already unmuted principal sir only. Can you unmute principal sir? Okay, I have done. It seems he is on mute. Yeah. Yeah, now it's Yes, Ankit. done. I think I have. We are connected now.
Yes, we can hear you, Ramesh sir. Continue. Hello. Hello. Yes, we can Hello. hear you. Continue. Yes, Ramesh sir, we can hear you. Ankit, we can continue. Yes, can you hear me? थैंक यू, थैंक यू। मित्रों, सबसे पहले मैं जोशी सर से शुरू करके और हमारे सभी पुराने टीचर्स को सभी को प्रणाम करता हूं। और आज मैं एक दिन के अवकाश पर था, मैं नवोदय के कैंपस में ही आ गया था, तो प्रिंसिपल सर के आशीर्वाद से यहीं आप सभी से बात करने की स्थिति में पहुंचा हूं, इसके लिए धन्यवाद। आज मेरे साथ और हमारे साथी असिस्टेंट प्रोफेसर गोपाल गिल साहब और असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे वीरेंद्र कौशल जी और हमारे मित्र रणवीर सिंह और अन्य साथी और करेरा से भी कुछ अन्य मित्र यहाँ आ गए हैं नवोदय में। तो मैं राघवेंद्र को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि भाई आपने ये बहुत बड़ा प्रयास किया है और हम लोग को कोऑर्डिनेट किया और ये अवसर दिया। अब मैं शुरू करूँगा अपने परिचय से कि ड्यूरिंग 87-88 एक काफ़ी पिछड़े हुए गांव से मुझे ये अवसर मिला कि मैं नवोदय में सेलेक्ट हुआ और उस समय मेरी एज जो है मात्र 9 साल 3 महीने करीब हुआ करती थी, काफ़ी छोटा था अपने मित्रों में और काफ़ी सारी चीज़ें थी और मैं समझता हूँ कि यदि ये अवसर ना मिलता तो शायद हम आज भी वहीं होते। तो नवोदय में रहते हुए क्लास 6 से जब चीज़ें शुरू हुई तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस जो गांव में रहते हुए कभी हमें नहीं था, धीरे धीरे अपने दोस्तों के साथ अपने टीचर्स के साथ चीज़ें समझ में आई और समझने का प्रयास किया और उसमें बहुत सारे मित्र, खास तौर से मैं 2-4 लोगों के नाम लेना चाहूँगा। उसमें कपिल गोयल, अंकित, राजेश, ओम प्रकाश जो कि अब दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं हैं, और ऐसे कई सारे मित्र थे जो डेली रूटीन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से सीखते रहते थे। और मैं ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था जो क्लास में 6, 7, 8 नंबर तक रैंक में लाया करता था और उस समय मुझे लगता था कि मैं काफ़ी पीछे हूँ, पर मेरे दोस्तों ने जो है मुझे आगे बढ़ने में हेल्प किया और 10th के बाद फिर मैं कॉमर्स स्ट्रीम में चला गया। देन कभी सोचा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के करियर में जाएंगे, बट लेटर ऑन 12th के बाद वो परिस्थितियां नहीं बन पाई, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन करने के साथ साथ सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन शुरू किया और उस समय MPPSC में अच्छा पोस्ट जो है आया करते थे लगातार, तो उनको टारगेट करते हुए दूसरे प्रयास में सेकंड अटेम्प्ट में मुझे 2000 PSC में सफलता मिली और मेरा 19वां रैंक था स्टेट में और उस दौरान मुझे DSP के पद पर सेलेक्ट हुआ और 2001 में मैं ज्वाइन किया एंड देन ऑन 12 साल DSP रहे, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, दतिया एंड सम अदर डिस्ट्रिक्ट्स। और इस दौरान ये शेयर करने में मुझे खुशी है अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ, कि जो भी बेस्ट पॉसिबल था पुलिस के जॉब में वो मैंने अपनी ओर से पूरा करने का प्रयास किया और भारत सरकार के द्वारा इस चीज़ को रिकॉग्नाइज भी किया। ईश्वर की कृपा से और सभी मित्रों की शुभकामनाओं से भारत के राष्ट्रपति की ओर से 2 बार प्रेसिडेंट मेडल फॉर गैलेंट्री आपके इस भाई को मिला और लेटर ऑन स्टेट गवर्नमेंट का जो पुलिस का हमारा सबसे बड़ा अवार्ड होता है KF रुस्तम जी अवार्ड, राज्य सरकार ने पिछले साल वो भी प्रदान किया और सिंहस्थ में अपनी सेवाएं 2 बार देने के लिए भी सिंहस्थ मेडल भी दिया गया। तो मैं समझता हूं कि जितनी मेरी औकात नहीं थी उससे ज्यादा मुझे मिला और ये सब सिर्फ और सिर्फ नवोदय के कारण से संभव हो सका, अदरवाइज दायरा बहुत ही छोटा होता। और ये जो भी कैनवास मिला या जो भी अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत ही मेरे पास शब्द नहीं है, जितना थैंक्स कहूँ, थैंक्स बहुत छोटा शब्द है।
मैं जीवन भर आभारी हूँ और रहूँगा कि कहाँ से निकाल करके और हमें ये कितना बड़ा आभा मंडल दिया, एक अवसर दिया सेवा करने का। खास तौर से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो पुराना स्कूल था और जो स्टाफ उस समय जो हमारे टीचर्स थे, जोशी सर, एक हमारे कॉमर्स के सर थे गजेंद्र सिंह सोन साहब, उस समय अरुणा दीदी, शबाना मैडम, आदरणीय कुशवाहा सर, जो जब इंग्लिश में ग्रामर में कोई मिस्टेक हो तो अच्छा से कान खींचा जाता था, तो हमारे सभी मित्रों को याद भी होगा और उसी का कारण है कि हम आज कुछ करने लायक हो पाए। खास तौर से अब मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे साथी जो है कुछ जैसे अगर फर्स्ट बैच की बात करेंगे तो हमारे दर्जनों लोग जो है वो डॉक्टर्स के फील्ड में चले गए, इंजीनियर्स भी काफ़ी चले गए फर्स्ट बैच में से। बाकी हमारे मित्र लोग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में टीचर्स और अन्य अच्छी जो है पोस्ट पर चले गए हैं। और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि अभी भी सिविल सर्विसेज में नवोदय का पार्टिसिपेशन मुझे कम दिखता है, और बाहर के नवोदय से हो सकता है पर्याप्त लोग हों, पर हमारे नवोदय से मुझे लगता है शिवपुरी से हमारा पार्टिसिपेशन कंपैरेटिवली कम है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिविल सर्विसेज की तरफ भी जो नए हमारे छात्र हैं, जो नए हमारे एलुमनीज हैं, जो मित्र हैं हमारे, वो इधर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि ये एक बड़ा कैनवास रहता है। आपको डे टू डे लाइफ में लोगों की हेल्प करने का, बड़ी चीज़ों में डिसीजन मेकिंग का भी आपको अवसर मिलता है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हालांकि आप जहाँ रहें वहाँ भी बेहतर कर सकते हैं। पर मेरा अनुरोध ये है कि सिविल सर्विसेज की तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। और यदि यूपीएससी में देखेंगे तो वहाँ आप जो है पर्टिकुलर, यदि पुलिस की मैं बात करूँगा तो ये वो फ्रंट है जो 24/7 ना कभी बंद होता है, हमेशा ये सेवा के लिए तत्पर रहता है। बट दुर्भाग्य से इसे उतनी जो है उस तरह की सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा जाता, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिवली अच्छे लोगों की कमी है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि किसी सोसाइटी को वैसी ही पुलिस मिलती है जैसी वो सोसाइटी स्वयं होती है। यदि अच्छे लोग आएंगे तो अच्छी पुलिस मिलेगी, अच्छे बैकग्राउंड के, अच्छे एजुकेशन के। खास तौर से मैं यूं कहना चाहूंगा कि यदि नवोदय के लोग ज्यादा आएंगे तो ज्यादा बेहतर पुलिस बन सकती है। एंड आई होप सो कि आगे इस दिशा में काम होगा। 3 लेवल पर आप जो है पुलिस सर्विसेज में एंट्री कर सकते हैं। अगर यूपीएससी से करें तो डायरेक्ट आईपीएस रिक्रूटमेंट, अगर स्टेट सिविल सर्विसेज से करेंगे तो डायरेक्ट डीएसपी रिक्रूटमेंट, और जो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड है अपना, अगर वहां से करेंगे तो आप सब इंस्पेक्टर के रूप में भी कैरियर शुरू कर सकते हैं। जैसा अभी पिछली थोड़ी से मैं डाइवर्ट हो गया था, बात जहां चल रही थी, साल के बाद फिर आई गॉट देन कटनी, सतना एंड अदर्स जो है काफी जिलों में रहने का अनुभव मिला। अभी पिछले 2 साल से एसपी एंटी करप्शन और एसपी विजिलेंस या लोकायुक्त, ये प्रोफाइल में देख रहा हूँ। इस दौरान कई हमारे मित्र भी सहयोग में आए, और आप सभी साथियों से मेरा ये अनुरोध है कि हमारे जो भी नए मित्र हैं, जो नए हमारे साथी हैं, उनको पर्सनल लेवल पर और एल्यूमिनी का हमारा जो फोरम है उसके लेवल पर जो भी गाइडेंस बेस्ट पॉसिबल है उसके लिए हम हमेशा तत्पर हैं। और पर्सनली मेरा नंबर और कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह राघवेंद्र भाई ने शेयर किए हैं ऑलरेडी। और बस मैं ये चाहूँगा कि यदि पुलिस से रिलेटेड भी कोई इश्यू हो, कोई इमरजेंसी हो, कोई हेल्प हो, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम 24/7। एंड मैं इस बात के लिए गौरवान्वित हूँ कि मैं नवोदय का हूँ, और मेरी जर्नी इस वजह से आज यहाँ तक पहुँच पाई है, और आगे और बेहतर करने की कोशिश करूँगा आप सभी मित्रों के सहयोग से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Rameshwar Bhai, for inspiring words for students and focus on the needs.
Yeah. Hello. I can hear you. Yeah, I can hear you. राघवेंद्र जी, हाँ, is the view? क्या सुनाई नहीं दिया? Okay, I think. Thank you, Ramesh, for sharing your experience and focusing on the need of where we are lacking, especially in Navodaya for UPSC and civil services. Hope we will see in sometimes more and more success in that area as well. And we have, because we were discussing in the recent that when we were talking to any new pass out student, most of they have the target of UPSC or PSC. So hope we will see some more success in coming future. And now moving forward in our program schedule, as I mentioned that I already, whoever is planned to address, I mentioned based on the time availability, they can request for the rearranging of their address. So I got one more request from Bharat Yadav. So I think Bharat is no longer need to any introductions. All of us know very well who he is, and so I will not take much time, and I will just invite Bharat for his address to our JNV community. Bharat, can you check if you can mute yourself? Yeah. Yeah, right. We can hear you. Okay. Yeah, over to you. Thanks, Arvind Bhai Sahab. Good afternoon, everyone. Respected Joshi sir, respected principal sir, all respected teachers, all seniors, and dear friends. आप सबसे बात करना, आप सबको देखना पुरानी यादें दिला देता है हमारे नवोदय की। और नवोदय में जो मतलब नवोदय की जो यादें हैं, नवोदय से ही हम हैं सब लोग जो भी हैं, क्योंकि हम सब लोग ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज़ के हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं। और जहाँ तक हम पहुँचे हैं, जहाँ भी पहुँचे हैं, नवोदय का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मैं जहाँ भी रहा हूँ, IAS बनने के बाद SDM से लेके 6 जिलों में कलेक्टर रहा। और जो विलेज मैनेजमेंट कमेटी होती है हमारे नवोदय की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो नवोदय होता है उसका चेयरपर्सन कलेक्टर होता है। तो मैं SDM से ही मुझे कलेक्टर चेयरपर्सन बनाते थे, क्योंकि मैं नवोदयन था। तो मैं हमेशा अपने नवोदय में उतना नहीं आ पाया, लेकिन जिस नवोदय में, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी रहा, क्योंकि हम लोगों की अपनी व्यस्तताएं रहती हैं, हम लोगों को अपने एरिया में रहना होता है, बहुत ज़्यादा जो है छुट्टी और बाकी की चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो मैं जहाँ भी जाता था तो अपने नवोदय को याद करता था, अपने पनघटा वाले, अपने मोहिनी सागर वाले नवोदय को याद करता था। और वहाँ के मल्टीपर्पज़ हॉल में वही सब चीज़ें याद आती थी जो हम लोगों ने जो जिया है। और मुझे लगता है हम कहीं भी पहुँच जाएं, लेकिन वो हमारे जीवन का एक बहुत सबसे अच्छा समय था। और हमारे जो उस समय के फ्रेंड्स थे, उनसे हमारी मित्रता निस्वार्थ थी। और आज भी जब हम उनसे बात करते हैं, उनके किसी काम आते हैं या उनसे कोई हेल्प मांगते हैं, तो वो चीज़ झलकती है कि वो सब कुछ निस्वार्थ है। उसमें कहीं भी जो आज के समय में आप जैसे आगे बढ़ते हैं, तो जो भी रिश्ते हैं जो स्वार्थ वाले हैं, वो स्वार्थ वाले नहीं थे। और निश्चित तौर पे जो वहाँ के टीचर्स का जो हमारे प्रति प्रेम था, कुशवाहा सर नहीं है अभी, लेकिन उनका जो प्रेम था खासतौर पे हम लोगों के साथ, हमारे बैच के कुछ लोगों के साथ, क्योंकि हम वो 28 नंबर में रहते थे, हम लोग 29 नंबर में रहते थे, पास में ही रहते थे। तो हम लोगों को कई बार पिटाई भी पड़ती थी, टीवी देखने जाते थे बगल की दुकान में। तो वो जो एक रिश्ता था, जो एक समर्पण था हम लोगों का टीचर्स के प्रति और टीचर्स का हमारे प्रति, वो बहुत ही अलग था। जैसे जोशी सर जुड़े हुए हैं, तो मुझे याद है कि जोशी सर कई बार कपड़े चेक करते थे कि किसके कपड़े साफ हैं, किसके नहीं है। मेरी एक बार बनियान उन्होंने पकड़ ली कि बहुत गंदी है, मैंने उसको छुपा के तौलिया के नीचे छुपाया हुआ था। तो वो जब जोशी सर एक दिन भोपाल आए थे तो मैं मिला, तो उनको मैंने बताया, उनको उतना याद नहीं था। लेकिन इस तरह से ये उदाहरण है कि किस तरह से हमारे व्यक्तित्व को हमारे टीचर्स ने बनाया है और किस तरह से उस माहौल ने हमारे व्यक्तित्व को ढला है। तो निश्चित तौर पे अपने नवोदय से जुड़ना, अपने नवोदय के टीचर्स से, अपने नवोदय के सीनियर्स से,
साथियों से, जूनियर्स जो भाई बहन है उनसे जुड़ना बहुत अच्छा लगता है। और आज राघवेंद्र भाई साहब और उनकी टीम के माध्यम से जुड़ने का मौका मिला, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अब मैं अपने बारे में यही बताऊंगा, ज़्यादातर चीज़ें सबको पता है कि लगता है कि कोई सफल हो गया। सफलता में बहुत संघर्ष रहता है, बहुत परेशानियां रहती हैं, और परेशानियां सब तरफ से मिलती हैं, चुनौतियां सब तरफ से मिलती हैं। कई बार बहुत नज़दीक लोगों से भी आपको चुनौतियां मिलती हैं, जैसे आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके आपके कलीग्स हो सकते हैं। जैसा आपको पता है कि मैं 10th से रेलवे में सिलेक्ट हो गया था, 11वीं 12वीं कॉमर्स के साथ मैंने मुंबई से की, और उसके साथ ही रेलवे की ट्रेनिंग हुई, और 12वीं के बाद मैं रेलवे में टिकट कलेक्टर बन गया, और 9 साल मैंने रेलवे की जॉब की। जॉब के साथ ही प्राइवेट ग्रेजुएशन किया, प्राइवेट पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और तैयारी की, और सिलेक्शन हुआ। तो ये जो एक कहानी है, जिसको कहना चाहिए 11 साल की नवोदय के 5 साल के बाद, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, चुनौतियां हैं जो सबकी कहानियों में रहती हैं। और जैसा जोशी सर ने बोला है कि हर एक की कहानी अन्य कोई को जानना चाहिए, चाहे वो किसी की भी कहानी हो, तो उससे सीखने को मिलेगा। और वो अच्छा एक ये जो आपका ई मैगजीन निकलेगी, जो एक अच्छा हमारा इनिशिएटिव भी रहेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग जहाँ अब क्या कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए, जूनियर्स के लिए जब इस तरह की बात होती है, तो मैं ये कहूंगा कि जहाँ हम हैं वहाँ मदद करें, और हम लोगों में से ज्यादातर लोग करते हैं। अभी अंकित भाई साहब हैं, जैसे अगर अंकित भाई साहब से अगर कोई किसी को कहीं अस्पताल में किसी तरह का इलाज चाहिए, किसी को फोन कराना है, तो निश्चित तौर पे हम सब उनसे संपर्क करेंगे। रामेश्वर भाई साहब हैं, पुलिस में हैं, तो अगर पुलिस का कोई इशू आएगा तो उनसे संपर्क करेंगे। या अन्य लोग जिस फील्ड में हैं, कई लोग हमारे प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जगह पे हैं, उस सिटी में कोई काम है वहाँ हम संपर्क करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई काम है तो मुझसे भी बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं, और मैं भी यथासंभव मदद करने की, गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो जो जहाँ है हम उसमें उनकी मदद करें, उनको मोटिवेट करें, और उनको मॉरल सपोर्ट करें। और कोविड के समय तो निश्चित तौर पे ये वर्चुअल सब कुछ होने लगा है, ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हमको वर्चुअली वैसे भी अभी नॉर्मल टाइम भी हो जाएगा 2-3 महीने के बाद कोविड से, कर सकते हैं। मोटिवेशनल हम सेशंस रख सकते हैं, गाइडेंस सेशन रख सकते हैं। अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ हैं, अलग अलग फील्ड पे जिन्होंने बहुत काम किया है, सिविल सर्विस के हों, या डॉक्टर्स के फील्ड में हों, इंजीनियर्स के फील्ड में हों, IITians हों, अलग अलग फील्ड के लोग हमारे यहाँ हैं, जो कि अपने अनुभव और अपनी टेक्निक से हमारे जूनियर्स को, हमारे छोटे भाई बहन को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का रहेगा तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा, क्योंकि हम लोगों की व्यस्तता तो रहती है, लेकिन इस तरह का टाइम निकालने में कोई समस्या नहीं है, और हम बात कर सकते हैं। जो रामेश्वर भाई साहब ने कहा कि सिविल सर्विस में लोगों को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड एक ऐसा है जो नवोदय के लोगों को ज्यादा सूट कर सकता है, जहां तक मुझे लगता है। मैं अपने संघर्ष से और अपने जो तैयारी से जो मैं समझा हूँ, क्योंकि ये बहुत खर्चीला फील्ड नहीं है। बस इसमें एक कमिटमेंट चाहिए, एक सही डायरेक्शन चाहिए, और एक जुझारूपन चाहिए कि नहीं, हमको लगे रहना है। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम अपने घर वालों पे डिपेंड रहें, हम अपनी कोचिंग पढ़ा सकते हैं, ट्यूशन कर सकते हैं, अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं। कोचिंग भी बहुत महंगी नहीं है, और लेनी भी पड़ती है तो एक बार लेनी पड़ती है, फिर गाइडेंस और अपना जो मेहनत है उससे काम हो जाता है। ऑनलाइन भी बहुत सारे टूल्स, कोचिंग सभी उपलब्ध हैं। जरूरत है सही गाइडेंस करने की, सही गाइडेंस लेने की, और अपना एक सेफर साइड लेके चलने की। सिविल सर्विस में ये नहीं सोचना चाहिए कि सिविल सर्विस में हम जा रहे हैं तो बस वही हमारा सब कुछ है। आप एक अपना एक कैरियर है, जो भी आपका कैरियर है, जो आपके बैकग्राउंड के हिसाब से हो सकता है, आपने किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, किस में आपको इंटरेस्ट है। आप CA का एक ऑप्शन लेके चल रहे हो, आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर भी का एक ऑप्शन लेके चल रहे हो, या इंजीनियर हो तो आप एक अपना ऑप्शन लेके चल रहे हो, एक स्पेसिफिक फील्ड में आप जो है अच्छा अपना पकड़ बनाए रखें, और साथ में सिविल सर्विस की तैयारी करें। जिससे कि, क्योंकि इस सिविल सर्विसेज में अनिश्चितता बहुत है, कब सिलेक्शन होगा, कितना समय लगेगा, कितनी असफलताएं मिलेंगी, ये कुछ क्लियर नहीं है। होगा जरूर, जो लोग लगे रहते हैं उनका होता जरूर है, लेकिन अनिश्चितता बहुत है। तो एक अपना करियर ऑप्शन लेके चलें, बाकी हम लोग हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं हर 5 साल में, 10 साल में, सिलेबस, टेक्निक सब कुछ चेंज हो जाता है, लेकिन अपनी बेसिक्स जो चीजें हैं वो हम बता सकते हैं। और अभी सिविल सर्विस में हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो एक ये भी हम बता सकते हैं कि
किस तरह के लोग चाहिए। हमेशा हमें ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट को सिविल सर्विस में किस तरह के लोग चाहिए। अगर वो हमको पता रहेगा तो भी हम बहुत कुछ समझ जाएंगे कि हमको कैसा तैयारी करना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा। एक अलग विषय है, कभी जब इस तरह के सेशंस होंगे तो हम निश्चित तौर पे इस पे और डिटेल बात करेंगे। मेरा सभी से कहना यही है कि एक तो ये नहीं सोचे कि जो सिलेक्ट होते हैं वो लोग बहुत अलग होते हैं, कोई अलग नहीं होते हैं। हम सब एक जैसे थे, एक जैसे ही थे। और जैसे रामेश्वर भाई साहब ने बताया, मैं तो और बहुत ज्यादा शर्मीला था, क्वेश्चन भी नहीं पूछता था अपनी क्लास में, और क्लास में कभी टॉप भी नहीं रहा। लेकिन हाँ, ये जरूर लगता था कि मैं भले ही टॉप नहीं रहूं, लेकिन मन में था कि जब मुझे करना होगा मैं करूंगा, अच्छा कर पाऊंगा। तो कई लोग बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो वो सब कुछ नहीं होता है। मैं हिंदी मीडियम में मैंने सिविल सर्विस यूपीएससी जो है क्वालिफाई किया है। तो किसी की लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता है। लैंग्वेज ऐसा नहीं होता है कि किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो सब कुछ है, या किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो वो उसको प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है। एक मीडियम है, किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, हिंदी बहुत अच्छी होती है, हिंदी से भी बहुत सिलेक्शंस होते हैं। तो इंग्लिश भी अच्छी होना चाहिए, लेकिन मेरा कहना ये है कि इसको कई लोग बैरियर ना बनाए कि हमारी अगर इंग्लिश में हम बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो हम सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर सकते या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। ऐसा खासतौर पे जूनियर्स जो हमारे हैं उनसे मेरा कहना रहेगा, आग्रह रहेगा। बाकी मैं हमेशा आपसे टच में हूँ, मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे जब जरूरत हो व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स, सीनियर्स, जूनियर्स। कभी उस पर भी आप अगर कुछ चाहेंगे, क्यूरी रहेगी, आपकी कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई गाइडेंस चाहिए, तो उस पर दूंगा। और इस तरह के कभी भी जो आयोजन होंगे वर्चुअली, उसमें मैं सदैव उपस्थित रहूंगा। आप सब लोगों से ये भी आग्रह है कि सिविल सर्विस में हम लोग हैं तो सिविल सर्विस की तो हम गाइडेंस कर ही सकते हैं, और सिविल सर्विस में आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि एक ऐसा एक फील्ड है जिसमें बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है। हालांकि आजकल बहुत सारे हायर एजुकेशन लोन मिलने लगे हैं। जैसे मैं नवोदय में पढ़ता था, नवोदय में जहाँ भी मैं एसडीएम रहूं, कलेक्टर रहूं, मैं विलेज मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पे था जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहाँ पे मैं करियर गाइडेंस शिविर रखवाया मैंने, और वहाँ पे बैंक के साथ मिलके हायर एजुकेशन लोन का वहाँ पे शिविर रखवाया, जिससे कि टाई अप हो गया। अगर किसी को कोई फीस ज्यादा लग रही है, कोचिंग करना है और घर की स्थिति अच्छी नहीं है जैसी ज्यादातर हम लोगों के साथ है, तो उसमें हमें हायर एजुकेशन लोन मिल जाता है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिसमें हम लोन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा आग्रह ये भी रहेगा कि जिस फील्ड में भी आगे आप बढ़ना चाहते हैं बढ़ें। सिर्फ सिविल सर्विस में, डॉक्टर्स में, इंजीनियर्स में इसमें जरूरत नहीं है, हर जगह नवोदय की जरूरत है, और सीमित मात्रा में हर जगह नवोदय आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो पॉलिटिक्स का फील्ड हो, चाहे वो अच्छा एग्रीकल्चरिस्ट हो, चाहे बिजनेस हो, हर जगह आगे बढ़ने की जरूरत है। और ये जो हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है, इसको अच्छे काम के लिए यूज करने की जरूरत है। अगर कोई बिजनेस में है और नवोदय का जो नेटवर्क है, सिर्फ एक नवोदय का नहीं हो सकता है, वो पूरे नवोदय का है, चाहे पूरे एमपी के सभी जिले के नवोदय हो, चाहे पूरे भारत के सभी जिलों के नवोदय हो। उस नेटवर्क को यूज करके हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव वे में मदद भी कर सकते हैं। जो जिन लोगों की मदद करना है, हर फील्ड में आगे बढ़ने की जरूरत है। मैंने देखा है, जहां भी मैं पुराने नवोदय के छात्रों से मिला हूँ, चाहे वो एक कृषक हो, वो कृषक भी एक अलग कृषक। जैसे मैं जबलपुर में एक पुराने वहाँ बरगी के एक छात्र से मिला, वो फर्स्ट या सेकंड बैच के थे, तो वो जो है एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में भी जो अच्छा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो वो मतलब अच्छी सब्जियां उगा रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करके और उसका पूरा अपना टाई अप करा के, और वो जबलपुर में सबसे अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है एग्रीकल्चर के सब्जियां और फल बेचते हैं। तो वैसे भी आप लोग भी जहां भी मिले होंगे नवोदय से, आप देखेंगे जिस फील्ड में भी है वो अलग दिख जाएगा कि नवोदय में। तो आप हर फील्ड में आगे बढ़ें, सारे फील्ड में आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी हम लोग और एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, एक दूसरे के और काम आ पाएंगे। और जो एक सपना है कि 12वीं तक ही नवोदय है, 12वीं के बाद जो है, अगर जो हमारे जो फाउंडर थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने नवोदय विद्यालय की स्थापना की, और जो उनका एक सपना भी था कि इसको जो है इसको और आगे बढ़ाया जाए, इसको ग्रेजुएट लेवल पे ले जाया जाए। इसमें जो है कई तरह के जो है इस तरह के
कोर्सेज शुरू किए जाएं जो जिससे कि लोग वहां से सफल होके ही निकले, कुछ ना कुछ रोजगार जो मैं सफल होके निकले, जो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलके उनके सपने को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब जब नवोदय में पढ़ते थे तो सब बराबर थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण कोई कहीं निकल गया, कोई कहीं निकल गया, और कोई हो सकता है जैसा उसको करना चाहिए था वैसा नहीं कर पाया। तो वो भी हमें एक सपना मिलके पूरा करना है। वो जब हो पाएगा जब हम सब फील्ड में आगे निकलेंगे। हर फील्ड में हमें आगे निकलने की जरूरत है। हम सब जो लोग हैं, जो सफल हैं, जो अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, वो हम सब सबके साथ हैं, पूरी टीम के साथ हैं। और ये बहुत अच्छा प्रयास है राघवेंद्र भाई साहब का, उनकी टीम का, जिन्होंने हम सबको जोड़ा है। हम क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जोड़ना, टाइम लेना और सबसे संपर्क करना, और इस प्रयास के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सभी टीचर्स को, जोशी सर को, सभी सीनियर्स को धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने मुझे बनाने में कुछ ना कुछ रोल किया है। ऐसे ही सभी को बनाते रहिए, सभी से कोऑर्डिनेट करते रहिए, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Bharat, for your kind words. And you see the how down to earth you have explained, even reaching up to that level, that what are the things Navodayans should focus on, and what are the even the in your memories in our old school times to new. I think you have seen the both new buildings and old, right? So the way you have remind all those memories, it is really the Navodayans only can keep those memories forever. And we appreciate the way you have given the hints for UPSC. And we, as I think you have seen, we have also planning one sessions where students or alumni are looking. So looking forward for your time going forward, where we can have more insights how our JNV Shivpuri Navodayans can crack UPSC. And as Rameswar Bhai also mentioned, we can make mark there itself. So thank you very much for your time today, and looking forward for more connect forward. Thank you. And next, as I think Bharat also mentioned, the need of business and the kind of rocking Navodayans, and not only one fields and government services everywhere. So our next, I know that I seen the message for a lot of other requests also for taking, but hopefully we will take all the requests and give chances, opportunities to all who want to address today. But we also need to focus on the schedule list which we have put on. So the next, which I mentioned, जैसे कि भरत ने बोला कि बिजनेस तरफ भी फोकस होना चाहिए, बीइंग इन एंटरप्रेन्योर्स, वो भी जो मैंने देखा कि हमारे नवोदय या हमारे एरियाज में लोग कम प्रेफर करते हैं. So the next in line, another from that field only, entrepreneur of our batch, Deepak Goyal. He don't got time to spend much with the Navodaya, but he still have so sharp memories that we are shocked when we interact. So let's welcome Deepak Goyal, and he will let us know more about. And just before I welcome, Deepak also provided us we were searching for the online platform where we can set up this meet, and he only came forward and provided this Zoom app so that we are able to smoothly managing the meet today. Thank you, Deepak, and welcome you to address to the gathering. Thank you. Thank you, Raghavendra. I really appreciate, and I cannot tell you my feelings. Yeah, I did spend only 2 years in Navodaya, but the memories of 2 years Navodaya, you won't believe that 80% of my stories for my two sons, 8-year-old and 16-year-old, is about Navodaya. It's about that how we used to go in line from our hostel to Monisagar Dam, how we used to, jump into a pool, our own personal swimming pool, if you remember that, next to, which used to fill to rainwater, and how we used to, enjoy that. There's so many memories, and I tell both my kids. So nowadays, definitely engraved in my memories. And before I start, I really want to thank Principal Sir. I want to thank Raghavendra, you, and Rameshwar. I don't know if you recognize me or not, but seeing the faces after 33 years, this is really nostalgic. I
I was seeing a kid over here who was walking. He seems like a 6th or 7th grade. And it reminded me that the time that the place where our parents used to come every Sunday to meet us, and we will go and wait for them to come, and they will bring something, and all that will happen. So all those memories are so nostalgic. And Joshi sir, the heart-touching words you said, I still remember that. We need to do yoga in the morning, 6 o'clock, and used to be double beds. We will sleep, on the top. I had this bed which I need to sleep on the top floor, and there will be a stick on my back, will bang at 6 o'clock, and then I need to get up and go for yoga. So all those, there are so many memories, and I start thinking about I can write and speak about that, but there are things which we learn. This is important, especially from either you think about the entrepreneurship perspective, or civil engineering, or going anywhere in your life. There are a few things which always helps you. And the learning from Navodayas is always, incredible. So there are two things I would want to speak today, and fantastic speakers we had already, and you will hear more from them. But there are specific two things which I learned from my journey, which I would like to share with you. Number one is collaboration. It's so important that how you collaborate with people and what wonders you can do. I mean, I'm from 87 batch, as you know. I did my 6th and 7th from Navodaya, and then I had to leave based on my parents' choice, went into Shivpuri. And again, I went to the same school where my father went. Those who know Shivpuri, number 12th standard. And I did from there. And that time it was so difficult. And I remember that going to, if those who know these names, Ashok Stationery Store, I went there and I say, hey, you know what? I need IIT form. I want to give IIT. And he said that IIT to 2 महीने पहले हो गया, आप थोड़ा late आए. The point here is now the world is so connected and you have so many resources, but those days we were not. So that time, we did not even get chance to get the information, but the world is so small now and we all are connected to each other. And that's what is happening because of Raghavendra, you brought us online. So I wanted to focus a little bit on the collaboration part, and how collaboration could make wonders. I remember that when I went in Shivpuri, we were all doing the preparation for PET. PET, PMT was the two favorite subject that time, and I'm seeing that even now 90% kids wants to go to either engineering or medical. Then very few who want to go for civil services, CA. So it's kind of really interesting to see that after 33 years, it's still the same choice. So there are something stick to Indian, and no wonder in the world, Indians are known for their skill. I mean, I never knew that being an Indian, I will be so much respected in Silicon Valley. There's so many Americans who work for me, and there was a time in America, if those who has been here 40 years ago, if you are Indian, you will not get that attention or the respect. But now, if you are Indian, just because you look like Indian, you are given a special respect as a mathematician, as an engineer. So that's what we have created. But going back to the journey, जब शिवपुरी में थे, उस टाइम पे PET, PMT एक दो चीजें हुआ करती थी जिनमें आपको करना है. तो those who know कि ग्वालियर में एक कोचिंग हुआ करती. शिवपुरी में कोई ऐसे साधन नहीं थे जहाँ पे आप कोचिंग कर सकते हैं बहुत अच्छी. तो आपको उसके लिए ग्वालियर जाना होता था. ग्वालियर में आपको 30,000 रुपए भरने होते थे. उस टाइम पे बहुत बड़े होते थे. आज भी बड़े होते हैं मेरे ख्याल से. और उस टाइम पे हम लोगों ने, मुझे याद है कि एक विष्णु मंदिर था. काफी लोग जानते होंगे याद, विष्णु मंदिर जो छतरी रोड पर है. वहां पर एक छोटा सा लाइब्रेरी है. So what we used to do, there were about 13-14 students who used to study there. वहां पर 24 सर हैं. अभी भी आज भी वो पढ़ाते हैं. आज उनकी एज 80 प्लस हो गई, पर आज भी वो पढ़ा रहे हैं और उन्होंने अभी तक 3 से 4 हजार बच्चों को पढ़ाया है वहाँ शिवपुरी में. तो द पॉइंट इज, वहां पर जब हम जो 13-14 बच्चे थे, उन लोगों ने सबने साथ मिलकर के पढ़ाई की और हम सब लोग प्रिपरेशन करते थे. तो एक चीज समझ में आई कि
अगर आपको कंपटीशन करना है तो कंपटीशन आपस में मत करो, कंपटीशन उन 10 और 15 बच्चों से मत, फ्रेंड्स के साथ मत करो जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं। उन 15 लोग साथ में मिलकर के पूरी दुनिया से कंपटीशन करो। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब हम 13-14 लोगों ने एक साथ मिलकर प्रिपरेशन की थी, एंड व्हेन वी हेल्प ईच अदर, उस साल से पहले हमेशा शिवपुरी में या तो 1 या 2 इंजीनियर्स बनते थे या डॉक्टर्स बनते थे। एक डॉक्टर एक इंजीनियर का बड़ा फैशन था। वो पहला साल था जबकि 13 इंजीनियर्स और करीबन 5 डॉक्टर्स उस साल शिवपुरी से बने थे। एंड दैट वाज द पावर ऑफ कोलैबोरेशन व्हिच आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर अटेंशन। एंड दूसरी चीज ये कि ध्यान रखें कभी भी कि देयर इज नथिंग, रिसोर्स को कभी भी नेवर एवर थिंक अबाउट रिसोर्स एज अ ब्लॉकर फॉर योर करियर। कभी भी संसाधनों को अपना ब्लॉकर बनने नहीं देना है सक्सेस के लिए। आपके साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, अभी आपने सुना रामेश्वर, भरत, all that these people have reached, and you have such a large network. I remember hearing Principal Sir, 3,300 alumni is a huge number, and for any entrepreneur what you need is a network. That's the key thing, and you already have it. So as a Navodayan, you have an inbuilt capability to become an entrepreneur. You all qualify for becoming an entrepreneur, being a Navodayan. So I would definitely want you to continue. A little bit about myself. So after doing I got selected into GSITS Indore. I did my BE from there, and then I did masters from IIT Roorkee. From there, I selected in Sun Microsystems, and that's where my entrepreneurship journey started. So what happened in Sun Microsystem? Of course, you know, coming from Shivpuri, and we all have this English problem. You know, especially when if you go on the IAS side, or in a civil services side, it's okay. But when you go on the corporate side, especially if you work in the MNC, you have to be able to speak English because all your colleagues speak only English. So that was the biggest challenge for me. And my manager said one time, Deepak, so why don't you do something to improve your communication skill? तो मैंने कहा यार क्या किया जाए कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने के लिए। तो मैंने कहा यार बजाय कि मैं एक काम करता हूँ, देन आई टुक अ चैलेंज। सो दैट्स वेयर रादर देन थिंकिंग अबाउट दैट ओके मैं अपनी इंग्लिश से करता हूँ, आई एक्चुअली जॉइन 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस एज अ स्पीकर। सो आई अप्लाई फॉर दैट, यू नो, आई विल बी स्पीकिंग इनटू द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, फॉरगेट अबाउट जस्ट स्पीकिंग लिटिल बिट हियर एंड देयर। And then I got selected for all 4. So through Sun Microsystem, I spoke in 4 international conferences, China, and that time I was in India. So मैं China में I addressed about 500 engineers, and then I came in the US just on the business visa, B1 visa, and I addressed about 1,000 Americans. तो उस टाइम पे समझ आया यार इंग्लिश और हिंदी is not the things. If you have a skill, मेरी स्किल थी टेक्नोलॉजी, मैंने एमटेक किया था, मुझे टेक्नोलॉजी अच्छे से आती थी, मुझे कॉन्फिडेंस था, बट इंग्लिश का अच्छा होना या ना होना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना। तो वो चीज जो है वो आपको आगे तक लेकर के जाएगी। तो what I understood that okay, you should always think big. Never think people will make you think that, you know, you will not be able to do, it won't happen to you, and it's very difficult, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। बट always listen to your heart and always follow your passion. So last I would want to go with that, you know, how my journey of entrepreneurship started. So in Sun Microsystem, I used to I was a Java evangelist, and one thing I learned in life that अगर कभी भी कोई चीज लर्न करनी है ना तो उसे पढ़ाना शुरू कर दो। If you want to learn something really deep, start teaching that thing, because when you teach, you learn more about it. You have to go really in deeper in order to understand something. So I started doing that, and then I wanted to learn Java. That's one of the language, computer programming language. So I started teaching Java. So what I did, I actually taught about 30 students in Bangalore. This is a time when I was working in Sun Microsystem, and I taught 30 students, and those all 30 students were the students, not like engineers or something, but they were in BSc or they were doing some job, and they were looking for new career change. And all these 30 students got selected into some companies. And when they came to me and said, Deepak, thank you.
And that is the life-changing moment for me. And then I realized maybe what make me really happy is make the positive difference in people's life. और वो एक टाइम था जब मुझे समझ आया कि शायद मुझे कुछ ऐसा करना है so that I can bring opportunity to people. And since then, I started my first company in India with those students only, those who I taught Java. उन्हीं स्टूडेंट के साथ में उन्हीं को पढ़ाने के साथ में मैंने वो पहली कंपनी स्टार्ट की और उसी कंपनी एक्सपांशन के लिए मैं अमेरिका आया. And within 6 months, I started this company, EasyDia, when I landed in America. And the whole idea was that, do something that you can reach, take this opportunity, what is not available in somebody sitting in Narvar or Shivpuri or anywhere, and which is available here in Wall Street, in New York or San Francisco, in Silicon Valley. So that was the idea that, what can we do that the people can get opportunity no matter where they are. And that's where the EasyDia started, which is my company name. Today, we have about, my company have 40 employees and in US and in India. And this little team of 40 employees provide the job opportunity for thousands of people. So far we have given, this year itself, we have given job opportunity to 1,100 people across the world. And majority of them is from India. So what we do in the company is we take the projects, we have a platform. It's all online platform, so you don't need to go anywhere. The only thing is you need to open your laptop. You should have internet connection, and then you will be able to do the job from home. And I feel that, the journey of entrepreneurship and the passion of making the difference in people's life has brought me to the stage where now I'm able to bring real jobs to people across the world. So we were talking about with Raghavendra that what we can do with the Navodayans, especially when it comes to having the real work experience as opposed to just learning into the college. If we can connect them directly with the real jobs, not only they will learn the real thing, but they also will make some money if they want to. So there are those kind of initiative I would want to take, where the work what we are providing to Indian people that can reach more to Navodayans. Today, people in Shivpuri, today people in Bhopal, in Delhi, Mumbai, all over the place in India, they are able to do the job sitting at the home. And what makes me feel proud on those jobs, these jobs are not, we are not providing the jobs for IITians. IITians has enough place to go and get the job, but the job what we are providing to those women who are sitting at home. They are capable, but they are not able to do work because they cannot get out of the home. If they have a laptop and they have internet connection, they are able to do job. And what make me feel more proud is when those women, they make 20,000 rupees or 30,000 rupees through EasyDia. It's not about the 30,000 rupees. It's about the self-respect and the self-confidence they have built. That is the very important thing for us to build. We think about how many women in India today, they are so capable. पढ़े लिखे हुए हैं, BSc किया हुआ है, BE किया हुआ है, लेकिन because of the family situation, because of the conditions, they are not able to go out and do the job. They have to take care of home. So if we can do something on the large scale for the women who are at home, but they are capable, we can take the jobs to the home and they can spend not like full 8 hours job because they cannot afford to work for 8 hours because they have kids they need to take care. But can they work for 2 hours, 3 hours, 4 hours and depend on their schedule? If we can create that kind of jobs, I think that's wonderful. That will be, and that's what I want to take to, and then connecting it back to Navodayans, we have people who struggle with financial help. There are capable kids who can do, who wants to do the job, who has done their 12th standard, and they might have done the college as well, but they are struggling. We can reach to those kids as well, and then we can provide them job opportunity. So I will be working, Raghavendra and I was talking about that we will be definitely collaborating that to see that, how we can take those opportunities to Navodayans and, how we can make the bigger difference.
So I just want to tell you one thing again, that from the entrepreneurship perspective, if anybody say that you cannot do it, take it as a challenge and put your best effort. It does happen. If you keep doing, if you don't give up, it works. So that's the key of entrepreneurship. Never ever give up. With that, I would like to pass it back to Raghavendra. Thanks, Raghavendra, for giving me this opportunity. Hey Deepak, thank you. Thanks a lot for tell about your journey and how you have achieved, and maybe best wishes for your future efforts or future rise in your journey. And it is really, I hope you will be a guiding force for the entrepreneurs who are still thinking on this ground, different from the getting the job or limited up to the job itself. And hopefully we will have some more sessions where you can inspire, as we have some limited time today, but hoping to have a more connectivity with our JNV community going forward. Thanks a lot, Deepak. And I know that we are getting late, but I know that this is a bond which whoever is there, they will keep some patience to continue. And before I invite next JNB alumnus, we have a function. There is a sort of functions where I mentioned JNV gate renovations initiatives. As part of that, JNV is doing some sort functions, and we would like to go there for a few minutes, and then we will come back for next participants, KP S. Raghuvanshi. So KP, just be here for a few more minutes, and we will back with you. So I am going to allow unmute JNV Shivpuri. So whoever, Ravi sir or I have already done. So if you can continue live what you wanted to, you can. Yeah, very good. Yeah, we can. So this is some sort of इनोग्रेशन और शिलान्यास क्या बोलते हैं उसको, वो जो हमने गेट का था प्लान जो मैंने बताया था उसका वो शॉर्ट ऑर्गेनाइज किया है शॉर्ट टाइम पे. तो रामेश्वर एंड अवर अदर कोलीग्स गोपाल एंड आई थिंक some of our batchmate, I can see Biren, Radbir are there. So they found this as a good opportunity to have this as well. So thank you, Ravi sir and all teams to initiate on this. This was pending since long, but hope now we will see some progress on this initiatives and we will move forward with a new design kit, what we have seen before. Over to Ravi sir and team. शेयर नहीं किया अभी, स्क्रीन शेयर नहीं की. नहीं शेयर है, स्क्रीन दिख रहा है. आ रहा है सर, चला हुआ आ रहा है. अंकिता थोड़ा आगे आ जाना, थोड़ा आगे. याद आ गई क्या? करवा देते पंडित भी लगता है एलुमनी ही है और जो सामने बैठे हैं वो पंडित जी एलुमनी वाले. हाँ. गुड दिलीप, थैंक यू फॉर डूइंग दिस रोल.
ऑनलाइन पूजा पूजा भी कराता है, ऑनलाइन पूजा भी कराता है। क्यों चालू है? बंद हो गया कैमरा? सब लोग लगा दो यार। गुड। लगा लो भैया, लगा लो। जय हो। नहीं, गेट तो बन के रहेगा। ये दामो तुम्हारा पेपर पीछे आपको पत्थर दे दो। जय हो। नहीं बल्लू वो लुड़िया दो, लुड़िया। हाँ ठीक है। आप अंदर पत्थर रख लो। चलो क्लिपिंग करो जल्दी। रक्षा कुछ नहीं भैया। हाँ नहीं, आशा है पंडित जी दक्षिणा नहीं ले रहे होंगे। हाँ पंडित जी दक्षिणा नहीं ले रहे हैं। दक्षिणा नहीं ले रहे भाई। दक्षिणा के रूप में पंडित जी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि इस गेट की प्रोग्रेस को मॉनिटर करें, और एक बार सक्सेसफुल होने के बाद हम सब फिर एक बार जाके मिलेंगे। अरे दक्षिणा मिली है। लाइव जा रहा है दक्षिणा। दूर से जा। अपनी तरफ बाल कर। जो बच्चे बना रहे हैं वो यहाँ से लगाएंगे, बच्चे लगाएंगे सब। ठीक है ना, ठीक है। नहीं सरकारी जय नवोदय। सर होल्ड कर लीजिए थोड़ा। हाँ हाथ लगा लीजिए। ओके उसमें लिख के आ रहा है पंडित जी रिश्वत ले रहे हो आप। उसमें लिख के आ रहा है सर पंडित जी रिश्वत ले रहे हो। वेलकम। चलो आई थिंक वी आर डन। JNV शिवपुरी से कौन है? कुछ और है क्या, या कैन वी गो बैक टू द एड्रेस? Yeah, we can go back to address, Vice.
Okay, thank you. I think this is the one of the most awaiting moment. We are planning to post forward for this gate, but finally we have seen that एक न्यूज की आज रख दी गई है. आशा है कि अब इस पर जल्दी प्रोग्रेस होगी और हम लोग एक नया गेट जब भी नेक्स्ट टाइम जेएनवी जाएंगे तब देख पाएंगे. So with that, let's go back to our address sessions. And next in line is KPS Raghuvanshi. He is from second batch of JNV Shivpuri, and I think he is also known figure in our JNV Shivpuri community. I will just mute him and go over to him for his address. KP, let me know if you can unmute yourself. Hello. Yeah. Are you getting me? Yes, KP, I can hear you. Welcome, KP. Okay, but thank you. But I am unable to see the video. You were not able to see? No. No, we can see you. Maybe I think. Okay. Okay, you can see me. Yeah, we can see you. We can hear you. So continue. So, respected ladies, our Joshi sir, principal, and all the dignitaries, good afternoon. And my elder brothers who have spoken so far, very good afternoon to all of you. So let me introduce myself first. I am from second batch, that is 88 batch, and I think this is the smallest batch passed out so far. In 10th, we were only 20. And now, today, I am Deputy Commandant in Border Security Forces and presently posted at Tura in Meghalaya. It's in Guwahati, near Guwahati. And I am posted and serving the nation somewhere in Indo-Bangladesh border. Gentlemen, यादों के पन्ने खोलूं तो कुछ लोग बहुत याद आते हैं और आज कुछ वैसा ही We can't hear you, KPS bhai sahab. Is it with me only or everyone else is facing the same? There may be some disconnect. KP, can you check again? I think some issue at your end. Hello. Yeah, Hello? we can hear you now. Now we can hear you. Okay. तो आज जब सुना जोशी सर को सुना वो सारी बातें उस तरह की याद आ गई जब मैं बताना चाहूंगा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मैं भी एक बहुत छोटी सी जगह से था मगरौनी जो कि आपके नवोदय के नजदीक ही है मगरौनी एक छोटा सा गांव है वहाँ चौकी थी जहाँ पर मेरे पापा पोस्टेड थे उस समय तो मैं वहाँ से सिलेक्शन पाया था 88 में और जब मैं नवोदय में गया तो जैसा कि बताया कि एकदम रॉ मटेरियल था कुछ भी नहीं था मेरे पास मतलब कहने को कुछ भी नहीं था मींस ना कोई करियर का गाइडेंस था ना मुझे कुछ ये पता था मुझे क्या बनना है क्या करना है आगे चल के बस एक छोटा सा बच्चा जैसे आप सभी आए हैं इस तरह से वैसे मैं आया और फिर एक शेप अप शुरू हुआ मेरे करियर का वहीं से मैं आज भी बताना चाहूंगा जब सभी ने एक एक मेमोरी शेयर की है तो मैं भी चाहूंगा जोशी सर की एक मेमोरी सर आपने हमें डेफिनेटली आपने जो शेप अप किया है उसमें मार बहुत पड़ी है और मैं भी उनमें से एक था मुझे भी बहुत मार पड़ी है और वो भी बाल दिवस के दिन जिस दिन बाल दिवस होता है 14th ऑफ नवंबर शायद आपको याद ना हो सर या जो मेरे बैच के हैं और मेरे सीनियर्स हैं क्योंकि ये दो बैच बहुत ही नजदीक थे इन्हें पता है कि 14th ऑफ नवंबर को बहुत जबरदस्त मार पड़ी थी क्योंकि गलती हमारी इस तरह की थी जिसको बियर नहीं किया जा सकता और जैसा कि मेरे बड़े भाई डॉक्टर अंकित गुप्ता ने बोला कि हमें कुछ चीजें जो हम कभी नहीं भुला सकते जो सीखने को मिली हैं फ्रॉम नवोदय तो द बेस्ट थिंग इन दैट इज डिसिप्लिन या डेफिनेटली डिसिप्लिन which you need must in your life discipline is to do the correct thing at the correct time in the correct manner like that but discipline में भी self discipline मैं जो अपने जो अनुज है मेरे छोटे भाई हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि डिसिप्लिन ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ
दिखाने के लिए आप कर रहे हैं, टीचर को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं या अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए बंदे को। हमें अपने आप के लिए पढ़ना है। मैं यहाँ कहूँगा कि थोड़ा सा सेल्फिश भी बनिए आप। ये देखिए, एक गंदी आदत होती है, सेल्फिश एक बहुत गलत वर्ड होता है, लेकिन सेल्फिश बनिए अपने आप के लिए। अपने आप के लिए ऐसे कि चाहे कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, बट मुझे पढ़ना है। कोई एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, मुझे करना है। कोई अपनी साफ सफाई कर रहा है या जो आपके आसपास का डेकोरम है उसे बना के रख रहा है या नहीं रख रहा है, बट मुझे वो करना है। तो इस मामले में आप थोड़े से सेल्फिश बनिए और फिर देखिए उसमें ही आपको मजा आने लगेगा एक चीज। तो ये चीज अपने आप में ढालिए, दूसरे के लिए नहीं, ये अपने लिए करना है। और फिर देखिए आपको मजा आएगा और आप अपने कैरियर की तरफ बढ़ पाएंगे। अभी तक एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी तक जितने मेरे फ्रेंड्स ने बोला है वो अपने आप की फील्ड के एक मास्टर थे। दे हैव फुल कमांड ऑन देयर सब्जेक्ट, इसीलिए वो डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, सब कुछ बने। और शायद मुझे मौका भी इसलिए बोलने को यहाँ दिया गया है कि जो कुछ बच्चे होते हैं ना, जो जो सब चीज में कुछ कुछ होते हैं, इन्हें सब चीज में कुछ कुछ आता है, जैसे कि वो पढ़ाई भी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, उनका गेम में भी थोड़ा थोड़ा मन लगता है और थोड़ा फिजिकल फिटनेस, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है उनके अंदर। तो वैसे लोगों के लिए मैं चाहूंगा कि जो मेरी फील्ड है उसमें वो लोग हैं। मेरी फील्ड में आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ चाहिए, थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस और थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ी थोड़ी सारी चीजें, आपकी पर्सनैलिटी, सब कुछ। एक जो मीडियोकर्स होते हैं उन लोगों के लिए ये फील्ड है। ये नहीं कह रहा मैं कि इससे ऊपर वालों के लिए भी नहीं होती, डेफिनेटली दे कैन क्रैक दीज एग्जाम। आज मैं जहाँ हूँ वहाँ मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं आया, ये बात सीधी सी सभी लोग जानते हैं, और जैसे कि सभी लोग ने जो स्ट्रगल किया है वो मेरी लाइफ में भी रहा है, बट मैं उसे नहीं बताना चाहूंगा। मैं सिर्फ यही कहूंगा जो मैंने बोला आपको, दो चीजें, डिसिप्लिन, उसमें भी सेल्फ डिसिप्लिन रहिए, और दूसरा थोड़े से सेल्फिश अपने लिए बनिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट। और मुझे पता है कि इस फील्ड में जाने के लिए, जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि जिन्हें देश सेवा, मैं ये नहीं कहूंगा कि और सभी जो फील्ड्स में जाते हैं वो देश सेवा नहीं करते हैं, डेफिनेटली वो भी करते हैं, लेकिन जिन्हें कुछ ज्यादा जज्बा होता है, जो फोर्सेस में आना चाहते हैं, वो इस तरफ आ सकते हैं। तो अगर किसी को सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पता करना है तो वो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके मुझसे पता कर सकता है। और क्योंकि मैं इसलिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन हूँ उनके लिए, क्योंकि मैं आज एक ट्रेनर के रूप में कई साल अपनी दे चुका हूँ। मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज किए इसमें आने के बाद, सर्विस में आने के बाद। मैं 2003 में ज्वाइन कर लिया था बीएसएफ को, और जब से मैं फिर पंजाब में पोस्टेड रहा ऑन पाकिस्तान बॉर्डर, एंड आफ्टर दैट JNK LOC, आप लोगों ने शायद सुना होगा, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, मैं वहाँ भी रहा -डिग्री टेम्परेचर्स में। आई सर्वाइव देयर, एंड JNK में मेरी 7.5 years सर्विस मैंने की है। उसके बाद मैं कोलकाता बांग्लादेश ऑन इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, एंड आफ्टर दैट इन नॉर्थ ईस्ट अभी मैं हूँ, नॉर्थ ईस्ट में राजस्थान के अलावा, और गुजरात में अभी जाना बाकी है। बाकी नॉर्थ ईस्ट में मैं त्रिपुरा रहा, यहाँ रहा, और गुवाहाटी असम में रहा। तो इतना सारा मैंने सर्विस कर ली है। नाउ आई हैव पुट इन 18 years ऑफ जॉब। तो इस फील्ड में अगर कोई आना चाहता है, इसके अलावा मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी रहा हूँ। तो ट्रेनिंग के मामले में अगर किसी को कुछ टिप्स चाहिए और कैसे क्रैक करना है एग्जाम, हाँ एक चीज़ और बता दूं, बीएसएफ में कई जगह पे डायरेक्ट एंट्री होती है, लाइक कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, SI, सब इंस्पेक्टर, ये डायरेक्ट लेवल पे होते हैं, और असिस्टेंट कमांडेंट, इट इज क्लास 1 गेजेटेड पोस्ट। तो ये यूपीएससी के थ्रू होता है, बाकी ये SSB और ये सब लोग कंडक्ट कराते हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो जिसको भी उस चीज़ की गाइडेंस चाहिए, तो मैं उस टीम में भी हूँ, हमारी राघवेंद्र भाई साहब की टीम में भी हूँ मैं, और मैं अपने बैच की तरफ से कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो मुझे मेरा नंबर कहीं भी मिल सकता है। और आगे अगर किसी की हेल्प को किसी की चाहिए तो वो मैं
यहाँ रहते हुए अगर कर पाऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी दूर हूँ, मैं अपनी फैमिली से भी दूर रहता हूँ, तो डेफिनेटली आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी फॉर नवोदय, क्योंकि ये भी मेरी फैमिली है एक नवोदय। तो जिसको भी हेल्प इस फील्ड में चाहिए तो मैं आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी। और आज इस मीट में मुझे पार्टिसिपेशन देने के लिए और मुझे बोलने का मौका देने के लिए आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, डेफिनेटली राघवेंद्र भाई साहब। और मैं अभी देख रहा था वहाँ भूमि पूजन चल रहा है उस गेट का, वो जल्दी से बने गेट, उसके लिए भी हमने उस टीम में रह के काफ़ी मेहनत की थी और बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। और इस तरह की आगे भी कोशिश जारी रहना चाहिए, और जब भी मुझे मौका मिलेगा, मुझे भी मौका दिया जाए और मुझे मौका मिलेगा, मैं डेफिनेटली आई विल जॉइन यू। एंड द टाइम इज restricted, so I would like to close my lecture, Raghav. Okay, thank you, KP, and we appreciate how you summarize your journey and with short memories plus a lot of offering, especially that mix kind of जो लोग रहते हैं वो हमारी फील्ड में आ जाए। अदरवाइज मिक्स लोगों का रहता है कि हम कहाँ जाएं, कोई साइंस में अच्छा है उसको लगता है कि चलो इंजीनियर बन जाएंगे, लेकिन कोई स्पोर्ट्स में रहता है, तो मिक्स लोगों का काफी डिलेमा रहता है। लेकिन इट इज गुड दैट you have offered them some hopes that what they can do, especially in the field where you have achieved so much. And hopefully going forward, we will be looking for more guidance for students from your side. And we will continue as we have discussed in our part of initiatives. And as you are already part of team, so you will get communicated on whatever plans we have going forward. So thank you again for coming forward and sharing your experience. Thank you. Next in line from the KP batch only, Prashant Sharma. I am going to unmute him and invite him to address. Prashant is also from the second batch, and currently he is chartered accountant and doing self-practice in the Delhi. And over to him to share more. I will request if coming participants can briefly address, as we are running out of time, so that we can quickly cover all the what whoever is waiting in line. Thank you. Hi Raghavan, can you hear Prashant, me? yeah, Prashant, I can hear Okay, you. thank you. Good afternoon. प्रशांत वीडियो तो मैंने ऑन नहीं किया क्या? ऑन किया हुआ है, वीडियो इज ऑन नहीं पता नहीं, तो मेरे स्क्रीन पे केपी का दिख रहा है। Okay, respected Joshi sir, I think Aruna madam is also online. So respected Aruna madam, principal sir, और बाकी मेरे फ्रेंड्स अंकित, रामेश्वर, बाकी जूनियर्स, सभी भाइयों को और जो लेडीज हैं उनको भी। So as Raghavan told, I am a chartered accountant and I am practicing in Delhi. I have my firm प्रशांत शर्मा एंड कंपनी। सो जैसे सभी ने बोला, अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस, कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है। लाइफ में सभी जो भी आदमी कहीं पर अपनी लाइफ में अपने फील्ड में अगर कहीं ऊपर आता है, टॉप पर आता है, तो बिना किसी मतलब सक्सेस कभी बिना फेलियर्स के या बिना हार्ड वर्क के या बिना उसके नहीं मिलती। और आई थिंक स्पेशली इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड, it is said that this is the second toughest exam, professional exam actually in the world. So इसको क्रैक करने के लिए आई थिंक दो चीजें बहुत जरूरी है। फर्स्ट थिंग इज पेशेंस एंड द सेकंड थिंग इज हार्ड वर्क। ये दो चीजें अगर आप करते रहोगे, पेशेंस आप बना के रखोगे, हार्ड वर्क आप करते रहोगे, तो ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे आप सक्सेसफुल ना हो पाओ या आगे आप ना बढ़ पाओ। और दूसरी चीज, ये एक ऐसी चीज भी है जिसमें आपको, जैसे मेडिकल लाइन में भी होता है, दूसरी लाइन में भी है, कि सक्सेसफुल होने के बाद, आपको बनने के बाद भी आपको उतना ही हार्डवर्क लाइफ में करते रहना पड़ता है। एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये आप कभी खत्म नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन आपने बंद कर दिया उस दिन आपका करियर वहीं रुक जाएगा, फिर आप आगे और ज्यादा बढ़ने के लिए सोच नहीं सकते। तो बाकी सीए
एक्चुअली जो मुझे पहले लगता था कि शायद हमारे स्पेशली हमारे एरिया में सीए को लेके कोई बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता नहीं है कोई अपने बच्चों को, क्योंकि मुझे बहुत कम, स्पेशली हमारे नवोदय से तो मुझे बहुत कम लोग ही नजर आए जो सीए हैं या सीए कर रहे हैं। पर आज जो डाटा शेयर किया राघवेंद्र ने, सो आई थिंक मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसमें 8% आप दिखा रहे हो कि एटलीस्ट 8% लोग हैं जो परस्यू करना चाहते हैं इस करियर को। और दूसरी चीज, ये करियर ऐसा है जो आज भी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव करियर है। अगर अगर आप कुछ कोचिंग्स की फीस छोड़ दो तो आज भी शायद पूरे सीए में 50,000 भी फीस नहीं जाती, सारी चीजें मिला के, जिसमें आपके सारी चीजें इन्वॉल्व है, आपकी मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल आपको लेना होता है, सब कुछ लेना होता है, वो सारी चीजें उस कॉस्ट में इंक्लूड हो जाती हैं। सो जो मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये कोई, और दूसरी अच्छी चीज जो इस कोर्स के साथ है कि ये कोर्स कोई किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, आपको कहीं पर रेगुलर क्लासेस के लिए नहीं जाना, बल्कि आपको काम करना है, आपको ट्रेनिंग करनी है। 3 इयर्स मैंडेटरी ट्रेनिंग है इस कोर्स के साथ। तो उस ट्रेनिंग के लिए आपको आपको इनफैक्ट कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो आपकी जो सर्वाइवल है वो आप खुद कर सकते हो। आपको फैमिली पे डिपेंडेंसी नहीं रह जाती, आपको किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं रह जाती। आप अपनी पढ़ाई के साथ अपने लिए कमा सकते हो, अपना खर्चा चला सकते हो, अपनी कोचिंग्स का खर्चा निकाल सकते हो। तो आपकी फैमिली पे अगर कुछ स्ट्रेस भी हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड भी है, तो ऐसा नहीं है कि आप वो मैनेज नहीं कर सकते, आप मतलब इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकते हो सारी चीजें। तो आई थिंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को, लेकिन शायद हमारे स्पेशली हमारे रीजन में शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है इन सब कोर्सों को लेके। और अगर मैं एक इंसिडेंट बताऊं कि जब मैंने क्वालिफाई किया था तो एक मेरे ही रिलेटिव थे, उनका वैसे क्वेश्चन ये था कि अगर आप तो सीए बन गए तो मकान का नक्शा बना देना। तो मतलब उनको इसका फर्क भी नहीं पता था कि सीए क्या करता है और आर्किटेक्ट क्या करता है बेसिकली। तो हमारा एक और इंसिडेंट ऐसी है कि मैं कहीं गया था किसी के दुकान पे, तो उसने बोला आप सीए हो? हाँ। बोले तो आप तो मतलब इनकम टैक्स के वकील हो। तो मतलब उन लोगों के लिए सीए का पर्पज मतलब उतना ही है कि किसी के लिए एक कि आप इनकम टैक्स के वकील हो। ऑल्दो इस फील्ड में जितनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं और जितनी हैं, मतलब जैसे एक सेंटेंस कहा जाता है कि इसका इज द लिमिट। सो दिस इज ट्रू एक्चुअली कि हर फील्ड में आज की तारीख में तो इतनी इंडस्ट्री है, इकोनॉमी इतनी हमारी एडवांस हो गई है, आप मतलब देयर आर नो लिमिट्स। आप अगर कोई करना चाहता है तो वो 50,000 भी कमा सकता है महीने में और 5 करोड़ भी कमा सकता है महीने में, कोई लिमिट नहीं है, ना अर्निंग के हिसाब से, ना काम के हिसाब से, ना रिस्पेक्ट के हिसाब से, किसी भी चीज के लिए। लेकिन शायद हमारे एरिया में आज भी, जैसे दीपक बोल भी रहे थे कि दो ही चीजें हैं, या तो लोग मेडिकल करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तीसरा उनको कोई शायद फील्ड समझ नहीं आता या वो जाना ही नहीं चाहते। तो अब आते हैं स्ट्रगल के लिए। तो इस फील्ड में स्ट्रगल तो है, करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि ट्रेनिंग के साथ होती है, आपको अपनी स्टडीज भी करनी है और आपको अपना ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी होती है। और जो रिजल्ट आते हैं आजकल, तो खैर फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हो गए आजकल। जो मैं देखता हूँ कि ऑलमोस्ट 10 से 20% रिजल्ट डिक्लेयर करता है सीए इंस्टीट्यूट, मतलब जो कि बहुत अच्छे हैं। मैंने अपने, जब हम सीए कर रहे थे तो मैंने उस वक्त 0.25% का रिजल्ट परसेंटेज भी देखा है। तो मतलब 400 में से एक पास स्टूडेंट कोई होता था, और आज की तारीख में उस हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो और उसका शायद रीजन ये है कि कोचिंग फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, बहुत अच्छी कोचिंग फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है। तो अगर कोई बच्चा है जो करना चाहता है, किसी का, हमारे भाइयों में से किसी के बच्चे हैं जो करना चाहते हैं, कोई बच्चा जो सुन रहा है वो करना चाहता है, अगर उसको किसी की तरह की गाइडेंस चाहिए, कहाँ से करें, ट्रेनिंग कैसे करनी है, ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, ट्रेनिंग कहीं करवानी है, इस तरह की कुछ हेल्प चाहिए, कुछ भी जो मैं कर सकता हूँ वो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली, जो अभी तक किए है, किसी को बिजनेस से अपने रिलेटेड कुछ करनी हो, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर उनको किसी तरह की हेल्प चाहिए, किस चीज में प्रॉब्लम है, वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं बात कर सकता हूँ। बाकी अपना स्ट्रगल ज्यादा सुनाने का कोई मतलब नहीं है, भाई लोगों ने बहुत कुछ बताया, हमारे भरत भाई ने बताया, रामेश्वर जी ने बताया, सभी ने बताया। लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो अगर आप मेहनत करते हो। दूसरी एक चीज मैं जो ऐड करना चाहता था, जो हमारे शुरू में राघवेंद्र जी ने एक हमें दिखाया कि हम क्या क्या कर रहे हैं एलुमनी, आई थिंक, क्योंकि मैंने भी जो ऑब्जर्व किया है कि बीच में हम जब भी कोई इंसिडेंट होता है या कुछ हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और दूसरी जगहों पे शुरू करते हैं कि जी हमें गेट बनाना है, कौन कितनी डोनेशन देगा, तो कोई 500 करता है, कोई 1000 करता है, कोई 2000 करता है, जो जो जिसकी जो कैपेसिटी होती है उस हिसाब से करता है। आई थिंक इस
इसके लिए एक प्रॉपर चैनल ये है कि हम एक एलुमनी का ट्रस्ट क्रिएट करें, ऑफिशियल ट्रस्ट रहे, उसको हम एग्जम्पशन भी लें जिसके लिए, और एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इनकम टैक्स से मिलता है, और वहाँ पे एक पूल बनता रहेगा ऑटोमेटिकली, जिसका जो जब देना चाहेगा, जिसको साल में एक बार दे दे, साल में 2 बार दे दे, जिसकी जो श्रद्धा हो, जो जो देना चाहे, 500 दे, 1000 दे, 5000 दे, एक फंड रहे जो कि जो फंड हम यूज कर सके बेसिकली फॉर जो नीडी बच्चे हैं, जो 12th तो पास कर गए, अच्छे बच्चे हैं लेकिन उनको नहीं कर सकते वो, क्योंकि ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे 1-2 तो आ जाते हैं लेकिन सबका हमें नहीं पता, उसकी एक डेस्क स्कूल में रख सकते हैं, स्कूल के नॉमिनेटेड लोग उस ट्रस्ट में हो सकते हैं, प्रिंसिपल सर हो सकते हैं, दूसरे टीचर्स जो कोई हैं वो हो सकते हैं, और वो वहां जाके कांटेक्ट कर सकते हैं कि जी मुझे अपनी पढ़ाई के लिए, मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो रहा है पर मेरे पास फीस के पैसे नहीं है, या मेरे पास फलानी चीज नहीं है, मुझे यहाँ पे हेल्प चाहिए, मुझे वहां पे हेल्प चाहिए फाइनेंशियली, या जैसे 1-2 लोगों की हमारे यहाँ डेथ हो गई, अगर उनके बच्चों की हम पढ़ाई का आगे का जितना भी एक्सपेंसेस है उस ट्रस्ट के, अगर वो कैपेबल नहीं है उसकी फैमिली, तो हम वो आगे फ्यूचर में मतलब उसके बच्चों की पढ़ाई ना रुके, उसकी पढ़ाई चलती रहे, क्योंकि अल्टीमेटली सारे हमारे भाई हैं, हमें उनका ध्यान रखना, उनकी फैमिलीज का भी, अगर उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई है तो उनकी फैमिलीज का भी हमें ही ध्यान रखना है, और कौन देखे, बीइंग एक्सटेंडेड फैमिली है हमारी, नवोदय की एक्सटेंडेड फैमिली है जिसमें हम सब लोग हैं, और मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, तो हमें चाहिए कि हम सबको उसमें कंट्रीब्यूट कर पाए, जैसे गेट का, अभी गेट के लिए हम लोगों ने सबने कंट्रीब्यूट किया, तो ऐसे छोटे छोटे काम हम उससे कई सारे हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि अगर लोग एक, अब जैसे कह रहे हैं 3300 एलुमनी है, तो अगर 1000 रुपए भी देते तो 3.5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया होता साल में, तो 3.5 लाख में आप बहुत कुछ फंड्स निकाल सकते हो। 1000 रुपए आई थिंक इतनी बड़ी रकम नहीं है जो हमारे साथी नहीं दे सकते, सब लोग बहुत कैपेबल हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं और देते भी हैं और कर रहे हैं एक्चुअली, तो आई थिंक हाँ, इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन और उसके आगे का जो उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर ले सकता हूँ, अगर आप लोग सब लोग चाहेंगे तो बात कर लेंगे, इसको सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे, मैं वो उसके लिए मैं अपनी जो भी मेरी तरफ से हो सकता है मैं हेल्प करूंगा, कर दूंगा, अपनी साइड से करूंगा, उसको प्रोसेस करूंगा, बाकी जो लोकल में जो भी लोग हैं बेसिकली रहे हैं वही ट्रस्ट वहीं रजिस्टर्ड हो, लोकल में ही हो, शिवपुरी में हो या नरवर में हो, कहीं भी हो, और उसको फिर आगे हम चलाएं। आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच माय टीचर्स। राघवेंद्र जी कि आपने टाइम दिया बोलने के लिए, आप ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच राघवेंद्र। चलो ठीक है, थैंक यू प्रशांत, थैंक you focusing on some separate side other than the medical and engineering, and hopefully we have seen few more success in this field, but looking forward for more successes from our JNV, and especially the help which you have offered regarding coming up with trust. We had lot of discussions and hope we will have move forward in that directions, and will obviously take your guidance and support on this. You can call me anytime for this. Sure, I'm sure. always ready. Thank you Prashant, thanks a lot for sharing thank insight. And next in line is from third batch Ravindra Gautam. I will going to unmute Ravindra, can you hear us? Ravindra is also known alumni or near around batches, and I will over to Ravindra for more on the banking side. Ravindra is in the banking sector, so what we are focusing in from different sectors. So again, hope we will hear some good guidance for students from Ravindra. Ravindra, can you hear me? थैंक यू राघवेंद्र भाई साहब। सबसे पहले मैं जोशी सर को प्रणाम करता हूँ। जो वीडियो दिख नहीं रहा है, एक मिनट रविंद्र, कुछ इशू हो गया क्या? सिर्फ केपी का कुछ अटक के रह गया है। कैन यू, आपने वीडियो ऑन कर रखा है रविंद्र? हाँ, मैंने वीडियो ऑन कर रखा है। फिर कुछ टेक्निकल चैलेंज लग रहा है। Yeah, it's not visible for सिर्फ me as well. केपी का दिख रहा है ना सिर्फ अभी? हाँ, अभी शायद अब प्रशांत भैया का दिख रहा है मुझे, so there might be some issue. right, now right. it's visible. Now yes Ravindra, we can see you. Continue. थैंक यू राघवेंद्र भाई साहब। सबसे पहले जोशी सर को प्रणाम करता हूँ। सर हमारे टीचर हैं, जैसे मेरे बड़े भाई लोगों ने बताया, अनुज लोगों ने भी बताया। और एक्चुअली क्या है कि जब भी स्टार्टिंग से बात हो रहा है तो हर चीज एक अपना मनी के ऊपर आगे डिपेंड होता है, हर चीज में मनी का रोल रहता है।
तो बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इकोनॉमी में भी आपको हमेशा हेल्प करता है। इंडिया की जो इकोनॉमी बढ़ रही है उसमें हमेशा बैंकिंग सेक्टर का हाथ रहा है। जितने भी फोल्ड है, 3 फोल्ड 4 फोल्ड जितना भी वो इंक्रीज कर रहा है उसमें बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा मदद करता है। तो मैं एसबीआई में हूँ, मैंने एसबीआई को एज ए पीओ ज्वाइन किया था और अभी चीफ मैनेजर हूँ। और मैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जैसे एंटरप्रीनर की बात चली थी, जैसे दीपक भाई साहब ने बताया कि एंटरप्रीनर आल्सो नीडेड मनी। तो ये सारी चीजें क्या है कि आप बैंक के पास जा सकते हैं, बैंक में लोन अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आप मीडियम एंटरप्राइज स्टार्ट करें या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो भी स्टार्ट करें उसके लिए काफ़ी सुविधाएं बैंक देती है। और स्टूडेंट जो हमारे हैं, अनुज जो है जो 12th में है या फिर अभी 12th पास आउट हुए हैं, उनके लिए एजुकेशन लोन की फैसिलिटी है। तो एजुकेशन लोन काफ़ी अच्छा रहता है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काफ़ी जोर रहता है। जैसे भरत ने बताया कि वो ऑर्गेनाइज करते हैं टू सपोर्ट द स्टूडेंट। तो उसमें एजुकेशन लोन एक ऐसा फाइनेंशियल नीड रहता है, ऐसा मतलब हेल्प रहता है जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन में आगे लेके आ सकता है। और उसमें आपको 15 साल का रीपेमेंट पीरियड मिलता है। मतलब मान लीजिए अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी उसको पे करेंगे तो 15 साल इज ए लॉन्ग टाइम। दूसरा, उसमें आपको 20 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं। मतलब आप कोई भी एजुकेशन में हायर साइड जाइए या फिर आपको प्रोफेशनल एग्जाम जैसे सीए है या फिर आप एमबीए करना चाहते हैं, आईआईटी से आप डिग्री करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए आपको उसमें हेल्प मिल सकती है। और रही पर्सनल लेवल पे, आप बैंक सेक्टर में जॉब करना एक काफ़ी अच्छा है। सोशली आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, आप पर्सनली भी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ कि आप एक घर परचेज करते हैं तो जनरल पब्लिक को आप जो भी इंस्टॉलमेंट देंगे उसका हाफ आपको पे करना पड़ता है। तो आपके पास घर होगा, आपके पास कार हो सकती है, और आप बैंकिंग सेक्टर में काम जॉब करके आप ले सकते हैं। आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन में ले जा सकते हैं। दूसरा, सोशल सेक्टर में भी आप हेल्प कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को घर की जरूरत है और आप एक ब्रांच मैनेजर हैं, तो आप उसको लोन देंगे तो मतलब उस पर्सन की जो थैंकफुलनेस होगी वो आपके साइड रहेगी कि देखिए उन्होंने, इस बैंक ने हमें जरूरत पड़ने पे मेरे घर के लिए ये सारी चीजें दी या लोन दिया। या फिर कोई एग्रीकल्चरलिस्ट है, उसको आपको फसल के लिए दे सकते हैं, तो उसमें आप सोशली उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप बैंक में रह के कर सकते हैं। सो बैंकिंग इज ए गुड अपॉर्चुनिटी और काफ़ी आपकी सैलरी भी अच्छी रहती है, काफ़ी पर्क्स भी अच्छे रहते हैं। इसके अलावा आप इसमें 2 लेवल पे ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए पीओ कर सकते हैं, प्रोफेशनली ऑफिसर, और एज ए क्लरिकल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीए लोग भी आजकल बैंक में अप्लाई कर रहे हैं, वो भी आ सकते हैं। एमबीए फाइनेंस वगैरह से करके वो लोग भी एक हायर डिग्री पे आ सकते हैं। तो दीज ऑल आर फॉर अवर 12th प्रेजेंट छोटे भाई जो भी हैं उनके लिए। और आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मेरा नंबर है, अगर उनको कुछ गाइडेंस चाहिए, कहीं से उनको लोन लेने में थोड़ा कहीं प्रॉब्लम आता है, तो आई कैन स्पीक टू दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑफ एसबीआई, क्योंकि मैं एसबीआई में, तो डेफिनेटली दे विल हियर टू मी। सो मेरा नंबर शेयर है ही, जो भी हो, आई विल वेलकम ऑल द थिंग्स दैट्स फ्रॉम यू। And thank you very much again, Raghavan Bhai Sahab, because it's all night, I think, in the US. You are taking so much this one cause for us. Thank you very much. Hey, thank you, Ravin. I think you touch the need of the students as of now who are facing the financial or who think about the financial. As I mentioned in my that career interest or challenges, also finances is the one of the need where I think some of the students face and they could not move forward in their career. So we will obviously get back to you for your guidance and for your support for those students who are looking for such financial help from the banking sector, especially SBI or other banks. So thank you focusing on that support and offer for help, any help for the students. And next we will moving forward in our directions. Next is Sip Kumar Patak. Sip Kumar, are you there? I will going to unmute you. Check if you can and hear me. So Sip Hello. Kumar is from next batch. Yes, yeah, I can see you, Sip Kumar. I can hear you. So मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yeah, आ रही है Sip Kumar. Sip Kumar is from the next batch, 4th batch, I think. So welcome, Sip Kumar. 1990 से 1990 से 1997 तक मैं वहाँ पे रहा हूँ
और मेरा सौभाग्य रहा है कि था और के साथ साथ आवाज आपका ब्रेक हो रहा है शिव कुमार, थोड़ा आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, वैसे तो मेरे सौभाग्य रहा है कि जो जवाहर नवोदय की जो व्यवस्था है माइग्रेशन की, उसका मैंने भरपूर उपयोग किया है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय शिवपुरी के अलावा 1990 से 1993 तक शिवपुरी में रहा और 1993 से 1994 तक मैं पुंछ भी गया था, जम्मू कश्मीर में। वहाँ की खूबसूरती का बहुत आनंद लिया। लेकिन ये सब शुरुआत करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इस व्यवस्था के तहत जो आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, राघवेंद्र भाई साहब और पीछे से ये जो दीपक गोयल भाई साहब हैं और प्रदीप है ना, इन लोगों का बहुत, ये देखिए प्रदीप की मुस्कुराहट मुझे दिखाई दे रही है, तो इन लोगों का बहुत ही जबरदस्त सहयोग रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो पथ प्रदर्शक जो हैं विक्रम जोशी सर, उनको सादर नमन करूंगा। प्रिंसिपल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीच में कभी कभी अरुणा मैडम भी दिखाई दे रही हैं, तो अरुणा मैडम को भी मेरा पूरा नमन है, सादर प्रणाम है। और जितने भी नवोदय विद्यालय से जो टीचर्स लोग हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ये कहना चाहूंगा कि नवोदय एक ऐसी जो हमें वास्तव में जीने Sorry to interrupt you, Sib Bhaiya. If you can hold your mic on your hand, that will be better. We can hear you better. Yeah, now it's better. हेलो, आवाज आई? हाँ जी, अब बढ़िया है, आप कैसे बोल तो सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि नवोदय विद्यालय ने हमें वाकई में जीवन जीने की सही कला सिखाई है, लोगों के साथ कैसे जीना है। और जैसे नवोदय से बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है कि समाज में कुछ हम लोगों ने कुछ खो दिया है। अब खोने की सबसे बड़ी समस्या ये है कि समाज जो बाहर है वो नवोदय विद्यालय में नहीं है। नवोदय में हर एक इंसान एक दूसरे से जुड़ा रहता है, चाहे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। और अभी तक जितने भी मैं अपने बड़े भाइयों के साथ आवाज सुन उनकी बातों को समझ रहा था, सबने अपने जीवन में बहुत सारी क्या कहते हैं मेहनत से इतनी ऊंचाइयों को छुआ है। और वाकई में ये जो है ना, हमारे जितने भी जो नए जो भी बच्चे आने वाले हैं, हमारे जो भाई बहन है अभी समाज में कदम उठाने वाले हैं, तो उनसे बस यही कहा जा सकता है कि भाई अपने जीवन में इन सभी लोगों से सीख लें, ताकि वो कुछ न कुछ जीवन में ऊंचाइयों को छू सकें। और ये सब वाकई में जो हम लोग का एलुमनी मीट का जो प्रोग्राम है, इसके पीछे का रहस्य भी होना चाहिए कि वो इन लोगों के जीवन से क्या सीखते हैं। चलिए मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं एक्चुअली लॉ से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, है ना। मैं हाईकोर्ट में बेंच सेक्रेटरी के रूप में पिछले मतलब मान के चलिए तो मैं 1 साल से हूँ, हाईकोर्ट में 12 साल से कार्यरत हूँ, है ना। पहले मैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के रूप में 2011 में हाईकोर्ट इलाहाबाद में ज्वाइन किया था। और फिर उसके बाद प्रमोट होते होते बीच में डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, बेंच सेक्रेटरी के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हूँ। अक्सर हाँ आप लोगों ने देखा होगा मूवी में, जैसे कि कोर्ट की कार्रवाई होती है तो उसमें जो सामने जो जज साहब के सामने जो लोग बैठे हुए होते हैं, जो कोर्ट चलाते हैं, तो वो वही मेरा काम है बेंच सेक्रेटरी के रूप में। और वैसे कोई मतलब जैसे कि इसमें जाने के लिए ऐसा कोई प्रिपरेशन करने की इतनी खास जरूरत नहीं होती है। आप असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का एग्जाम करते हैं हाईकोर्ट में, आप उसको दे सकते हैं। और उसको देने के लिए उसका जो पूरा जो प्रिपरेशन होता है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विस के एग्जाम, उन सब चीज़ों की तैयारी के तहत भी आप और बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब है। रिस्पेक्टेबल जॉब इसलिए कह सकते हैं कि मतलब इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, बाउंडेशन सेंस की आपके जो वहाँ पे जो काम करने वाले जो लोग हैं, आपके जो हाईकोर्ट के जजेस हैं, वो आपके काम को तरजीह देते हैं, सम्मान देते हैं, और कहीं ना कहीं जो है आप समाज की भी सेवा करते हैं। और अभी मैं देख रहा था कुछ बीच में एडवोकेट भी हैं, शायद देखिए कुछ अभी नाम में देख रहा था, एडवोकेट विनोद करके कोई है ना। तो देखिए होता क्या है ना कि समाज में कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, जैसे पीएमटी और पीईटी की बात कर रहे हैं। हाँ वाकई में मैं कह सकता हूँ कि नवोदय विद्यालय में जो पास आउट होने वाले जो लोग हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि साहब हमारे लिए सिर्फ ऑप्शन पीईटी पीएमटी है, लेकिन पीईटी पीएमटी ही पूरी दुनिया नहीं है। पीईटी पीएमटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी जॉब्स होते हैं जैसे जजेस की जॉब्स हैं, वो बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, और एक मान्यता हमारे देश की बताता हूँ आपको। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप अगर कोई पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो लोग सोचते हैं चलिए हम एडवोकेट बन जाते हैं, मतलब बहुत लो स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो एडवोकेट बनना या फिर लॉ से जुड़ना कोई बेकार चीज नहीं है। आप ये मान के चलिए हमारे देश का जो मेन व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है,
वो भी लॉ से ही चलती है ना। तो लॉ ग्रेजुएट्स हैं या लॉ के जो लोग माहिर लोग थे उन्होंने हमारे संविधान को बनाया। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर पीटी पीएमटी कंसीडर कर रहे हैं तो इसके अलावा भी अगर कुछ ऑप्शन हो सकता है तो लॉ से जुड़ी चीजें भी हो सकती हैं, आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। और इसके लिए कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से अपने जीवन को सुधार भी सकते हैं, दूसरों के जीवन को सुधारने का एक अच्छा मौका मिलता है, समाज सुधारक के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ, समय कुछ ज्यादा नहीं, राघवेंद्र भाई साहब मैं समझ सकता हूँ। धन्यवाद। Thank you to keeping it short, Shiv Kumar, and we know that we are running out of time, and so we will need to, and I especially the way you focus on the opportunities in the law field going forward, as you are already part of our coordination team, we will provide more guidance to students in separate sessions. Thank you, Shiv Kumar. Next, I will like to invite Anil Jain, and he is also, this is बिल्कुल एक separate जो कि which we rarely find the to go people from our areas. He is scientist in ISRO, and that is also one of the known organizations in our country. So Anil, I have unmuted. Can you hear me? Yeah, I can hear you. You are able to hear me? Yes, I can hear you. I can see you. Thank you. Yeah, welcome. Very good. And Thank you. Thank you. Good morning, Joshi sir. Joshi sir, pranam sir. Really, after listening your starting word, I could not control even my emotions and all memories of our schooling, our friends, and our all teachers, including Kushwa sir, Tripathi sir. We are missing now, and it is one of the best initiative I can tell with our Raghavendra and all organizer who has given this opportunity to interact and to address this August community, because during last 15 years, though I belongs to Magaroni, because of some reason or other reason, I could not even visit our school. So sorry for that. But I am telling that next time in April, most probably I will request principal sir to make one program. I will anyway intimate, and I will 1 day or 2 days I will try to interact with the student. That is my promise. Whenever next time I will visit. So basically, already people have told so many things. Now further, I don't want to elaborate, because what is the strength of our JNV? Everybody has told very nicely. I will tell about myself. Basically, I have completed BTech, MTech from MITS, and after that, I was here last 15 years in Vikram Sarabhai Space Center, ISRO. And here, one most different things which I want to share to all of our alumni and our staff member, that Sri Chitra Institute Hospital is one of the best hospital in neuro, and up to 15 years age, any child who is having any kind of disease, it is free of cost. They have to get reference from the respective district governments. Any reference letter is needed for getting the free service in the Sri Chitra Hospital, and it is totally free of cost for the Indian citizenship. So this is which I was even not aware recently, some 4 or 5 years back only. So whenever, if any, those such things should not be there, but I want to, because this is an opportunity and I want to share this. If anybody like some किसी को हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को जब भी कुछ भी होता है, तो श्री चित्रा एक इंस्टीट्यूट है यहाँ, जो कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करता है। मैंने 2-3 लोगों को, मतलब जैसे जो मेरे जान पहचान के हैं, उनका इजिली इलाज हुआ है बिना कुछ अटेम्प्ट के। और मैं यहाँ रहता हूँ केरला त्रिवेंद्रम में, तो जो भी मतलब उससे रिलेटेड भी अकोमोडेशन रिलेटेड एंड ऑल, वी कैन मींस सी दैट आल्सो। और बच्चों के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि परेशानियां हर के जीवन में आती हैं। जैसे आपने देखा कि जितने भी अपने अभी सीनियरों से सुना कि उनके, तो इसलिए हर एक की जिंदगी में कष्ट आते हैं, तो उससे डरने की बात नहीं है। और मेरा अनुभव ये भी रहा है
कि जो लोग को जितना कष्ट है और जितना उसको जरूरत जल्दी रहेगा, सपोज यू नीड जॉब अर्ली बिकॉज यू आर द ओनली सोल पर्सन इन योर फैमिली टू गेट सम सोर्स ऑफ इनकम, सो फॉर दैट गॉड विल टेक, मतलब भगवान उतनी ही परीक्षा आपकी लेगा, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। और वो नवोदय इस चीज को बड़ी भांति से अच्छे से निभाता है, क्योंकि ही इज हैविंग व्हाटएवर अवर अंकित गुप्ता सर हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस 5 क्वालिटी, सो आई डोंट वांट टू रिपीट अगेन। लेकिन आपको अंत तक लड़ना है और आपको सफलता 100%, नो डाउट ऑन दैट, इट विल कम, बिकॉज भगवान उसको और ज्यादा परीक्षा लेता है। तो इसलिए आपको डर, क्योंकि 90% इस बुक्स में भी जैसे लिटरेचर के पीपल आर अबंडनिंग देयर स्ट्रगल, the reaching up to 95%, but he was not aware that he has reached, otherwise he can again go ahead and he can complete the 5% path also. So you should not abandon. If you are persisting, if you try to attain goal, and Navodaya can attain goal at any circumstances. And now Alumni is there, it is one of the best platform for all Navodayan. So please means already now people have told it. For me it is actually COVID become a, I can say this is one of the best opportunity I was really missing. I could not, I have learned a lot today about this Alumni, how it is functioning and what way we can contribute. Till now I have not those who are my direct contact, for them something I can do, but till now other than that I have not done anything for Alumni and a direct form. So whatever I can do in henceforth, and especially I am requesting Raghavanji that online mode, some courses, it can be technical, it can be counseling, it can be technical also, because I have seen Navodaya, some our exposure is not that much. So some special field people are there, they can even as a tutor we can give free of cost some classes also, means some technical class also apart from means counseling, because that also it will add our at least that what are the way how they can improve, what are the means mechanism, means what are the latest technology. और एक अपना साइंटिफिक वाइज आई विल जस्ट टेल वन लाइन दैट जीडीपी में, जैसे अभी भरत जी ने भी बोला, मेरे बैचमेट हैं, कि उन्होंने भी बोला कि जैसे बिजनेस, सो कई अपने यहाँ जो जीडीपी है आज भी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में, मेडिकल आइटम में वी आर इम्पोर्टिंग 90%. So this technology, if you really want to contribute to country, but government is also having some their own limitations, so we cannot directly do miracle in one a day. So but some small startup in terms of some reverse engineering, and I can contribute something. If any startup, technical startup in terms of manufacturing you are doing, I can give the specification of machine, I can give but way uses, because I belongs to manufacturing, made in India, whatever our Narendra Modi ji have initiated. So because lot of electronics, lot of this medical, because even our PM Modi is also telling to ISRO indirectly that why you people are also, though you are well in space sector, but why you are not directly able to convert your technology, so you should support basically. But that way, because this ISRO organization is very much focused towards particular goal, that's why this being a government organization, this may be the one of the organization which is succeeded till now, and all over world it is prestigious institute in being a government. Otherwise generally government अपन भारतीय एक साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम कभी नहीं कर सकते, लेकिन individual we are doing wonders, like our Rameswaram Deepak ji, we can see there are so many people have done wonders in while going abroad, and they have means made our India shine. But what I want as a technology also, any startup in technically things which I can support in some way or another way, I am ready to help, and I can share my experience. And DRDO prestigious institute, so people can attempt in this line also. This is also, but only thing is you should make sure these field are not like a charming field that you will have driver, you will have that big course, but salary wise it is satisfactory. Nowadays government salary are better, means almost comparable. We can with contentment is the greatest happiness. With
goal. If you are joining, it will be means prestigious job, and you will get satisfaction because directly you are contributing something for nation. And this is also one of the best opportunity. And if you face any interview, suppose your colleagues, your relative, anybody is having DRDO interview, ISRO interview, I can whatever experience I can have, I can share. Thank you, Raghavanji. Please take up. Hey, thank you, Anil. So much in quick time. You have shared a lot of not only on your focus on your fields, but covering the others ones as well. And as you mentioned that we can also offer some technical online. So we are already doing that. We will cover in especially the fields in IT what I have, and Pradeep will cover what we are doing. We are already scheduling some regular sessions for alumni for sharing some technical knowledge and all. And going forward in your whatever as you are offering, so we will look forward to sharing and benefit alumni and students more on that part as well. So thank you, Anil, again for some Thank you, sir. inspiring. Thank you. Next in line from the same batch, Anil batch, Vandana Goyal, CH from the same batch 91, and currently company secretary in Bombay, and over to her to share more about her thought about journey and what she can give the inspiring words, especially to the girls who are not much think about the careers what at least we people seen till now. But over to Vandana to share more. Vandana, can you hear me? I have unmute. Now audible? Yes, Vandana, I can see you now. I can hear you. Over to you. सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सर, जोशी सर और अदर गुरुजनों एवं सभी नवोदय को प्रणाम बोलना चाहती हूँ। मुझे सारे एलुमनाई कमेटी मेंबर्स को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे आज सभी के बीच में बोलने का मौका दिया है। और मुझे काफी खुशी हो रही है कि मैं काफी टाइम से डिस्कनेक्ट हो गई थी। जैसा कि बताया गया है कि नवोदय से निकलने हमारे समय में जो हुआ करता था कि उस समय उतना कॉन्टेक्ट या उस समय उतना मोबाइल्स की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो कॉन्टेक्ट तो शायद मेरे डिस्कनेक्ट होते गए। मेरे लिए मुझे ऐसा खुशी हो रहा है जैसे कुंभ के मेले में से मैं वापस फिर मिल गई हूँ। और मुझे राघवेंद्र जी ने, राम मनोहर और भी मेरे क्लासमेट ने मुझे यहाँ पर जोड़ा, और मुझे काफी खुशी हो रही है कि मैं इतने सालों के बाद सभी लोगों को देख पा रही हूँ, मिल पा रही हूँ और सुन पा रही हूँ। और विक्रम सर ने जैसे ही जोशी सर ने बोला तो मुझे पुरानी काफी मेमोरीज जो भूल गई थी, इरेज हो रही थी, वो काफी पुरानी सारी याद आ गई कि उनके साथ में हम लोग समय निकाला करते थे। और मैं उस टाइम हाउस गर्ल्स कैप्टन भी हुआ करती थी। और हमारे टाइम पे रईसा मैडम जो हमारे हाउस गर्ल्स वार्डन हुआ करती थी, उनका काफी कंट्रोलिंग हमारे ऊपर हुआ करता था, उर्दू टीचर थी हमारी। तो अगर आज मैं 91 की बैच की हूँ, मैंने पूरा करियर मतलब अपना जो कहते हैं कि 6 से लेकर 12 तक का पूरा जर्नी निकाला, एजुकेशन लिया, आपकी संस्कार जो हौसला अफजाई होती है एक गांव के बच्चे के लिए, वो मैंने काफी सीखा। एज ए गर्ल्स मुझे मालूम था कि उस टाइम मेरे समय में गर्ल्स को उतना प्रमोट नहीं किया जाता था। मैं उन पेरेंट्सों को भी थैंक यू कहना चाहूंगी जो शायद जुड़े नहीं है, जिन्होंने अपनी गर्ल्स को बाहर नवोदय में पढ़ने की देते हैं, परमिशंस देते हैं, क्योंकि उस टाइम को-एड के लिए उतनी फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, को-एड अलाउ नहीं करते थे हमारे टाइम में। और आज मुझे अभी खुशी हो रही है कि मीडिया या अवेयरनेस इतनी फैल गई है कि काफी पेरेंट्स अभी उतने अवेयर हो गए हैं कि गर्ल्स को भी काफी प्रमोट करते हैं। एज ए बीइंग वुमेन मुझे मालूम है कि नवोदय से निकलने के बाद के हमको काफी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मैंने कंपनी सेक्रेटरी में कॉमर्स, शायद मुझे कुछ और बनना था, मैंने कॉमर्स चूज किया क्योंकि शायद मैं बाहर नहीं जा सकती थी। मुझे खुशी हुई कॉमर्स लेके भी। मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि वो अगर कोई सब्जेक्ट को चूज नहीं कर भी पा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं उसमें भी आप अपना करियर बना सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको जो पेशेंट था वो नहीं बन पाए, आप उस तो करियर में जो सब्जेक्ट मिल रहा है उसमें भी आप कई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है।
तो मुझे जब कॉमर्स मिला, कॉमर्स में भी मैंने अपना मुझे जब चार्टेड अकाउंटेंट बनना था, लेकिन चार्टेड अकाउंटेंट के लिए गर्ल्स के लिए आर्टिकलशिप के लिए जाना पड़ता था, वो शायद मुझे उतना अलाउ नहीं था। तभी मुझे कंपनी सेक्रेटरी का फील्ड मिला। जब कंपनी सेक्रेटरी में ट्रेनिंग पहले नहीं लगती है और उसमें बाद में होती है, तो मैं उन गर्ल्स को जो कॉमर्स बैकग्राउंड की हैं, सीए नहीं कर पा रही हैं किसी रीजन से, वो कंपनी सेक्रेटरी इज अ गुड फील्ड। और आजकल मोदी जी वैसे भी कंप्लायंस और उसके लिए काफी फोर्स कर रहे हैं, तो मैं उन सभी को, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, अगर उनको कोई दूसरे फील्ड में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, वो किसी भी मतलब फील्ड में अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। सीए जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं वो सीए में ले सकते हैं, जिनको जिनको मिल रहा है। और रहा फाइनेंशियल्स के लिए, मुझे लगता है कि हम नवोदयन को उतना हौसला अफजाई एजुकेशन मिल जाती है कि हम घर से बैठ के भी कुछ कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं। जैसा कि दीपक भाई ने भी बोला, रविंद्र भाई ने भी बोला, भरत भाई ने भी बोला है कि आप में इवन दो अंकित भाई, उन्होंने भी बोला कि सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। अगर आप में कुछ कर गुजरने की चाहत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर भी बैठे हो। इवन दो जैसे बीइंग ए वुमन, मुझे मालूम है कि हम लोगों को हमारी दो फैमिली के साथ तीसरी फैमिली भी जुड़ती है, हमारे इन-लॉज जुड़ते हैं। शायद हर किसी को वो इन-लॉज का परमिशन नहीं होता है या फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, वो भी घर से बैठ के कुछ ना कुछ कर सकती हैं। ऐसे अगर मैं जर्नी की बात करूं तो मेरी जर्नी में काफी चैलेंजेस आए, क्योंकि एज ए गर्ल आपको मालूम है कि गर्ल्स का एजुकेशन होने के बाद उनका शादी की तैयारी करना चालू हो जाता है अगर वो कुछ नहीं कर पा रही है। तो वो एक चैलेंज होता है। जिस लड़की के अंदर कैलिबर है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो शायद अपने आप को कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन मुझे खुशी है या मुझे ऐसा लगता है कि आपके अगर फैमिली में एज ए बीइंग ए पेरेंट्स, एज ए बीइंग ए इन-लॉज अगर हम बन रहे हैं, तो हमारा ड्यूटी बनता है कि हम वुमन को भी सपोर्ट करें, क्योंकि गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती है, दो पहिए से चलती है, जैसा कि सभी जानते हैं। तो अगर गर्ल्स, अगर घर पर वुमन आपको अगर पीछे से बैकग्राउंड से हेल्प कर रही हैं, तो आप उनको ड्रीम्स को समझने की कोशिश करें और उन्हें प्रमोट करें। और मुझे खुशी है कि मैं जिस बैकग्राउंड से आई, मुझे पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया और इन-लॉज ने भी सपोर्ट किया। और एज ए बीइंग अ पेरेंट, अभी आई बिकम अ पेरेंट, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे नवोदय ने इतना कहते हैं ना एजुकेशन, इतने संस्कार दिए कि मैं उन संस्कारों को मैं अपने बच्चों पे अप्लाई करती हूँ। मुझे खुशी होती है कि हाँ, मेरा जो एक जर्नी था बचपन का, जो एक कहते हैं ना पौधे को एक छोटे से बीज को पौधा बना, फिर पौधे से पेड़ बना, वैसे ही हमारी जर्नी नवोदय में होती है। 6 से लेके 12 एक जर्नी है सबके लिए, और उससे सबको सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और मैं सारे कम्युनिटी मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे आपने इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। कॉमर्स बैकग्राउंड में किसी को कोई भी हेल्प लगती है, कभी भी लगती है, मैं हमेशा तत्पर हूँ और कभी भी मुझे कर सकते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। तो जब भी मैं अपने एरिया में आऊंगी तो नवोदय में मिलकर लोगों को और बच्चों को कुछ उनको समझाने की कोशिश करूंगी। बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड के जिनको पास कोई फैसिलिटी नहीं है या नहीं कर पा रहे किसी रीजन से, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने घर से किया हुआ है कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, तो कोई भी कर सकता है। अगर आप में हौसला है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो आप कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं। तो मैं सभी को यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने हौसलों को कम नहीं करने दें। कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप कुछ भी कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you, Vandana, and all those inspiring words for especially girls, because I think that is what we were missing till now. All boys Navodayans well doing one by one, but you have sharing really good words about how you have inspired. Especially that time it was tough. We can understand and all knows how it is, but you have made it to your career, and that's really appreciable. The way you have where you have achieved today, and hopefully we will involve going forward and more guidance. And I remember in the last sessions of our career guidance, some girls were looking to focus on commerce. So obviously in the next sessions, we will connect with you and hope it will benefit the Navodaya student. Thank you. Okay. Thank you. And next is the participant from next batch, Anupam Paliwal. He is also one of the success of that time. I think he
cracked the IIM, which used to be one milestone. I remember that time. So Anupam, I have unmuted you. Can you hear us? Yeah, I can hear you. Hope you can hear me clearly. I can see you. I can hear you. Welcome. Yeah. Thank you, Raghavendra ji, for organizing it. I think it takes a lot of passion to kind of put this together, and all kind of thanks to you. So since we are again remain on the commerce stream, so I also passed out from commerce in the year 2000 from Navodaya. Of course, I'm saying everybody faced challenges, so we also had our own challenges. But I will more talk about the future than the past. First a bit about myself. So I come from a village called Bhatnavar, which is near Pohri in the Shivpuri district, of course. And I came to Navodaya in 6th, did my 12th from there, went to Indore to do my graduation. And I did BCom, and after that prepared for CAT. And then I joined IIM Calcutta in 2005. 2007 I passed out from IIM Cal, and then since then I've been working in Mumbai. So the field which Vandana Didi and I basically broadly belong to is we call finance field. So we sit in the C also stays not very far from me. Yeah, so I'm based in Mumbai, which is the financial capital of the country, and then primarily I work in the overall financial services space. Now, financial services, जब आप बोलते हो तो it is a very vast field. So काफी सारी चीजें इसमें include होती हैं, from a simple thing such as a bank branch, भी finance का एक हिस्सा है, बड़े banks के headquarters भी finance का हिस्सा है, कई सारी और भी चीजें, insurance हुआ, फाइनेंशियल सर्विसेज में ब्रोकिंग भी इंक्लूड होता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी इंक्लूड होता है. तो कई सारी चीजें हैं जो इसमें हैं. अब उसमें अगर आपको करियर आपको बनाना है तो इसमें 2-3 चीजें जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि पहला, एज अ नवोदय स्टूडेंट यू आर ऑलरेडी इन सम वे क्वालिफाइड. सो आपने एक एग्जाम ऑलरेडी क्रैक किया हुआ है. सो टू दैट एक्सटेंट हमको तब बोला जाता था कि आप डिस्ट्रिक्ट की क्रीम हो. एक वो कॉन्फिडेंस आई थिंक हर एक स्टूडेंट को रखना चाहिए कि बॉस कुछ ना कुछ आप में है, कि अगर आप नवोदय में हो तो समथिंग यू ऑलरेडी हैव, सम टैलेंट यू ऑलरेडी हैव, only thing you need to kind of nurture that further. So that you need to do. Second is that कई सारे जो मेरे बैच के भी लोग होंगे और जो आई थिंक बाकी बैचेस में भी हैं, somewhere or other I think that ambition, एक बार नवोदय से पास होके, बिकॉज नवोदय हमें 12वीं क्लास तक का एक स्ट्रक्चर देता है, बट उसके बाद फिर जो डिसीजंस हैं वो आगे करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो और आई थिंक भरत भाई साहब ने भी उस पर जिक्र किया था कि आजकल दुनिया जो चैलेंजेस लेट्स से हमारे 90 के दशक में थे, वो टेक्नोलॉजी की वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट, वेदर इन टर्म्स ऑफ लोन या बाकी काइंड ऑफ लेट्स से स्टाइपेंड बोल दो, कई सारे बिजनेस फर्म्स अवार्ड भी देते हैं, उन सब की वजह से कई सारे वो चैलेंजेस एड्रेस होने लगे हैं. तो जो मैं आपको बोलना चाहूंगा वो ये कि आप में ऑलरेडी कहीं ना कहीं टैलेंट है, थोड़े अपने सपने हैं वो थोड़े बड़े देखो. बिकॉज जब लेट्स से अगर इंजीनियरिंग में हो तो जब आप आईआईटी की तैयारी करोगे तो मतलब आईआईटी नहीं मिला तो एटलीस्ट तुम्हें एनआईटी मिल जाएगा. अगर तुम लेट्स से अगर एमबीए आपको करना है तो अगर लेट्स से एटलीस्ट तुम अगर कैट या जीमेट अगर आपको बाहर जाना है तो जीमेट देना पड़ता है. अगर उसकी करोगे तो एटलीस्ट तुम्हें मतलब यू विल एटलीस्ट गेट समथिंग व्हिच इज अप टू योर कैपेबिलिटी. सो एटलीस्ट ड्रीम बिग. सो दैट इज आई थिंक वन पार्ट ऑफ द मैसेज. सेकेंड इज एटलीस्ट इन फाइनेंस, आई थिंक उसका भी जिक्र हुआ था कि सीए एज अ डिग्री और इवन कंपनी सेक्रेटरी एज अ डिग्री, so they don't take much from a investment perspective. So ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव डिग्रियां आप बोल सकते हो. एमबीए की मैं जिक्र करूंगा. एमबीए का कई बार ये बोला जाता है कि फीस ज्यादा है और ये सब है, बट मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ. I took a loan to kind of do my MBA, but that loan once I kind of got placed from the campus, that no loan was nothing. I'm saying it was not didn't pinch me much. So that way अगर MBA अगर आप अच्छी जगह से कर रहे हैं तो that is also a good investment so to say. But otherwise अगर आपको फाइनेंस में करियर बनाना है तो CA, CS, ICW, आजकल CFA भी होने लगा है.
So these are kind of good degrees to go with. But I would still say probably CA and CS kind of comprise the larger part. By the way, मुंबई में एक शिवपुरी का बहुत बड़ा ग्रुप है, और इनफैक्ट वो CA कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप है, तो उसमें अधिकतर लोग जो हैं वो CA हैं. इनफैक्ट 1965 से लोग शिवपुरी से मुंबई आना स्टार्ट कर दिए थे CA करके या CA की तैयारी करने. सो स्पेसिफिकली आई वुड से अगर आपको फाइनेंस फील्ड में करियर बनाना है तो मुंबई एक बहुत अच्छी जगह है, बिकॉज फाइनेंस कैपिटल होने की वजह से यहाँ अपॉर्चुनिटी जो है, और जो आप अगर आर्टिकल से भी करते हो या आप कोई ट्रेनिंग भी करते हो, तो जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं वो बहुत ही कम शहरों में एटलीस्ट इंडिया में देखने को मिलेंगी, और वो एक्सपोजर काफी आपको बड़ा मिलता है. तो वो आप ट्राई कर सकते हो. एंड अगर दूसरा तरीका इख्तियार करना है तो वो MBA के थ्रू है. सो ब्रॉडली ये है. अगर कोई क्वेरीज आपकी हैं, सो आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम, स्पेसिफिकली इन कॉमर्स. जो मेरे बैच के बच्चे थे, इवन आई सॉ कि जो लोग 12th मैथ से भी किए थे, वो 12th के बाद दे काइंड ऑफ स्टार्टेड डूइंग देयर CA. सो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ अगर मैथ वाला है वो इंजीनियरिंग करेगा. अगर आपको इंटरेस्ट है, so then people who are doing with PCM also can move towards commerce after 12th. And third thing, I think kai baar is I'm saying in the forum also, a lot of people are from government sector. But see, the fact of life in today's environment is that government will only create so many jobs, right? एक UPSC में probably 1000-1100 वैकेंसी साल में आएंगी. MP भी मान लो, I'm saying government as a whole will only create very small part of the job. The larger part of the jobs will come from private sector, and even among them, the quality jobs come from the technology, right? So दुनिया जब हम नवोदय में थे और जब आप नवोदय में हो, तो दुनिया चेंज हो चुकी है. Today we are able to connect through this medium because that is what technology has enabled. ये चीज 5 साल पहले भी नहीं थी, probably 10 साल पहले भी नहीं थी इस लेवल पे. So the point is that apart from of course जिन लोगों का interest है, surely आप UPSC की तैयारी करो, surely आप PSC की तैयारी करो, but also keep in mind that it is private sector will also offer a lot of opportunities, or it is complete meritocracy. So I think गोयल साहब ने बोला, दीपक गोयल जी ने, कि अगर आपको कुछ आता है तो then you will get valued. If you are a very good CA, you will get valued. If you are a very good engineer, software engineer, you will get valued. So it is an open competition. It doesn't matter that you come from a village in Shivpuri or you come from a metro in Delhi, or let's say Delhi or Bombay. What you know is what matters, and that is what private sector gives you. इसका जीता जागता, I'm saying, अगर आप example देखो तो we are a generation of reforms. I'm saying नवोदय probably 87 में establish हुआ था, और 91 में इंडियन इकोनॉमी ओपन होना स्टार्ट हुई. तो जो लोग पास आउट हुए, आई थिंक जो इनिशियल बैचेस अगर बात करूं, तो जो जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन हुई, तो ये सारी जॉब जो आई, वेदर फाइनेंस में आई या सॉफ्टवेयर में आई, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ गॉट क्रिएटेड. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मी पर्सनली एंड लॉट ऑफ पीपल who are in private sector benefited from. And I think today also we are seeing the same thing, where fintech आप बोल दो या education technology बोल दो, जैसे I saw that Samsung logo behind you. All these digital classrooms are basically creation of technology. So the point I'm saying is that apart from, while you should look at probably government as an employer, but you should also look at kind of private sector, and in that you learn technology. Whatever you do, you need to be at the top of that. So I think that is the message that I leave you with. If there's any assistance required as far as finance is concerned, I'll be definitely be happy to help, and whenever the need requires. So all the best. Thank you. Over to you, Raghavan ji. Hey, thank you, Anupam. Nice to capture the pinpoints where especially commerce one or the other one should focus on. Especially two things I like, where you said that dream big, at least you will get something, and the other way to focus on the private sector. And I think we discussed on the message as well. Yeah, the mindset at our area especially, the more towards on the government, but the time and coming time is not going to be like that. So we will connect with you how we can
focus and aware current students and alumni who are pursuing different courses to make them more aware about the private sectors and technologies with huge of, and how especially the finance we will connect with you for further success. Thank you, Anupam. Next is line Devendra Gurjar, and he is from 94 batch and currently Deputy Commandant ITBP. So again, one from Defense Force, as KP we have already listened. So over to Devendra. I have unmuted it. Can you hear me? Raghavendra Bhai Sahab, can you hear me? Yes, yes, I can hear you now, Devendra. Thank you. सभी को नमस्कार। आदरणीय विक्रम जोशी सर, डिप्टी कमिश्नर एनवीएस, प्रिंसिपल सर, अध्यापकगण और छोटे बड़े भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग कमेटी राघवेंद्र भाई साहब और विद्यालय परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस ऑनलाइन मीट के माध्यम से उन्होंने मुझे आप सबको एड्रेस करने का और आप सबको फिर से देखने और सुनने का एक मौका दिया है। शुरुआत करना चाहूंगा परिचय से। मेरा नाम देवेंद्र सिंह गुर्जर है। मैं इस समय आईटीबीपी में डिप्टी कमांडेंट के पद पर करेरा शिवपुरी में पदस्थ हूं। मैं नवोदय विद्यालय में 2001 बैच पास्ड आउट हूं और नवोदय विद्यालय के पास के ही गांव मगरौनी का रहने वाला हूं। नवोदय विद्यालय का हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान है। इसने हमको एक छोटे स्तर से उठा करके जीवन का एक बड़ा कैनवास दिया है, जहां से हम लोग बड़े सपने देख पाए हैं और उनको काफी हद तक सच भी कर पाए हैं। तो इसके लिए विद्यालय परिवार का एक बहुत बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर, और कहीं ना कहीं हम आपस में एक दूसरे की मदद करके या इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर आकर के अपने विचारों को साझा करके थोड़ा बहुत कुछ पेबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत कम है और शायद हम कभी उस कर्ज को नहीं चुका पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रयास जारी रहने चाहिए। किसी भी देश के विकास में उसकी शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान होता है, और कहीं ना कहीं हमारे देश में जो नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, जिसने ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे विद्यार्थी हैं उसमें हम में से ज्यादातर लोग आते हैं, तो उन्हें एक बहुत बड़ा मौका दिया है। जीवन में सभी के पास कोई ना कोई लक्ष्य होना जरूरी है, और हम लोगों ने अलग अलग लक्ष्य चुने हैं, और जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उससे मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने लिए कोई ना कोई लक्ष्य जरूर बनाएं, खास करके आफ्टर 10th क्लास। वो कुछ भी हो सकता है, वो सिविल सर्विसेज भी हो सकता है, टीचिंग लाइन भी हो सकती है, बिजनेस सेक्टर भी हो सकता है, डिफेंस भी हो सकता है, राजनीति भी हो सकती है, क्योंकि सब जगह अच्छे लोगों की जरूरत है। और नवोदय का जो एक कल्चर है, जो अपब्रिंगिंग है, वो कहीं ना कहीं उसकी सब जगह जरूरत है और वो फैलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं डिफेंस फील्ड से आता हूं, तो इसी के बारे में मैं अपने कुछ विचार आपसे साझा करूंगा। Some targets are so worthy that it is glorious even to fail. ये लाइंस हैं कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जो कि 1999 कारगिल वार के शहीद हैं, परमवीर चक्र से सम्मानित हैं। तो आप इसके आधार पर समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र को देश के अंदर कितना गौरव दिया जाता है। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहना चाहूंगा कि
यदि कोई पूछता है कि एक आम व्यक्ति और डिफेंस पर्सनल के बीच में क्या अंतर है, तो मैं कहूंगा कि जब कोई खतरा पैदा होता है उस समय जो आम व्यक्ति होता है वो खतरे से दूर भागता है, लेकिन एक जो डिफेंस पर्सनल है वो खतरे की तरफ भागता है कि उसको किसी तरीके से खत्म कर सके, सॉर्ट आउट कर सके। और इस फील्ड में ड्यूटी और डिसिप्लिन का काफी महत्व है, और ये दो चीजें कहीं ना कहीं नवोदय विद्यालय में भी सिखाई जाती हैं। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये जो है नवोदय 2.0 चल रहा है मेरी लाइफ का, और काफी चीजें वहीं से मिलती जुलती हैं। तो जो हमारे छोटे भाई बहन हैं जो अभी अध्ययनरत हैं, वो इस फील्ड को अगर चुनते हैं तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा है उनके लिए। और इसमें दो तरीके से एंट्री होती है, मैं इसको दो पार्ट में बताऊंगा। एक तो है आपका इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एंट्री, और दूसरा CAPF जो हमारे हैं, जिस फील्ड से मैं आता हूं, जिनमें ITBP, BSF, CISF, CRPF, SSB ये सब आते हैं। तो सबसे पहले आर्मी के बारे में बात करूंगा। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एंट्री के लिए सॉरी टू इंटरप्ट, दो लेवल है, एक ऑफिसर लेवल और एक आपका हो गया कांस्टेबल लेवल। ऑफिसर लेवल पर Yeah, sorry to interrupt you, Devendra Bhaiya. Just hold on. Raghavendra Bhaiya is speaking something. So Raghavendra Bhaiya, carry on. Yeah. So Devin, what I will in details, we will have some separate sessions. But if you can quickly cover up on the defense opportunities, and then obviously the defense is a large field, so we will looking forward for a separate session with you. Yes, Bhaiya, I will cover in short. Okay, thank you. I'm aware. तो इसमें एक CDS है जो आफ्टर 12th आप उसके लिए अपीयर हो सकते हैं। सॉरी, NDA, उसमें आफ्टर 12th आप अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद एक CDS है जिसमें आप ग्रेजुएशन के बाद अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद आता है आपका CAPF में, तो उसके लिए 3 लेवल पर आप अपीयर हो सकते हैं। एक तो आप ग्रेजुएशन के बाद ऑफिसर लेवल पे UPSC के थ्रू अपीयर हो सकते हैं, दूसरा SSC के थ्रू एसओज लेवल पर, और तीसरा SSC के थ्रू ही कांस्टेबल लेवल पर। इसके अलावा इसमें और भी चीजें हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग फील्ड में, मेडिकल में, जुडिशियल फील्ड में भी जाना चाहता है तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ छोटी सी टिप्स है, वो ये है कि आप जब भी तैयारी शुरू करें तो उसके बाद सेल्फ स्टडीज के साथ साथ आप 1 घंटे कम से कम फिजिकल जरूर करें। उसमें आप रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, पुशअप्स, ये सब चीज का विशेष ध्यान रखें, तो वो आपके लिए आगे कंपटीशन में बेहतर होगा। इसी के साथ मैं सभी को एक बार धन्यवाद देता हूं, और अगर किसी को भी गाइडेंस की जरूरत हो तो हम लोग आगे भी अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा कोई भी मुझे किसी भी वक्त 24/7 कॉल कर सकता है, और मैं उसका जवाब देने में बहुत प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। Thank you, Devin, and especially appreciate the way you have offered your service 24/7. The place where you are, I know it is quite busy and keeping you professionally occupied, but still if you are offering 24/7, that makes a lot for Navodayas, especially Shivpuri, and we look forward for set up some sessions. I think that will be quite helpful because you are near to school, and once this corona and all this get normal, hopefully we will have some detailed sessions with students. Thank you again, David. My pleasure, Bhaiya. Thank you. Next in line, Gajendra from next 95 to 2002 batch, and he is also in the defense force but working as a teacher, and over to him to share more. But I will request if we can keep short because we are running out of time, and I know JNV team is also waiting for their next act of activity. Over to Gajendra.
नमस्ते भैया, आवाज सुन पा रहे हैं भैया मुझे? हाँ सुन पा रहे हैं, लेकिन हाँ। तुम्हारा दिख नहीं रहा वीडियो। अरे भैया दिख रहा है, क्या मालूम। दिख रहा है भैया? नहीं या नहीं दिख रहा है। सो देवेंद्र गुर्जर भाई साहब, आप एक बार अपना कैमरा ऑफ करके दोबारा ऑन कर लीजिए, शायद दैट माइट कॉजिंग इशू। और गजेंद्र भाई साहब, आप अपना यदि ऑन कर पाए, क्योंकि वी आर स्टिल सीइंग देवेंद्र भाई साहब। Yeah, so that might be some technical glitch then. कोई दिक्कत नहीं, आवाज तो आ रही है ना? Yeah, you are clearly audible. बड़ा सारा आवाज है। तो विजय देवगन भाई साहब के सॉन्ग जय नवोदय के साथ भाई साहब राघवेंद्र भाई साहब ने इस मीटिंग की शुरुआत की। तो सभी को जय नवोदय। परमात्मा जोशी सर और सभी टीचर, प्रिंसिपल, JNV शिवपुरी, मुझे सुन पा रहे हैं ना? आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आ रही है, कंटिन्यू आ रही है। हाँ, सभी को बहुत बहुत सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। आपका ऋण इस जीवन में तो हम नहीं उतार सकते हैं। इस नवोदय ने जो कुछ दिया है, मैं शॉर्ट में ही खत्म करूंगा कि मैं भी एक छोटी जगह से हूँ। करेरा से उतनी चीजें नहीं थी कि एक्सप्लोर कर पाए, लेकिन नवोदय ही था कि आज बिना किसी कोचिंग के, मैं बहुत सिंपल सादा बात कह रहा हूँ कि नवोदय वो चीज देता है कि आपको कोई ट्रेनिंग आपके अंदर, आप सिलेक्ट होके आए हो। अनुपम पालीवाल भाई साहब ने कहा, वो बहुत बड़ी बात है कि आप गर्व महसूस करें। ये मेरा 5वां 6वां जॉब है अभी, लेकिन मैं मेरे आदरणीय जो रहे हैं वो अभी आपसे पहले देवेंद्र गुर्जर भाई साहब मेरे आइडियल रहे, और कोई ना कोई आप आइडियल बनाए और आगे बढ़े। मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में वाराणसी रीजन में एज ए टीचर हूँ यहाँ पर सोनभद्र में, और मेरे साथ सबसे अच्छी बात है कि 3 टीचर और नवोदय के हैं, JNV मिर्जापुर, JNV कौशाम्बी। तो बड़ी अच्छा लगता है कि हम जो ये फील्ड में आते हैं, फील्ड कोई भी हो, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई एक फील्ड चुनो, जो फील्ड चुनना है चुनो, बट डिटरमिनेट करो कि आपको ये करना है। अगर आप एक बार अपने आप को मजबूत कर लेते हो, आपकी मेन फोकस आपकी स्टडी पर है, आपके गट्स पर है, आपके डेवलपमेंट पर है, तो जॉब कोई भी हो, चाहे वो PCS हो या कोई भी हो, आपका छोटे से बड़ा जॉब कोई भी आप पा सकते हो। उसके लिए आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पूरी मेहनत करें, क्योंकि हम अपने से झूठ ना बोलें। हम किसी और को झूठ बोल सकते कितनी तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हम खुद कर रहे हैं तो खुद से झूठ ना बोलें। तो बस मन से मेहनत करें, आगे बढ़ेंगे। टीचिंग फील्ड में मेरा पीजी का स्पेशलाइजेशन बायोकेमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो जो भी बच्चे अभी बायोलॉजी फील्ड में हैं, तो किसी प्रकार की दिक्कत हो, सब्जेक्चुअल कोविड में बहुत जरूरत पड़ती होगी, कभी भी मुझे 24/7 कॉल करें, मैं हाजिर हूँ। और पूरे नवोदय परिवार को मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और जीवन पर्यंत आपका ऋणी रहूंगा कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आपके सामने हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Gajendra, for inspiring, and in a short way you have tried to convey your message what to Navodaya family from deep of your heart. We appreciate your feelings and looking forward to more connects going forward. And moving forward, I think we have also planned. I think people may be getting bored with lot of guidance and lot of suggestions, but we have planned to have some sort of JNV student performance, but as we are running late, I don't think we have time for that. So, but moving forward, we have next participants, Ronak Rai from 98 to 2005 batch, I think, and he is recently done good contributions for Corona through his artistic angle, and over to him to share more in brief. Ronak, can you hear it? Yes, sir. Hello. Yeah, Ronak, I can hear you. नमस्कार सभी को। मैं रौनक राय और मैं भी केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूँ। सिंह सर की तरह और तिवारी सर की तरह ड्राइंग टीचर हूँ मैं। मैंने एक किताब लिखी है, उसकी एक कविता से मैं शुरू करूंगा। कविता का टाइटल है ए कोरोना। घर बैठे बैठे इतना जरूर सोचना, तुम कौन हो
क्यों हो बदली छटेगी बीमारी कोरोना, जी लेना जिंदगी जिंदा दिल रहो। बुरा वक्त निकलेगा मत करना रोना धोना, छोड़ दे शोक मनाना, करना हाय हाय हो। क्यों जरूरी है सब कुछ जीतना, त्याग कर तेरी जय हो। शर्म कर बहुत हुआ फालतू भौंकना, शांति पकड़ थोड़ा सा तो भयभीत रहो। कोरोना के कहर में जरूरी है जान जहान को बचाना, सात्विक भोज योग और आयुर्वेद से स्वस्थ बने रहो। सत्कर्म सद्भावना से जरूर करना, जिनसे अमर बने रहो। शुभकामनाएं दिल से स्वीकार करना, घर में रहो सुरक्षित रहो। एक कविता मैंने नवोदय विद्यालय की यादों के ऊपर लिखी है, जिसका टाइटल है राजमा चावल। ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, भारी भरकम ज्ञानी दम नहीं भरूंगा। नवोदय ने क्या क्या सिखाया, नवोदय ने क्या से क्या बनाया, पूरी कहानी नहीं कहूंगा, मैं तो सिर्फ भावनाओं में बहूंगा। सच बताऊं तो राजमा चावल की याद आती है, सुबह सुबह पोहे जलेबी की खुशबू तड़पाती है। जैसा नवोदय में खाया वैसा कहीं और नहीं पाया है। एक दो दिन नहीं नवोदय ने पूरे 7 साल मन से खिलाया है। सुबह नाश्ता से लंच फलाहार डिनर तक सब्जी दाल चावल रोटी में पूर्ण आहार पाया है। जैसा समय पर थाली सजाकर सलाद पापड़ अचार सहित खिलाया, कोई और नहीं खिला पाया है। लोग कहते हैं देसी मिट्टी की खुशबू आती है, माँ के खाने की याद बहुत सताती है, पर मुझे तो पोहा जलेबी तलब मचाती है। राजमा चावल खाने को जीभ लपलपाती है। बाकी राजमा में राजमा अलग पानी अलग उतराता है। सुबह पोहा नहीं मिलता, चाय बिस्कुट से मन उकताता है। यह 100% सच है, सॉरी, यह 100% सच है। हम गरीब थे, नवोदय ने उबारा है। बुरे वक्त में पूरा साथ दिया, इसलिए नवोदय सबसे प्यारा है। आज भी मन में माँ का दर्जा नवोदय को ही प्राप्त है। बचपन से पाला पोसा यादों का समुंदर मन में व्याप्त है। खाने से दिल में उतरने वाली महबूबा है नवोदय, फकीर को अमीर बनाने वाली सशक्त दुआ है नवोदय। अनगिनत सितारे गुमनाम अंधेरों में खो जाते, जो आज कलेक्टर हैं कुपोषण भूख से मर जाते। जिनकी पढ़ने की इच्छा थी उनको सामाजिक नापाक सच खा जाते। पैसों की तंगी डर का माहौल बाल मजदूरी बाल विवाह से नर्क पा जाते। पर यह हमारी किस्मत थी कि हम नवोदय पर यह हमारी किस्मत थी कि नवोदय ने पेट भर खिलाया है। मेहनती नव उदित संस्कारों ने बिल्कुल सही रास्ता दिखाया है। धन्यवाद सभी को, आपने मुझे मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत सर मेरा खूब खत्म हो रौनक गया। भाई। नहीं, बहुत खूब रौनक भाई, आपने बिल्कुल, आज अगर लाइव हो रहा होता तो एमपी हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज चुका होता, लेकिन आज हम सबको जिस हिसाब से म्यूट पे एड्रेस चल रहा है, तो सबकी तरफ से आपके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी अच्छी, जिस तरह से आपने नवोदय की लाइफ को अपने इस कविता के अंदर पिरो के बताया है, उसमें बिल्कुल ही मजा आ गया। वाह, थैंक यू। So moving next to Pradeep, I think you can, no need Yep. to. Yeah, definitely. Myself, Pradeep Balaiya from 99-2006 batch. I will not take much of your times, as I am always available. Whosoever want to contact me can reach out to me at my contact number. It's available on the pamphlet which we have circulated throughout before this event. So I am IT professional, and so I will just close all of my speech within 3 sentences. So who we are Navodayans. Why we are here to help
anyone whosoever cross our path. So service is not just getting government sector job or a job for yourself or getting food for yourself. Service is, or the motto of Navodaya, to serve anyone. If you are helping an older lady to cross the road, it is a service. So wheresoever you are, just serve anyone, help anyone in any mean. Giving a bread to a hungry is a service. Giving a water to thirsty is a service. So do a service wherever you are, how you are. Being a IT professional, we are enabler. So we are doing this meeting virtually due to IT professional. Either Deepak Bhaiya, Raghav Bhaiya, me, Amanyan. So there are n number of IT professional from our Navodaya. From my batch only, there are around 10-50 IT professional. All are engineer. We are 21 mathematics student from 99-2006 batch. All are doing IT professional job, and we are very happy to serve anyone. And so that's all. Thanks to Deven Gurjar Bhaiya, thanks to Gajan Chadal Bhaiya, they are doing fantastic job in service sector. There is a Manav Ek Pehal, Manavta Ek Pehal NGO governed by these all Navodaya students. They are doing fantastic job. My batchmate Vishnu is also running a NGO. They are doing fantastic job. We are getting a lot of funds. Within a year, we have contributed around 6 lakh rupees for service only. So that's it. I am closing my speech, not speak much, as we are reach already our time limit. Yeah. So you all can get my contact number from that pamphlet. I will also share on chat. So that's it from my side. Thanks a lot. Thank you, Pradeep, and I appreciate the way you are there wherever, especially in IT or wherever coordination is required. You are always there, since we have done a lot of initiatives together, and looking forward to, especially from the IT point of view, whatever Navodaya community need, we will be there to support them. And I think you did not mention, but as we mentioned earlier, that we have initiated one sessions, IT sessions, where anybody, students or alumni who want to, for sort of knowledge gain or some sort of technologies, which we each others are working on different technologies. So we will somewhere sessions share the more details on that part. That is the way we are benefiting and looking forward for more remote learnings to our JNV community. Thank you, Pradeep. And next, I think from Pradeep batch only, Prerna Dubey. Prerna is forest ranger currently from same Pradeep batch, and she would like to address brief on the agriculture. That is the something which professions is missing till now. So Prerna, are you there? Yes, भैया. नमस्कार सभी को, प्रिंसिपल सर एंड जोशी सर एंड सभी टीचर्स एंड सीनियर्स एंड जूनियर्स, सभी को मेरा प्रणाम. मैं माई सेल्फ प्रेरणा दुबे. मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगी. मैं प्रदीप के बैच से हूँ, 99 बैच से हूँ नवोदय के. अभी प्रेजेंट में मैं फॉरेस्ट रेंजर हूँ और पोस्टिंग मेरी ग्वालियर डिवीजन में मोहना में है. मैं सबसे पहले राघवन भैया और प्रदीप को थैंक यू कहना चाहूंगी कि सभी और उनकी टीम को कि सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए. और जैसा कि टाइम हो रहा है तो मैं एक शॉर्ट में, जो ये प्रोफेशन है, बहुत कम लोग एक्चुअली फॉरेस्ट जो प्रोफेशन है उसके बारे में जानते हैं. और प्लस मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से की है, तो उसके बारे में ही मैं थोड़ा बताना चाहूंगी. नवोदय से निकलने के बाद मैंने पीएमटी की प्रिपरेशन की थी, लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था. इसलिए एक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हो सकता है कुछ लोग जानते हो, उसका एग्जाम दिया था. उसके थ्रू मैंने एडमिशन ग्रेजुएशन किया था. और उसके एक ICR JRF होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके थ्रू एडमिशन MSc में लिया था, प्लस स्कॉलरशिप मुझे मिली थी. उसके थ्रू मैंने BHU में एडमिशन लिया था, वहां से MSc किया था जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से. और प्लस में मेरा एम जो था वो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट था. प्रिपरेशन में उसकी कर रही थी, लेकिन साथ में घर वालों के कहने पे मैंने PSC का एग्जाम दे दिया था. उस टाइम पे जो फॉरेस्ट सर्विसेज जो होती थी वो केवल सब्जेक्ट बेस्ड होती थी और जनरल एप्टीट्यूड. तो चूंकि नवोदय में रहने से एक जनरल एप्टीट्यूड में बहुत फायदा मिलता है, तो मेरी तैयारी तो नहीं थी, लेकिन JRF में प्रिपरेशन से मेरे सब्जेक्ट अच्छे थे और जनरल एप्टीट्यूड अच्छा था, तो इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया था.
और 2017 में मेरा सिलेक्शन इसमें फॉरेस्ट में हो गया था। पीएससी थ्रू एक एग्जाम होता है, जैसे अभी जो प्रेजेंट में जो एग्जाम होता है कंबाइन प्री होता है पीएससी का, उसमें जो रेवेन्यू और रेवेन्यू सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों के लिए होता है, लेकिन जो मेंस है वो फॉरेस्ट का अलग होता है और उसका कट ऑफ भी अलग जाता है। जो सिलेक्शन जो होता है मेंस के लिए फॉरेस्ट के लिए, उसमें प्री जो एग्जाम होता है उसमें हिस्ट्री, जो जनरल हिस्ट्री होती है उसके फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों के मार्क्स जो ऐड होते हैं, उसके थ्रू फिर सिलेक्शन होता है बस। और जनरल साइंस सब्जेक्ट आता है, साइंस मेनली सब्जेक्ट रहता है, साइंस वाले स्टूडेंट ही फॉरेस्ट सर्विसेज को दे सकते हैं। और बाकी अगर किसी को क्वेरीज है एग्रीकल्चर रिलेटेड कैरियर्स में, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं उनके पास काफी सारे ऑप्शन रहते हैं कैरियर रिलेटेड, बैंकिंग सर्विसेज, इवन IIM वगैरह में जा सकते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में, मतलब काफी सारी अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि ये बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है। तो अभी ये शॉर्ट में मैंने बता दिया है, बाकी जिसको जो अगर कोई पूछना चाहता है तो मेरा नंबर होगा तो मुझे कॉल कर सकते हैं। Thank you, Bhaiya. Sure. Thank you, Prerna. It's really good to know that even you have so much have done in the agriculture and you have lot to offer for present students or alumni who are looking to make some career in that. And being an agriculture scientist is really something which is, as our country is so much depends on the agriculture, and looking forward more students will come and attract to that fields and will take guidance from you and move forward in those lines as well. So thank you again, and hopefully we will have some sessions for more detailed information. Thank you. And next stage in line is Vishnu from same batch, and Vishnu also shared. Vishnu has founder of one of the NGOs doing some good work in near around Gwalior, and he also shared PPT but don't have much time, so I will request if he can also quickly share something about his efforts. Over to Vishnu. Hello भैया, आवाज आ रही है? हाँ Vishnu, we can hear. Yes, thank you. I would like to thank you Raghu भैया to give me such a opportunity to present myself, and Joshi sir, respected Joshi sir, principal sir, भरत भैया और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि लाइफ में काफी उतार चढ़ाव के बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। पहले मेरा नाम विष्णु ब्रद्दी है, मैं 1999 और 2006 बैच से पास आउट हूँ। जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव के बाद मैं कई नौकरियां सरकारी छोड़ने के बाद टीचिंग मेरा प्रोफेशन रहा उसके बाद में, लेकिन कहीं मन को संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि ऐसा क्या किया जाए एक प्रॉपर वे में कि जिससे हम एक लॉन्ग सस्टेनेबल सोसाइटी को कुछ दे सकें। तो उसी के बिहाफ पर कुछ नवोदयंस, जिसमें प्रदीप बिलैया, जितेंद्र राठौर और मैं विष्णु ब्रद्दी, तीनों ने एक इनिशिएटिव लिया 2018 में कि कुछ इस प्रकार कार्य किया जाए सोसाइटी के लिए। तो हमने नवोदय युवा मंडल के नाम से एनजीओ का फॉर्मेशन किया। शुरू में जो हमारा विजन और अभी भी जो हमारा विजन है वो टू अंडरटेक प्रोजेक्ट फॉर रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन, सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर है, और हम इसको 2021 से जो है पूरी मेहनत के साथ इसको काम में हम लग जाएंगे। और उसके बाद जो मैं आगे आपको बताना चाहता हूं कि ये फील्ड जो है एनजीओ का एक नया फील्ड है, काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। इसमें फुल टाइम अगर हम काम करते हैं तो काफी स्ट्रगल है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में यदि हम अच्छा काम करते हैं तो एक अच्छी पोजीशन पर हम पहुंच सकते हैं। एनजीओ एक नया सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसके बारे में जो है बहुत कम लोग ही बताते हैं कि इसमें हम एज ए करियर अपॉर्चुनिटी हमारी क्या हो सकती है। तो इसमें करियर अपॉर्चुनिटी में जूनियर्स को मेरी ये सलाह है कि आप इसमें 12th के बाद जो है ग्रेजुएशन कर सकते हैं सोशल वर्क में। सोशल वर्क
ग्रेजुएशन करने के बाद आप MSW मास्टर इन सोशल वर्क भी कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फिलॉसफी कर सकते हैं। इसमें करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हैं, कंपटीशन थोड़ा कम है। इंटरनेशनल जो NGOs हैं, कुछ NGOs के मैं आपको नाम बता देता हूं जिनमें आप एक अच्छी करियर ग्रोथ आपको मिल सकती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल NGO है, यूनिसेफ है, रेड क्रॉस है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम NGO है, क्राई है, केयर है। तो ये वर्ल्ड बेस्ड NGOs हैं जिनमें आप एक अपनी करियर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं। और मैं आगे कुछ नवोदय मंडल जो हमारी NGO है उसके बारे में बता देता हूँ। कोविड-19 के ड्यूरेशन में हमने बहुत बेहतरीन काम किया। करीब जो है हमने 1 लाख लोगों तक घर घर पहुंचकर राशन उपलब्ध कराया, जिसमें नवोदय युवा मंडल में प्रदीप लैया के माध्यम से फंडिंग की गई, जिसमें करीब प्रदीप के ऑन बिहाफ अप्रॉक्स 1 लाख के अप्रॉक्स जो है फंडिंग की गई। बाद बाकी हमने की करीब हमने 4 लाख के आसपास का जो राशन है, कच्चा राशन जो है लोगों को पहुंचाया। अपार्ट फ्रॉम दिस मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ग्वालियर की तरफ से भी हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला। ग्वालियर कलेक्टर की तरफ से हमें बहुत बड़ा सहयोग मिला, जिसके माध्यम से हमने घर घर तक कोविड-19 में लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई। तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी हमारा एक NGO का पार्ट है, जिसे हम बखूबी कर रहे हैं और आने वाले समय में करेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने कुछ कमिटमेंट बता देता हूँ नवोदय विद्यालय के लिए। जैसे राघव भैया ने बताया कि ई-मैगजीन, तो ई-मैगजीन के सपोर्ट के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारी जो भी मदद है हम वो करने को तैयार हैं। मेडिकल कैंप, दूसरा हमारा जो उद्देश्य रहेगा मेडिकल कैंप। हम समय समय पर जवाहर नवोदय विद्यालय शिवपुरी में NGO के बिहाफ पर मेडिकल कैंप लगाएंगे। ये हमने अपने शेड्यूल में 2021 में लिस्ट कर लिया है। उसके बाद हम समय समय पर करियर काउंसलिंग जैसी सुविधाएं फेस टू फेस, राघव भैया एक काम को बखूबी कर ही रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट फेस टू फेस नहीं हो पाते, लेकिन ऑनलाइन माध्यम से वो कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ ग्वालियर में रह के एक्चुअली ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम समय समय पर करियर काउंसिल के सेशन जो है नवोदय विद्यालय में जाकर करेंगे। तीसरा पॉइंट जो है नवोदय युवा मंडल की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो बच्चे वीक हैं, जो हायर स्टडी करना चाहते हैं, किसी कारणवश से उनको पैसा नहीं है, तो हम पब्लिक चैरिटी और डोनेशन के माध्यम से ऐसे बच्चों को चुनकर हम उनकी हर संभव मदद करने को तैयार हैं। Thank you very much, Raghu Bhaiya. Give me such a huge opportunity to present myself. Thank you. थैंक यू विष्णु। एंड जो मैंने बीच में बोला था कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, आप उसको पूरी तरह से चरितार्थ कर रहे हो अपने कामों के द्वारा। और जिस तरह के तुमने जो बोला है एक दो चीजों में कोऑपरेशन का, ऑब्वियसली वी विल लुक फॉरवर्ड in that magazine and medical camp. We have tried to plan so many times, but because of some physical availability or some dedicated resources we could not, but hopefully we will align with you and try to work on those initiatives. So thank you a lot for offering those help support as well for our initiative. And thank you. Moving next, I think I would like to invite Anjana Jain. I think as per the timings, it was 12:50, but because of we are seeing that things are getting delayed, so I would like to invite and would like to recite some poems written by him. Anjana is from the second batch, 88 to 95, and I have unmuted. Anjana, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, good. So over to you. Okay. Very good afternoon to all my teachers and principal sir and all my batchmates and all my younger brothers and sisters.
I'm Anjana from batch 1988, second batch, and I'm very happy to be a part of this society and part of this beautiful family. So today I'm going to recite one poem as I have hobby of writing. So this is in short I would say कि जो मेरी जो पोइट्री है वाली ये जैसे कि आप जानते हैं कि जो कोविड टाइम चल रहा है उसको लेकर है कि इतने हार्ड टाइम में तो मेरी तो छोटे छोटे दो शॉर्ट पोइट्री सुनाने जा रही हूँ मुझे टाइम का मुझे पता है टाइम लिमिट काफी कम है तो जो फर्स्ट पोइट्री है वो कोरोना पर बेस्ड है इसमें हम कोरोना नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे हम क्षमा की भाव रख रहे हैं कि कैसे क्षमा मांगे शायद जो ह्यूमन हमने जितनी गलतियां की हो शायद उसका नतीजा हो तो उसे क्षमा मांगने की अपील है तो पेश करने जा रही हूँ हे काल तुम क्यों रुद्र हो हे काल तुम क्यों रुद्र हो क्यों तुम इतने क्षुब्ध हो देखो कैसी है ये हाहाकार चारों तरफ अंधकार सूक्ष्म हो तुम हम विशाल पर तेरे सामने मेरी क्या विशाल क्या पाप मुझसे हो गए जो इतने खफा तुम हो गए जरूर किया मैंने कुछ बुरा जिसकी सजा हम सह रहे अब माफ कर दो हो जाओ शांत हाथ जोड़ हम ये कह रहे कि मैंने प्रकृति से छेड़छाड़ शायद इसकी सजा हम पा रहे अब सीख ले ले तू भी मानव वरना रहेगा खंड तांडव देख धरती को बचाने शिव भी जहर पी रहे एंड एक और छोटी सी पोएट्री है जो है दिस इज बेस्ड ऑन कि हाउ वी कैन कोप विद दिस सिचुएशन जैसा कि चल रहा है हम लोग सभी लोग डिलेमा में रहते हैं सब लोग परेशान एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा उसके लिए छोटी सी दूसरी पोएम विचलित ना हो संयम ना खो जाने वाली ये रात है तू धैर्य तो रख आने वाला प्रभात है बड़ा ही मुश्किल वक्त लगती हैं परिस्थितियां सख्त पर हिम्मत रख और आगे बढ़ कोशिश तो कर चोटी पर चढ़ तेरा साहस तेरे साथ है आने वाला प्रभात है कितने छूटे तेरे पीछे तूने तो मुड़कर भी ना देखे रख हौसला हिम्मत देता जा तू ना कर ऐसा साथ निभा तू रख हौसला हिम्मत देता जा तू बढ़ाना सबको हाथ है आने वाला प्रभात है विचलित ना हो संयम ना खो जाने वाली ये रात है तू धैर्य तो रख आने वाला प्रभात है धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए और सभी से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई थैंक यू राघवेंद्र Hey, thank you, Anjana. So nice of wordings you have conveyed through your poems, and this is really good to giving so much of especially for this Corona time, coming out with so much of words which will give strength to people to even still fighting and come out of all the odd times through. Very good, I think, and आप जो काव्य पाठ लोगों का तो जो रिस्पॉन्स है वो तालियों से ही मिलता है लेकिन अभी आई अप्रिशिएट कि चैट में भी लोग जो भी जिस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं वो ही हम रिमोट और डिजिटल मोड में कर सकते हैं सो कीप डूइंग एंड कीप motivating the people whoever is addressing and again thank you Anjana for taking out and I think it is got delayed because I know you have some time concern but hope it's fine because we are also trying to wind up soon. Okay, thank you. And next in line, Raghuveer, but Raghuveer is not available. So Raghuveer is from 2000 batch 2000 to 2007, and I really wanted him to be here, but he is a sport officer in a college, and there were some inaugurations, ministers, MP ministers, and all MPs are planned to there in their function, so I think he could not manage, but sometimes later we will obviously try to provide this opportunities in the sports especially because that is where we do not focus and lot of talents go in vain in our areas especially. So we'll schedule sometime later with some specific session on sports to JNV students.
Next, Satyendra is also, I think he is from quite active. One of alumni from 2007. When I used to visit from that time, I remember he always ready to take responsibilities for any sort of coordinations. But today also he was eager, but there was some IG inspections, and last moment he could not make it to this meeting. But from the same Satyendra batch, I think Ghanshyam is there. He was interested to share some brief address. So, Ghanshyam, I am going to unmute you. Just try to address brief what you wanted to. Yeah. Thank you so much, Raghvendra Bhaiya. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Continue. Yeah. Okay. Good afternoon, everyone. सभी गुरुजनों को सादर चरण स्पर्श, सभी मेरे भाई बहनों को सादर प्रेम. Let me introduce myself. I am Ghanshyam Sarma from 2004 to 2011 batch, and I am a IT professional as a software engineer in TCS. And so I would like to tell things related to the Navodaya, like when I was in the Navodaya, how Navodaya pushed me to come in the IT sector. So in very short, I'll tell you all these things. So like when I went Navodaya in the 6th class, तो वहाँ पे कंप्यूटर लैब था अपना. मैं कंप्यूटर लैब में जाता था, सीनियर्स वहाँ पे होते थे, तो उन्होंने मुझे मतलब मैं देखता था, मुझे कुछ आता नहीं था, मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट लगता था. तो मैं गर्मियों की छुट्टियों में घर आया, मैंने अपने पापा को बोला कि पापा नवोदय में कंप्यूटर लैब है लेकिन मुझे कंप्यूटर नहीं आता. तो पापा ने इमीडिएटली मुझे 2 मंथ की वो उसमें एक कोर्स करवाया बेसिक कंप्यूटर का आईसेक्ट से कोलारस में. मैंने वहां से किया, करने के बाद वापस नवोदय गया. नवोदय आने के बाद मैंने फर्स्ट डे ही जाके कंप्यूटर टीचर को बोला कि मुझे सर बहुत कुछ कंप्यूटर में आता है, मुझे कंप्यूटर पे काम करना आता है. तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगा, उन्होंने मुझे वहाँ कुछ लिस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, एक्सेल का काम देना स्टार्ट कर दिया. आफ्टर दैट धीरे धीरे पता चला कि घनश्याम को कंप्यूटर आता है. तो सब हाउस मास्टर्स अप्रोच करने लगे कि ये लिस्ट बनाओ, लो ये हमारे हाउस के लिए ना स्टूडेंट की लिस्ट बना दो, चिपकाना है, अभी कंपटीशन है, ये है. फिर उपाध्याय मैडम गर्ल्स हॉस्टल की लिस्ट बनाई, ये सब मैंने किया. तो कंप्यूटर में करते करते फिर इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैं वहाँ लैब में काम करने लगा. तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक था क्या कंप्यूटर फील्ड में अच्छा है, करना है. और फिर उसके बाद जब रियल स्टार्ट हुआ राघवेंद्र भैया, जब राघवेंद्र भैया आए एलुमनी मीट पे, और जो साथ में जितने भी आईटी प्रोफेशनल थे वो आए, तो राघवेंद्र भैया ने एक बात बोली. एट दैट टाइम ही वाज लाइक के वो इटली गए थे शायद राघवेंद्र भैया, आप फ्रॉम योर प्रोजेक्ट वर्क, सो कि मैं इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा है बाहर जाने की. दैट वाज द मेन थिंग. सो लगा कि हाँ आईटी प्रोफेशनल आईटी सेक्टर में इतना है कि बहुत ज्यादा फॉरेन जाने के चांसेस है. एज वी कैन सी एग्जांपल, राघवेंद्र भैया अभी फॉरेन में बैठे हुए हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ आईटी प्रोफेशनल, दे आर देयर इन फॉरेन एंड दे आर वर्किंग फ्रॉम देयर. So currently I am also here working in TCS, and I have also worked on some major projects like MPEV, Madhya Pradesh Electricity Board. As a developer I worked there, and also I worked in some project related to the insider trading, that is related to the compliance, mainly CA and CS, the professional, the people know that very well. So I worked on that also. And now I'm working with the privacy within the organization. So there are some field on which I'm working in my organization. And also I just want to say something what Poliwal भैया and राघवेंद्र भैया ने अभी बोला कि कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट में पर्टिकुलर फोकस करते हैं, फिर क्या होता है वैकेंसीज नहीं निकलती हैं, लिमिटेड वैकेंसीज रहती है. तो या फिर अभी से लास्ट टाइम मुझे बहुत सुनने में आया कि 2-3 साल से वैकेंसी नहीं निकली है, तो वो लोग प्रिपेयर करते हैं. ऐसा नहीं है, प्रिपरेशन सब अच्छी करते हैं, लेकिन कुछ रहता है, लिमिटेड वैकेंसीज रहती है. तो यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर सम अदर फील्ड अदर देन गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर. देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस, लाइक इन द आईटी सेक्टर वी कैन से. हमने स्कूल में एक शायद इंग्लिश में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी, जिसमें स्टोरी में था कि इन 2050 बताया गया था, 2050 में हाउ स्टूडेंट विल स्टडी, दे विल स्टडी थ्रू द रोबोट एट द होम. तो वही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब देखो इतना 2050 की बात नहीं है, कोरोना की वजह से कितनी इमीडिएटली वो इफेक्ट में 2020 में ही आ गया है कि अभी द लाइव एग्जांपल इज अवर दिस, लाइक जो हम अभी कर रहे हैं. ठीक है, तो एलुमनी मीट हम वर्चुअल कर रहे हैं. तो ये जो 2050 का उन्होंने उस टाइम पे मैंने स्कूल में अपन ने पढ़ा था, तो वो 2020 में आ गया है. तो आईटी सेक्टर में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है. मैं कैरियर काउंसलिंग रिलेटेड ज्यादा चीज तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि उससे रिलेटेड भैया राघवेंद्र भैया सेल्फ जहाँ पे कोऑर्डिनेटर है, जो कि 87 के बैच में है, जब आई वाज इवन नॉट बोर्न एट दैट टाइम, तो उस बैच से है. और एक बहुत अच्छा कम्युनिटी हमारा राघवेंद्र भैया ने बना के रखा है स्टार्टिंग. एंड न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस जो भी है वो उस पर अभी बता रहे हैं कुछ रहे. तो ऑल द आईटी रिलेटेड मैं यही बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटी में स्टूडेंट कैन ग्रो. एंड
कैरियर से रिलेटेड चीज ज्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ चीजें ये मैंने अभी नोट डाउन करके रखी है। एक तो मैं क्या करना चाहता हूँ, कुछ हमारे टाइम के जो टीचर्स थे उनके, राघवेंद्र भैया नाम मैं एक बार लेना चाहूंगा। सो प्रिंसिपल एस एन पुरवार सर थे, राजपूत सर, पीजीटी मैथ से राजपूत सर, पहाड़ सिंह राजपूत। गुरुजी एच के सिंह हिंदी टीचर थे, गुरुजी को सब शायद जानते होंगे उस टाइम के। तो गुरुजी का उनका था एक के, गुरुजी के हाथ पर और गुरुजी की लात पर कभी संदेह नहीं करते। जब वो वॉलीबॉल खेलते थे तो हाथ से वॉलीबॉल में मारते थे, उससे बना था उनका। और जब वो मॉर्निंग पीटी में जगाने के लिए आते थे तो दे वाज लाइक कि वो कोई अगर जग नहीं रहा तो सीधी उसमें लात मारते थे, सट। तो वो एक उनका बन गया था कि गुरुजी के हाथ का और गुरुजी के लात का कभी संदेह नहीं करते। इसके बाद यादव सर थे, यादव सर ज्योग्राफी टीचर, पीजीटी ज्योग्राफी। अवर बिलव्ड लेट आरबी कुशवा सर, इंग्लिश टीचर, वी रियली मिस यू सर। एएस अरविंद सिंह धौरे सर, एस धौरे सर हिंदी टीचर। उपाध्याय मैम, उपाध्याय सर, गीता उपाध्याय मैम, उपाध्याय सर। रंजीता मैम, ऑफ कोर्स रंजीता मैम इज आल्सो करंटली इन नवोदय। रंजीता मैम, इफ यू आर हियर, if you are hearing me, so I just want to say नमस्ते टू यू। एंड रंजीता मैम जब आए थे स्टार्टिंग में नवोदय में, तो मैं उनका बताना चाहूंगा कि एक नया, ऐसे है ना, कोई भी टीचर का नवोदय पे इम्पैक्ट रहता ही है। तो इस रंजीता मैम का भी एक ये इम्पैक्ट था। वो जैसे ही नवोदय में आए तो एक नया युग का स्टार्ट हुआ, लाइक योगा। योगा और व्यायाम उन्होंने स्टार्ट करवाया था। योगा को एक डिफरेंट लेवल पे रंजीता मैम ने लिया। तो हमने देखा उस टाइम पे इवन हम जो नहीं कर सकते थे, वो गर्ल्स योगा वो प्रेजेंट करते थे 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। तो वो सब चेंज आया। आफ्टर दैट लाइब्रेरियन सर, अवर बिलव्ड लाइब्रेरियन सर, ऑफ कोर्स लाइब्रेरियन सर रवि सर। तो रवि सर के आने से एक नवोदय में जो मैंने प्रैक्टिकल वहाँ पे देखा, बहुत चेंज आया था। पहले लाइब्रेरी में ऐसा था कि लाइक आपका जो लाइब्रेरी पीरियड होगा उसी में आप जाओगे और करोगे। लेकिन जब रवि सर वहां पे आए तो रवि सर का यही था कि उन्होंने ओपन टू ऑल लाइब्रेरी कर दिया। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन नवोदया, कि उस टाइम पे ओपन टू ऑल कर दिया। हम इवन स्पोर्ट्स टाइम में भी जा सकते थे, लाइब्रेरी में बैठ सकते थे, जिसको जब जाना है, जब फ्री पीरियड है, फ्री टाइम है, तो उस टाइम पे। तो दैट इज मेनली वन ऑफ द बेस्ट थिंग, और जो अभी आउटसाइड में है ही, लेकिन नवोदय में उस टाइम पे कर दिया था। आफ्टर दैट अजीत सर, साइंस टीचर। चौधरी बायो सर, चौधरी सर नमस्ते। चौधरी सर इज ऑल्सो देयर इन नवोदय करंटली। चौधरी सर बायो के वन ऑफ द बेस्ट टीचर फॉर द स्टूडेंट। एंड आफ्टर दैट सतापति केमिस्ट्री सर। एस एन अशरफ सर, उर्दू सर, जो उर्दू टीचर थे, एस एन अशरफ सर। तरुन्नम मैम, उर्दू टीचर। आफ्टर दैट नायडू सर, या आफ्टर उर्दू के बाद तेलुगु आया था हमारा माइग्रेशन, तो नायडू सर, प्रसाद सर, सैनी सर म्यूजिक टीचर। एंड लिस्ट बहुत लंबी है। बीएल वर्मा सर और पीटी टीचर। उसके बाद कुछ लोग ये हमारे जो कनेक्ट थे, समर फोटोग्राफर, समर भैया। एंड कक्का, दाऊ अवर हेड कुक, दाऊ वी रियली मिस यू। लक्ष्मी भैया वाज इलेक्ट्रिशियन। घासी, मुरारी, these all were like there, so we really miss you all. And yeah, sorry to interrupt you, Ghanshyam, if you can conclude, because it's already been midnight in I'm just USA concluding. and we are waiting. I'm just concluding, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। मैं कुछ अपने बैचेस के बारे में बता दूंगा कि some of the like people they are working in different field. I'm glad, like we have 3 software engineer from my batch. SI Satyendra Kushwaha, Tehsildar Hemant, railway police, in government engineer, fire engineer, government engineer Ashish, and also we have fire engineer Patwari, police constable forest. Also we have CS Singh Verma, CS, and CA our Ramu Srivastav. We are also member of in Indian Army, Gaurav. So in different field, people are there from my batch also. So if anyone need any guidance related to that, we can also help in that also. Yeah, that was from my side. Thank you so much, everyone. We really miss you all. Thank you, Raghavendra Bhaiya, for giving me this opportunity. Thank you, Ghanshyam. And in short, you try to cover very much, and even you try to name out all the teachers. That is really appreciable. Because Raghavendra Bhaiya, just give me 1 minute more. Actually, just मैंने थोड़ी देर पहले एक कविता लिखी है अपने नवोदय की. Just 1 minute. ठीक है, चलिए. हाँ, तो मेरा टाइटल है मेरी कविता का, कैसे भूल जाऊं मैं, भूल कर भी भूल ना पाऊं मैं. तो कुछ टाइम पहले मैंने जस्ट अभी लिखी है, तो मैं इसको रिसाइट करूंगा. आई होप यू विल लाइक इट. कैसे भूल जाऊं मैं, भूल कर भी भूल ना पाऊं मैं. कैसे भूल जाऊं मैं, भूल कर भी भूल ना पाऊं मैं. वो सुबह उठकर नींद में आंखों को मलकर पीटी में जाना.
वो सुबह उठकर नींद में आंखों को मलकर पीटी में जाना और फिर मुस्कुराकर मस्ती करते हुए दोस्तों के साथ लौटकर आना, और फिर मुस्कुराकर मस्ती करते हुए दोस्तों के साथ लौटकर आना। कैसे भूल जाऊं मैं, भूल कर भी भूल ना पाऊं मैं। नहाने के लिए दोस्त को बाथरूम में जल्दी निकल लेट हो रहे हैं बोलकर चिल्लाना। नहाने के लिए दोस्त को बाथरूम में जल्दी निकल लेट हो रहे हैं चिल्लाना, और फिर पोए के लिए मैस में लंबी लाइन में लग जाना। कैसे भूल जाऊं मैं, भूल कर भी भूल ना पाऊं मैं। वो हाँफते हुए दौड़ दौड़ कर टाइम पर मॉर्निंग प्रेयर में पहुंच जाना। वो हाँफते हुए दौड़ दौड़ कर टाइम पर मॉर्निंग प्रेयर में पहुंच जाना। हम नवयुग की नई आरती नई भारती पूरे दिल से गाना। कैसे भूल जाऊं मैं, भूल कर भी भूल ना पाऊं मैं। पढ़ने के जुनून में रात रात को जागना, क्लास में कंपटीशन के लिए टीचर के घर जाकर एक्स्ट्रा क्लास में जाना। कैसे भूल जाऊं मैं, भूल कर भी भूल ना पाऊं मैं। अपने हाउस को जिताने में पूरी शिद्दत से खेल में उतर जाना। अपने हाउस को जिताने में पूरी शिद्दत से खेल में उतर जाना, पूरी जान लगाकर वो ट्रॉफी को पाना। कैसे भूल जाऊं मैं, भूल कर भी भूल ना पाऊं मैं। लास्ट लाइन मैंने इसमें ऐड की है, वो हमारे लाइब्रेरी सर के लिए है। लाइब्रेरी सर जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, तो हम लोग लाइब्रेरी सर के घर जाते थे आईपीएल देखने। तो आईपीएल देखने वो लाइब्रेरी सर के घर जाना, आईपीएल देखने वो लाइब्रेरी सर के घर जाना, और फिर चली जाए अचानक से लाइट तो सेठिया सर को रात को जगाना। सेठिया सर थे हमारे, उनके घर में इन्वर्टर था, तो हम क्या करते थे, लाइट चली जाती थी, फिर उनके घर जाते थे इन्वर्टर में, वो आईपीएल का मैच देखते थे। वी एंजॉयड अ लॉट। सो this was my poem. Thank you so much, Raghavendra bhaiya. Thank you so much, everyone. Thank you, Ghanshyam, for being in IT. You have this skill as well. We really appreciate and love the poem with the Navodaya memories which you have conveyed. And I would like to also let everybody know that recently in some time when we came to know that there was some teaching requirement and teacher was not there, Ghanshyam came forward and offered some classes to the students. So we really appreciate the attitude wherever, whatever fields you are working on, even that matches you or not, but you always there for Navodayans and come forward. We look forward for such a positive attitude for serving our community and society as a whole. Thank you, Ghanshyam. Thank you everyone. Next, we are going to finish. Just we have a couple of only addresses. I know it is getting late, but this is what the Navodaya bondage. We are going to 2 hours over. So just have a patience for a few more minutes and we will be done. Next address is from Nishant Gurjar. He is from 2007 batch and he is also from Defense Forces. Recently, I think NDA cracked and he is sub-lieutenant in the Indian Navy. And hope Nishant is there. Let me check. Yeah, I think he is there. So he is also good recent success story for students to follow. Nishant is there. सुन पा रहे हैं? हाँ Nishant, I can hear you. जी आप मुझे सुन पा रहे हैं भाई? हाँ सुन पा रहे हैं। Okay, sir, भैया can I share my screen now? नहीं, अच्छा स्क्रीन शेयर करना चाहते हो? जी वीडियो भी ऑन है। जी नहीं, वीडियो ऑन नहीं है तुम्हारा। अगर कुछ दिखाना है क्या? कुछ ऑन कर दिया मैंने। हाँ अभी ऑन हो गया, ठीक है। मैं इसको क्लियर और शॉर्ट रखूंगा, मुझे पता है कि हाँ ठीक है लॉट ऑफ टाइम टेकन बाय अदर पार्टिसिपेंट्स। भैया कैन यू प्लीज एनेबल द स्क्रीन शेयरिंग फ्रॉम माय साइड? नहीं, आर यू नॉट एबल टू डू? No. Host disabled attendee screen sharing. Okay, I have enabled. Check now. Okay, thank you भैया। Okay, so good afternoon to one and all. सबको एड्रेस करते हुए कि चूंकि टाइम कम है, तो मैं अपना जो मैसेज और मोटो है और मेरा जो डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करना है, I would like to keep it short. So you can see this presentation. The joining in defense forces is done in two ways. That is, one is by officer selection process and second is soldier selection process.
So what I'm going to talk about is officer selection process. That is when you go after 12th, that is UPSC exam that is conducted, and the name is National Defense Academy. That is, I have cracked this exam. I am from 136th batch. I cracked this exam in 2016, and right now I'm in my final phase of my training, and will be commissioned in January as sub lieutenant. And there is another entry just after 12th, BTech 10 plus 20. So both the entries are based on the criteria of what you take your subject as in this 12th class, 11th and 12th. So if you are going to choose Navy and Air Force, you must be having mathematics and physics as your subjects. And if you are not having any of the subjects like physics or mathematics in 12th and 11th, then you can go for army. So this is my process of training going on. And after graduation, there are 4 ways to go into the defense forces as an officer. You will be a gazetted officer commissioning. So this is FCAT, Air Force Common Admission Test, Combined Defense Services Test. I think Raghavan bhai, everybody can see my screen, right? Yeah, I can see. I think everybody has it. Yeah, we can. Okay. So this from CDSU, we get to go to Officers Training Academy, Indian Military Academy, and Indian Naval Academy. This OTA is for Army, IMA is for Army, that is in Dehradun, and INA Naval Academy that I'm going. And another is for NCC if you are in National Cadet Corps, or Tech Entries, that is for the final year trainees who are in final years. There is a process in which the officers from the defense forces go to the college and universities, and they take the interviews individually. So that is also we can opt for. So, and if anybody has any query regarding this defense process, or anybody wants any kind of help from me, so this is clear, my phone number and this Gmail. So Raghavan bhaiya, you can switch off now the sharing of screen. Okay, I have done. Okay, so my yeah. Do you want to continue? Your voice is getting disconnected. नहीं अभी disconnect हो रहा है कुछ. Okay, so after all this introduction and the process to the defense forces, I would like to tell. So everybody can hear me, right? Yeah, we can hear you now. Okay. So Yeah, sorry to interrupt you, Nissan. Yeah, sorry to interrupt you, Nissan. I don't know why Vikram Joshi sir has raised their hand. So if sir, you can hear me, you can or we can unmute you. You can drop us message as well. Is it by mistake or it's by you have raised your hand? So Vikram Joshi sir. Okay, or I will unmute for him if he wanted to share anything. So are you done, Nissan? Nisant, are you done or you are sharing? I think we are not able to hear you. Okay, no problem. I think Nisant, you conveyed the message, and in short, you have also shared your contact number. So looking forward, I think we will share with the team and students, and we will also look forward for set up some separate sessions where you can go through more detail on these defense forces options. Okay, thank you, Nisant. Okay, Pradeep, कुछ मैसेज आया क्या सर का? No, we haven't heard back. So let me unmute. Yeah, maybe by mistake, or you can call in between. I will just meanwhile. I will take. So I think we have just couple of addresses, and next in line is Jitendra, but Jitendra also have some presentation. He was in some part of this meeting initially, but I think now he is not available. He is from 2008 batch, currently studying in the IIT Bombay, and he is quite active with our team as well, and always ready wherever career guidance or any sort of help he can contribute to the team. We really appreciate his efforts, but I think he is not able to because he has some presentations for his
course as well. No problem. So moving next to Ram Kres Lodi. Ram Kres, you there? Let me check. Yeah, I think Ram Kres is there. Ram Kres, try to cover in short. Let I have unmute you. Can you hear me? Yes, please. Hello everyone. No, so seems some disturbance at your end. Hello, hi everyone. Can you mute and again unmute? I think we are not able to hear you. Okay, seems some problem. Okay, you take some time. Meanwhile, I will see if next participants is who. Isu, you there? I am going to unmute you if you can. Yeah, I can see you, but I cannot listen you. आवाज नहीं आ रही है इशू आपकी. आप दिख रहे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही. चेक करो आपको ऑडियो. आपका अभी 1 मिनट दोबारा से मैंने किया. आपने पहले अनम्यूट करो अपने को. नहीं, अभी भी आपकी आवाज सुनाई दे रही. Yeah, issue. If you can hear us, just unmute yourself. Right now you have. Yeah, you can speak now. अनम्यूट तो कर दिया लेकिन पता नहीं कुछ या तो इशू है. Yeah, you can speak now. Issue. No, you are not audible. So no issue. Till Okay, then we no can problem. go back to Yeah, Ramkesh. you can check. Meanwhile, we will see if the next what we can do. So I think we are almost done. But one request, I was checking if Arna Madam is there or not. Yeah, I think there we are looking for some blessings or blessing from her. It is really patience that she is there and listening all Hello. of us. Hello. Yeah, Yeah, go ahead, Ramkesh. Ramkesh, Yes. wait for some time. I'm going to unmute, then we will come back to you. So I'm going to unmute Arna Madam. Arna Madam, can you hear us? You just need to unmute. Yeah, I think I can. हेलो. हाँ हेलो राघवेन. हाँ हाँ हेलो. हाँ मैडम, आ रही है आवाज आपकी. हाँ. हेलो अर्णा मैडम. हाँ हाँ. आपकी आवाज आ रही है. आपका ब्लेसिंग चाहिए था. आपका इतनी देर से आप देख रहे हैं. हम सब लोगों को सुना. आपके स्टूडेंट्स वी हैव so much of time with you, so we would like few words of blessings from you. Sure. प्रणाम. एक होल पर वीडियो नहीं आ रहा राघवेन. हाँ, वीडियो नहीं आ रहा आपका. तो बोल दूं. अच्छा, मेरा कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, आपका कुछ वो वीडियो उसमें रहता है ना, स्टार्ट वीडियो, उस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको. You need to click on camera button that is available on your screen. Ma'am. Yeah, now we can see you, ma'am.
But you are speaking on mute, ma'am. So you need to unmute yourself. Or Raghav Bhaiya, if you can. Ma'am, you are on mute. Yes. Yes, yeah, yes. now we can hear you and we can see you as well. Nice राघवेंद्र, to see you, madam. Yeah. थैंक यू वेरी मच। मैं तुमको तो भूल ही नहीं पाऊंगी कि ये गुड आफ्टरनून आपके प्रिंसिपल साहब को, जोशी सर को। और राघवेंद्र, तुम तो मैं वहां गए थे ना, कहाँ थे हो? तो आप ही से सब पूछा था, रास्ता याद है? आपने मेरी हेल्प की थी क्योंकि नेटवर्क नहीं चलता था, है ना, जब इतना नेट वो नहीं था। और फिर आपका फोन आया था कि मैडम कहाँ हो, जब मैं लौट रही थी। तब फिर दिल्ली में आप अंकित भी थे, अंकित और मनोज जैन। you remember so much, right? हाँ, मनोज जैन थे, तीनों थे। फिर एक बार अशोक जैन मुझे स्टेशन पे मिला। अंकित को मैं मिली हूँ ग्वालियर, मेरे फादर एडमिट थे। अंकित ने बहुत हेल्प की। ये धर्मेंद्र तिवारी था ना ग्वालियर में, राइट। तो उस टाइम मेरे फादर एडमिट हुए थे, तो उसने भी बहुत हेल्प किया था। उसी टाइम अंकित भी आया था ग्वालियर, या अंकित मेरे पास भी आके गया है। पर बहुत जरा से बिजी टाइम में से इसने टाइम निकाला, मुझे बहुत खुशी हुई। और जब आप लोग बच्चों के साथ मिलते हैं तो जोशी सर जैसा कह रहे थे कि फीलिंग्स को, जैसे ही तुम्हारा मैसेज आया कि वी नीड योर ब्लेसिंग्स, तो तभी से मैं इतनी अधिक खुश हो रही थी, बहुत मन में खुशी थी। और आज सुबह से तो कहना ही नहीं है। हाँ, मीटिंग जरूर थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि आइडिया नहीं था, पर आपकी टेक्नोलॉजी के कारण आज एक दूसरे को अपन वो कर पा रहे हैं ना, मिल पा रहे हैं। तो तुमको बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बहुत हेल्प किया। और इधर ये भी आए थे गोपाल गिल भी दतिया मेरे को मिलने आया था एक बार। ग्वालियर स्टेशन पे अशोक जैन भी मिला, और अंकित तो मिला 2-3 बार। खैर, और जोशी सर को भी देखा आपकी मीटिंग में, तो अच्छा लगा कि इतने दिन बाद सर भी मिले। एक बार नासिक में मिले थे सर, नासिक आए थे हमारे यहाँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो राघवेंद्र, आपने बहुत मेहनत की है और सभी बच्चों ने मेहनत की, सबको अच्छी जगह देख के बहुत अच्छा लगा। मेरा एक ही एम था, बच्चे घर के बाहर हैं, इनको बच्चों को कोई भी बीज गलत नहीं पड़ जाए। वही एक लगता था कि ये सब अच्छी जगह जाए, खूब अपना नाम करें, अपने माँ बाप का नाम करें, और अपने भारत का नाम करें, विदेशों में अपना नाम करें, दुनिया में नाम कमाएं। तो वही आपने करके दिखा दिया ना आज, है ना। तो बहुत खुशी होती है बच्चों को लाइक देख के। और सब आप अच्छे बनो, और वो है ना कि मेहनत जितनी करेंगे बच्चा उतना ही अच्छा बनता है। मेहनत को पसीने में बदलो, मेहनत से नसीब बदलता है, ये उतना ही सच है जितना हर रोज सूरज हर रोज निकलता है। इसी के साथ सब बच्चों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारी बधाइयां। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। Thank you, madam, so much. We still remember, I think those days where 5 बजे आप उठा के सीधे क्लासरूम में पहुंचवा देते थे बोर्ड एग्जाम्स में। 5 बजे ले जाती थी। और ये अंकित शायद भूला होगा, अंकित, राजेश और सुनील, ये तीनों रात को पढ़ते रहते थे, फिर सुबह तैयार होके आ जाते थे। और जैसे घंटी बजती मैं देखती हुई तीनों, अरे मैंने कहा तुम तैयार हो क्या, कि मुझे असेंबली में जाना है। फिर इनको ये वापस लौटते तो कहती नहीं आ जाओ, फिर पढ़ाती और जल्दी से फिर मैं दौड़ के जाती थी कि टाइम में असेंबली में पहुंच जाऊं। वो भूल नहीं सकते वो। और आप सबसे बड़ी खुशी मुझको ये है कि आप सब में वैल्यू बहुत है, वैल्यूज के साथ, स्किल्स के साथ आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कितनी हेल्प की है, अंकित ने भी कैंप वैम्प लगाया था ना इधर, है ना। और ये क्या रामेश्वर यादव, भरत, अभी क्या है बच्चों को, मैं तो शकल ही भूल गए थे, आप लोग को देखा तो पहचान गए थे। पर बहुत अच्छे बच्चे थे JNV शिवपुरी के, बहुत मन खुश हुआ। सब बहुत अच्छी जगह है, भगवान आप लोग को खूब ऊपर उठाए, और साथ में आपकी फैमिली, आपके बच्चों को भी खूब ऊपर उठाए। जैसे मैं आपको कहते थे वैसे ही बच्चों का हो, भारत में, दुनिया में पूरा नाम करें आपके बच्चे भी, माँ बाप का नाम, आप लोग को भी खूब खुशी हो, जो आज मुझको खुशी हो रही है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you for your blessing. वेलकम बच्चे, वेलकम। कभी भी आओ, है कभी भी आओ, मेरा घर हमेशा खुला है बच्चों के लिए, ठीक है।
नहीं, मुंबई में है ओके मैडम, मुंबई में काफी लोग हमारे जेएनवी के हैं, कभी मौका मिले तो हाँ बिल्कुल जाके बहुत अच्छा लगा। उनसे मिलके आ सकते हैं। आपको ढेर सारा धन्यवाद। हाँ थैंक थैंक यू यू सो मच फॉर हियर विद अस फॉर ओके दिस सब टॉपिक। बच्चों को हाँ गॉड ब्लेस यू ऑल। सो नेक्स्ट राम अब भूख लगी कि नहीं राघवेंद्र? नहीं, भूख अभी यहाँ पे रात का 2 बज अच्छा रहा है। अरे तो आपके वहां तो रात हो रही होगी ना? आप जग रहे हो? 2 बज रहा है ना? है, लेकिन नवोदय के आगे तो भूख नींद हाँ चली जाती है। सच बात है, ये तो सच है। थैंक यू। Thank you. So Ramkres, I am going to unmute you again. Check if you can. यस भैया। राघवेंद्र एक सेंटेंस बोलूंगी। हाँ yes, ये कि तुमने शुरू से मतलब कैसे पता नहीं टीचर्स डे पे मेरा फोन नंबर ढूंढ लेते थे और फोन करते थे, तो मैं कहती थी ना जब तो नेट भी इतना अच्छा नहीं, कहाँ से राघवेंद्र निकालते हो? तो बोलते थे कहीं से भी हो गए, आप कहीं पे भी हो गए, खुद के निकालूंगा। हाँ नहीं, दिल्ली में उस समय मैं काफी एक्टिव था, तो एनवीएस के नंबर ले लेता था आपसे डायरेक्ट। तो वो चीज मैं कभी भी नहीं बोलती। और अंकित ने भी बहुत हेल्प किया, बच्चे सभी अपने बैच के बहुत अच्छे निकले। नहीं चलो बहुत अच्छा, बहुत खुशी होती है। हाँ बहुत खुशी। ठीक है मैडम, फिर आपसे बात ओके ओके बाय, खुश रहो। या रामकृष्ण, ओवर टू यू। इसको वो करूँ? हाँ बंद करूँ ना कैसे? हाँ आप बंद कर दो अपना वीडियो। हाँ वही कर रही हूँ। हाँ रामकृष्ण, आई कैन टेक यू ऑन द स्पॉटलाइट, यू कैन। ये तो जान ही रहा। हेलो। या रामकृष्ण कंटिन्यू। जी नमस्कार सभी को। आज के इस वर्चुअल मीट में उपस्थित नवोदय विद्यालय समिति के डिप्टी कमिश्नर श्री विक्रम जोशी सर, जवाहर नवोदय विद्यालय शिवपुरी के प्राचार्य श्री पाला कृष्णा सर, नवोदय परिवार के मेरे अनुभवी शिक्षक और मेरे सीनियर्स और मेरे जूनियर्स। मैं रामकृष्ण लोधी जेएनवी शिवपुरी से 2019 में पास आउट हूँ। वर्तमान में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। वहां से मैं अपनी हिंदू कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई कर रहा हूँ। चूंकि इस मीटिंग में मुझसे बड़े अनुभवी एवं उच्च पदों पर पदस्थ लोग हैं जो मुझसे पहले संबोधित कर चुके हैं, और जो भी किसी को गाइडेंस की जरूरत थी, हेल्प वगैरह, उन्होंने सब बोल दिया है। और मैं तो इतना लेवल नहीं कि मैं कुछ गाइडेंस दे सकूं, क्योंकि अभी मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूं। मैं तो केवल इस मीट के माध्यम से मुझे इस छोटी सी जगह पहुंचने में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उनसे मैं अपने आने वाले छोटे भाइयों बहनों को अवगत कराना चाहता हूं, कि जिससे जो लोग अभी स्कूल में हैं उनको शायद इन कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, खासकर जो लोग अभी 10th 11th या 12th में हैं। क्योंकि जब हम नवोदय में 12वीं कक्षा में होते हैं तो हम में से करीब 40% ऐसे लोग होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि 12वीं के बाद कहाँ जाना है, क्या करना है। इसके भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे घर की आर्थिक स्थिति, जागरूकता की कमी, और भी कई कारण हो सकते हैं। तो मैं अब अपना खुद का एक्सपीरियंस सुनाना चाहता हूँ कि 12वीं के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मैं कहाँ गया। तो मार्च के महीने में जैसे पेपर खत्म हुए, मैं अपने घर आ गया। मेरे सामने दुविधा की थी कि मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। जैसा कि आमतौर पर होता है आजकल हम नवोदय, दक्षिणा फाउंडेशन, सुपरिटेंडेंट आदि का पेपर देते हैं। मैंने भी इनको दिया था, लेकिन इनसे कोई ज्यादा खास उम्मीद नहीं थी। अब घर आने के बाद मेरे पास सिर्फ 3 विकल्प थे, दक्षिणा फाउंडेशन, सुपरिटेंडेंट और दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबसे पहले दक्षिणा फाउंडेशन का परिणाम आया जिसमें मेरा नाम नहीं था। उसके बाद सुपरिटेंडेंट का इंटरव्यू कॉल आया जिसमें मेरा नाम इंटरव्यू में था, और मैंने इंटरव्यू दिया।
4 से 15 दिन बाद करीब इसका रिजल्ट आ गया, तो उसमें मुझे जगह नहीं मिली। इसके बाद तो मानो कुछ बचा ही नहीं था, केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा। इसी बीच उसके लिए नोटिफिकेशन आया, मैंने अप्लाई भी कर दिया। अब मेरे लिए यही लास्ट ऑप्शन था। 28 जून को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी फर्स्ट कट ऑफ निकाली, जिसमें मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल रहा था। लेकिन उस समय तक मुझे ये पता नहीं था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन हुआ, कितनी फीस है, क्या है। तो मैंने उस समय डिसाइड किया कि चलो देखते हैं, चल के जो भी होगा देखा जाएगा। तो 30 जून 2019 को मैं और मेरे 2 दोस्त दिल्ली के लिए रवाना हुए। 1 जुलाई को हम वहां पहुंचे और पहुंचते ही सीधे हम कॉलेज पहुंच गए। तो वहां जाके हम जानकारी लेने लगे कि फीस कितनी है, यहाँ हॉस्टल मिलेगा या नहीं। तो ऐसे पता करते करते हमको मालूम हुआ कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो साल का कम से कम 80 या 90 हजार चाहिए। यह सुनकर मैंने फैसला किया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं थी कि मैं साल का 80-90 हजार खर्च कर सकूं। यही सोचकर मैं अपने घर आ गया। लगभग 10 दिन गुजरने के बाद एक दिन रविशंकर सर, जो कि अभी वर्तमान में JNV शिवपुरी में लाइब्रेरियन के पद पर पदस्थ हैं, उन्होंने मुझे फोन किया और मुझसे कहा, रामकृष्ण कहाँ हो, कैसे हो। तो यह सुनकर मैं नर्वस तो था, फिर भी मैंने कुछ हिम्मत करके रवि सर को इस यथास्थिति से अवगत करा दिया। इसके बाद सर का जवाब था, चलो देखते हैं। उसके अगले 2-3 दिन बाद ना तो मैंने सर को कांटेक्ट किया और ना ही सर ने मुझे, और मुझे नहीं पता कि सर ने किससे क्या कहा। अगले 3 दिन बाद 20 जुलाई का दिन था, करीब 12 बजे होंगे। मेरे पास अचानक से फोन आया और उन्होंने मुझे बधाई दी कि आपका दाखला DU में हो गया है। पहले मुझे अजीब सा लगा कि ऐसे भी कोई बोल सकता है क्या। फिर उन्होंने कहा कि हम कोई नहीं, आपके JNV शिवपुरी के एलुमनी हैं, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप अपना एडमिशन ले लें, हम सब एलुमनी मिलकर तुम्हारी हर संभव सहायता करेंगे। और इसके दूसरे ही दिन मैं दिल्ली के लिए रवाना हुआ और संयोग से उस दिन वहाँ दाखला चालू थे और मैंने अपना एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में ले लिया। अभी वहाँ मेरी दूसरी साल है और एडमिशन लेने से अब तक JNV शिवपुरी के एलुमिनीज की तरफ से मुझे हर जगह सहायता मिली है। इसके लिए मैं आप सभी एलुमिनीज का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस दौरान मैंने कई चीजों पर गौर किया, जिनके बारे में मेरा यही मत है कि जो मुझसे छोटे अभी स्कूल में हैं, उनको शायद इस पर गौर करना चाहिए। जैसे कि हमेशा अपने शिक्षकों के संपर्क में रहें, उनसे समय समय पर परामर्श लेते रहें, और जो चीज हमें दूसरों से मिली है उसकी हमेशा कद्र करना सीखें और कभी हिम्मत ना हारें, क्योंकि घोर अंधेरे के बाद ही सूरज निकलता है। और अंत में मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे समाज के लोगों ने एक मिलकर एक समिति बनाई है, जिसका नाम धाय महादेव शिक्षा एवं जन कल्याण संस्था है। मैं भी इसका एक सदस्य हूँ और इस समिति का उद्देश्य है कि ग्रामीण शिक्षा स्तर को आगे बढ़ाना है, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इसके लिए काम करता हूँ। अभी शुरुआती चरण में इस संस्था ने अपनी एक नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग का शुभारंभ किया है, और साथ ही वहाँ उन्होंने अपने नवोदय विद्यालय के रजिस्ट्रेशन के लिए फ्री फॉर्म अप्लाई करने की सेवा भी दी है। और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ जाके काम करता हूँ। और अंत में मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, खासकर राघवेंद्र भैया का धन्यवाद। नमस्कार। Thank you, Ramkrishna, for sharing in your experience, and I think you are doing good work for guiding students in whatever capacity you have.
and we appreciate the Bay Alumni helped you for financially, and looking forward to make this bond better. Yeah, And just one comment from, yeah, sorry to interrupt you, Raghav Bhaiya. Have you hidden or somehow closed the principal sir video option? No, Or I there have. might be there might be a chance that he has joined from 19282, so he is requesting again and again to start Okay, his video. 192. Okay, I am trying to search principal, but that is not coming. So, okay, his number is different, right? So, 19282, is this from principal, sir? There might be a chance. I haven't got confirmation, but he is requesting again and again to allow his Okay, video, I and think the I same have request allowed. is I think raised by. I have allowed 19282. Yeah, Whoever is that, unmute them as well. Unmute them as no, well, I so they have done can put unmute. their comment. So I have done unmute. So can he hear? Yeah, so 19282, if you can hear us, please comment on it. Or principal sir, if you are most welcome to speak. Yeah, I think I have allowed. I will trying again for Isu also, because he is the last participants to address. Isu, I did it again. Check if you are able to. No, we are still not able to hear you, Isu. Hello. Yeah, now we can hear you. Yeah, try to cover issue in short. नहीं, आवाज नहीं आ रही issue. सॉरी, आई थिंक कुछ तुम्हारे एंड पे प्रॉब्लम है. एनीवे, एक बार ट्राई कर लेना बाद में भी. अभी प्रिंसिपल सर कनेक्ट हो पाए क्या? एक बार कॉल करके देख लो प्रदीप. Let me dial him. I will update you. राइट. मीनवाइल चेकिंग. या आवाज आ रही है issue? बोलो. हाँ, हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है. हाँ, myself Ishu Sharma. I am recently pass out in JNV. I study in BHU. सबसे पहले मेरे सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम JNV शिवपुरी. आप सभी का वर्चुअल एलुमनी में बहुत स्वागत है. ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, ऑल टीचर्स और मेरे बड़े भाइयों, इस एलुमनी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और सादर नमन है. यहाँ उपस्थित मेरे 2020 बैच के पास आउट कुछ सहपाठीगण, उनका भी बहुत स्वागत है. और इस मधुर बेला में उपस्थित मेरे छोटे भाई और बहनों का भी बहुत स्वागत है. मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हमारी इस मीटिंग का समय बहुत हो चुका है, तो बस स्विफ्टली में बस कुछ चंद लाइनें ही बोलना चाहूँगा. कश्तियाँ डूब जाती हैं, तूफान चले जाते हैं. कश्तियाँ डूब जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं. यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं. और अंत में बस 4 लाइन और. बहुत कुछ दिया है तुमने नवोदय हमको, बहुत कुछ दिया है तुमने नवोदय हमको. अब वक्त हमारा फर्ज निभाने का, अब वक्त हमारा फर्ज निभाने का. बहुत कर्जा है तुम्हारा हम पर, बहुत कर्जा है तुम्हारा हम पर. अब वक्त उस कर्जे को चुकाने का. मैं मानता हूँ कि तेरे इस कर्ज को कभी चुका नहीं पाऊंगा. मैं मानता हूँ कि तेरे इस कर्ज को कभी चुका नहीं पाऊंगा. पर क्या मैं तेरी दिखाई गई राह पर चल नहीं पाऊंगा. पर क्या मैं तेरी दिखाई गई राह पर चल नहीं पाऊंगा. थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू यीशु. अच्छे शब्दों के साथ तुमने नवोदय का शुक्रिया भी बोल दिया, और जो छोटे शॉर्ट में अपना जो बात बोली, appreciate your feelings for Navodaya. And just to all, so this is I think one of the rare time where in alumni we have covered most of the batches. 27 batches pass out, so like we seen from the 87, and this issue is the latest pass out students from JNV Shivpuri. So thanks a lot. Thanks for keeping a patience to hearing all. And
I know the numbers is getting decreased, but especially now who have remained, they have really patience, and I think this is shows the bond. We are almost there for 5 and more hours, but still we are not able to leave this connections and keep continuing. And I think on more request of the family, I will check if Bikram Joshi sir is still there and some. Till then, Raghav Bhaiya, if you can unmute Nishant, he has missed due to network issue. So he is urging for us minute only, if we can Okay. unmute him. Okay, I did. धन्यवाद राघवन भैया, सब सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ आ रही है। ओके, तो मेरी बात क्या, मैं बस इंट्रोडक्शन पे अटक गया था, फिर मेरा नेटवर्क कनेक्शन चला गया। तो मैं दो चीज है कि डिफेंस फोर्सेस में आने के लिए लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा फिजिक होना चाहिए या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। अभी नजरिए बदल रहा है। डिफेंस फोर्सेस में भी सब कुछ टेक्निकल होता जा रहा है। तो जो ये डर से डिफेंस फोर्सेस जो नहीं कर पाते क्योंकि हाइट कम है या फिर उनका फिजिक बहुत अच्छा नहीं है, तो अभी ऐसा नहीं है। स्पेशली नेवी और एयरफोर्स और इन आर्मी ऑल्सो the height criteria is very low. It means this maximum height required is minimum height required is 167. So I think many people who have 170 also don't opt for this forces. So ये उनके लिए क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी आप फिजिकल पे ज्यादा ध्यान मत दें। अगर ऑफिसर कैडर में जाना है, even in defense forces, you have to be technically sound, not physically, and the training which is imparted when you get into the academies, अगर आप ट्रेनिंग होने के बाद जो ट्रेनिंग मिलती है वो काफी होती है आपका फिजिक बनाने के लिए। तो आपको पहले से इतना जद्दोजहद ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो उसके ऊपर से कहूंगा कि आपको काम करना चाहिए अपने स्पीकिंग स्किल्स पे और अपनी टेक्निकल नॉलेज पे, या जो भी नॉलेज जो रिक्वायर्ड है, जो कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए चाहिए। तो चूंकि एनडीए का एग्जाम इज आल्सो यूपीएससी लेवल एग्जाम, सो दैट इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। So people should go for preparing for the exam if you are going for officer cadre. And the second thing which I would like to tell, anybody can call me or email me for any kind of guidance. The time which is we are having right now of corona, I would like to tell जो भी बचे हुए 68 participants I guess, सारे शुरुआत में 220 थे, फिर धीरे धीरे घटते चले गए संख्या, होता है। लाइक वी आर आल्सो टेकिंग सो मच ऑफ टाइम। सो 68 पार्टिसिपेंट्स, उनमें से जो भी पार्टिसिपेंट्स जो अभी तक अपने करियर को अभी बना नहीं पाए और दे आर स्टिल इन द प्रोग्रेस, उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना का टाइम है, जो लोग अभी घर पे हैं या फिर जो किन्हीं शहरों में प्रैक्टिस या तैयारियां कर रहे थे और नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया जो घर पे टाइम है उसको यूज करिए। मैं छुट्टी गया था घर पे, तो मैंने देखा लोगों ने अपना फिजिक बिल्ड कर लिया है, बिकॉज दे आर स्टेइंग इन होम, दे आर गेटिंग गुड फूड टू हैव। सो या तो आप फिजिक बनाइए या फिर अपना जो तैयारी का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू रखिए, ना कि ये सोच के कि कोरोना बंद होगा फिर जॉब्स खुलेंगी देन आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। प्लीज डोंट डू दिस। प्लीज यूज दिस कोरोना टाइम, डोंट वेस्ट टाइम ऑन गोइंग हियर एंड देयर एंड जस्ट वेटिंग कि कोरोना जाएगा तब मैं कंपटीशन एग्जाम की शुरुआत करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इट इज वेरी गुड फॉर दोज who are practicing right now and they are still continuing their practice for the preparation, maybe UPSC or anything. And UPSC is not very easy exam, so even if you start from 11th or 12th class, that is also may not be sufficient. So my final words are, please don't waste your time and please stay which are there around us. All of them are in very very prestigious jobs, and one thing that I got to learn from Navodaya is that you get to choose your interest, because there in Navodaya when I was in Navodaya मुझे पता चला कि किस चीज की तरफ मेरी रुचि है। एक एनडीए की डॉक्यूमेंट्री थी जो दिखाई गई थी by विश्वकर्मा सर, लाइब्रेरी सर। So that thing inspired me that yes, I can go for it. And when I checked the requirements, that these physical requirements are not very high, so I opted for it. Now right now I am in defense forces, I am in Indian Navy. Thank you so much Raghav bhaiya, thank you for connecting me again. Jai Hind. Okay, thank you Nishant. I appreciate that you still
persist to share your whatever words you have decided to convey to students or TD alumni. Thank you very much for your words. And I think Joshi sir confirmed, so we will have last words from him. But meanwhile, just I have 2 minutes one video as well, which is prepared by 2007 batch, led by Rahul Oja. He is also good active member and good contributor for this meet preparations. I am going to share my screen and share his video. Then we will have 1 or 2 minutes for Rahul as well. So Pradeep, let me know if you can see my screen. So this is a good contributions for this Corona message to the society by our 2007 batch. Pradeep, can you hear? Yeah, if you can make full screen, that will be much better. घर से बाहर तुम मत जाओ ना, फैली है ये बीमारी बाहर कोरोना। घर से बाहर तुम मत जाओ ना, फैली है ये बीमारी बाहर कोरोना। लोगों से रख अब ये जरा तू फासले, जब तलक खत्म न होए कोरोना। खतरनाक है ये वायरस तू समझ ले, सैनिटाइजर अपने साथ रख ले, हाथों को बार बार सैनिटाइज कर ले, पहन मास्क जब भी तू कहीं निकले। जिससे सारा जहां है डरता, कुछ भी नहीं उसे तू समझता। मेरा कहना तुझसे, मेरा चाहना तुझसे, तुझे बस घर में ही रहना। बना ले बस यही तू आदत अब से, कोरोना जाए ना जब तक जड़ से। घर से बाहर तुम मत जाओ ना, फैली है ये बीमारी बाहर कोरोना। जो होवे तू उदास जब घर बैठे, अपनी माँ के गोद में तू सर रख ले। सांसों पे उन्हीं का है हक ये समझ ले, कुछ और नहीं उनको तुझसे बढ़ के। बाहर पुलिस का लगा है पहरा, डॉक्टर भी नहीं है सोया है। घर घर खबर ये पहुंचा रही मीडिया, तुझे बस घर में ही रहना। बना ले बस यही तू आदत अब से, कोरोना जाए ना जब तक जड़ से। घर से बाहर तुम मत जाओ ना, फैली है ये बीमारी बाहर कोरोना। खतरनाक है ये वायरस तू समझ ले, सैनिटाइजर अपने साथ रख ले, हाथों को बार बार सैनिटाइज कर ले, पहन मास्क जब भी तू कहीं निकले। Very good contributions for 2007 batch for society. Very good message which was in need at the time when it was flowing. We can't hear you, Raga Bhaiya. Are you on mute or?
Yeah, I think I got mute myself. Okay, so I think very good message, what video you able to see from one of our batch to society at the time when it was required most. So I think with that we are done with the all addresses we have planned for question answer, but I don't think we can take. So hopefully we will capture all the messages in the chat box what is shared by the participant, and we will try to reach out or reply whenever we get time or for next sessions, especially for students queries. We are, as I already mentioned, we have continued to follow or continue to have the follow-up sessions for the career guidance. So we will address their queries there. And the participants who addressed today, we will make sure that they will also schedule some direct sessions with the student to get benefit on them. So with this, I think now I will go back to Joshi sir, then in last Ravi sir, we will invite. Sir, I unmute you. Can you hear? Raghavin, can you hear me now? Yes, I can hear you, sir. Raghavin, though it has been a long hours, but for me, nothing. It was so mesmerizing. It was so inspiring. I'm really thankful to your efforts personally. But I would like to thank everyone who came here, and I would like to thank the principal and the staff and the students who are there. And I was surprised that such a large number of people could get together and we could reconnect. I wanted to thank everyone there. See, Raghavin, what the idea is that it's a community, right? And we are a larger community and we have larger goals. And since you have started this and you have brought in everybody from every batch, teachers, students, and I was surprised to see that even Naruna ma'am was there. I was so glad to see her. And Deepak is there and who was doing all that job. Despite your busy schedules, you people are so busy. I can understand the way you lead your lives in the corporate sector. I can understand, but you are giving such long hours, such persistent hours to this cause. I'm glad and obliged. As far as my what I wanted to say now is that you know what happened a few months back, there was one teacher from us who was there at Shivpuri, art teacher. He got sick and it was because of Corona. He was very critical. I just made a call to Bharat, just one call. And can you believe that he managed everything and I had not to worry. And we could virtually succeed to, I mean, we succeeded in that, and he's safe and good now. This is what we all are. What I am here to say today to the principal over there and the staff there, that as long as I am at headquarters in NVS, and luckily I am at a good position, although it doesn't matter for personally to me, because if it can help something, is that it can help to students, it can help to my school, that's Shivpuri. You can convey in your own way that if principal has anything, any official thing, anything that gets stuck, if he wants any proposals, official, so he can always speak to me, he can always write to me, and he can always share to me. I'll be ready for that. A small initiative that I wanted then, when I was a teacher, I wanted to, because I had seen the poverty. I had come from what you have come from, and so I tried my, in those days also to help a bit out of my own pocket students, but that was not sufficient. But I feel so proud that that has taken such a shape, and it has come into that we are really in a position to help many. It's not always financially, it is morally, it is sometimes getting a link in a city, getting a person in some organization. It's such a huge help. So you people are linking that, your branches there, and the roots are there. I'm so thankful to you. I'm thankful to everybody who joined here in person. I should not be naming all, because otherwise it becomes that I named him and I couldn't name that. But personally, to me, I did job in many schools, but to be honest, nothing was before and nothing was after Shivpuri. I'm all dedicated to that.
maybe I had some personal reasons for doing this, all personal, because Raghavin, let me speak to you all, because you all are likely to come to my age. When you come to 55 and all, your own personal responsibilities grow so hard that it becomes very difficult to come out of your own circle. But now you have time. You have some time with you, and you are best using it. And maybe after a year and so, I too am free, and I'll be in a position to help you more in your commitment. With these words, I thank the principal, the staff, the students who were there, and tell them please that I'm always ready to help, because this is my school. I've never been a teacher there. I've been a student there, and I learned what life is actually there only. So Raghavin, thank you very much. I mean that for me, Shivpuri is everything. Nothing happened better than that. Nothing is going. I'm not expecting anything better than that. My students are like my sons, and I'm so proud of them. And they gave me so much respect that I never thought I am worthy of it. Please convey my blessings to all of them, those who are there and those who have left. My heart always goes for them. I recognize every one of them. If they make a call to me, I can tell them every nonsense they made, every prank they played, what they used to think, what they were. I mean, I have all memories of that. Thank you, Raghavin. Thank you for being there. And I hope I'll be in a better touch, and I'll be better connected. Thank you, Raghavin. Thank you once again, sir, for coming again and sharing the connection you have with JNV Shivpuri, and that will be still keep forever in our hearts. And I will just say, I still remember the way the Titanic story. I will just like to take this opportunity to remind whenever I see, and when you came and and teach us that chapter which have Titanic in the English. Titanic, right. I never forget the way you convey. And when that film came into existence, still whenever I see Titanic, the first things keep in mind is that you are the one who. So how you teach that chapter, that is still so fresh in the memories. That is the way I think each and small memories we have together with you, and I think same with the other batchmates or some other student alumni from the JNV will keep forever for your memories. Thank you again and I know whenever even for the JNV Shivpuri, I discuss with you some staff related, you always came forward and see whatever you can do, you will try best. So thank you again for being there for JNV Shivpuri, and when whatever need you can in your capacity, I think you are always there. Thank you so much for having you. Thank you, Ravi. Thank you very much. So with this, I over to Ravi sir to, I think I finally conclude. It is quite long sessions. I know there are a lot of commitment they missed for today, but this is what it happens. थैंक यू राघवन सर. क्या सर सुनाई दे रहा है सर? हाँ सर, आवाज आ रही है. जहां जलते हैं रोशनी बिखेर देते हैं, जहां जलते हैं रोशनी बिखेर देते हैं, चिरागों के कोई अपने मकान नहीं होते. मोस्ट रिस्पेक्टेड जोशी सर, प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड एल्यूमिनी टीम एंड डियर चिल्ड्रंस, सब लोगों को नमस्कार. जोशी सर की इस स्पीच सुन करके बिल्कुल निशब्द हो गया हूँ. इतना प्यार अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से, सच में एक गुरु शिष्य की जो परंपरा पुराने समय में सुनी थी, वही परंपरा मैं अनुभव कर रहा हूँ. चूंकि बहुत समय हो गया है, ज्यादा समय नहीं लेंगे. जोशी सर को भी हम थोड़ा सा याद दिलाना चाहते. सर, हम कुंडेश्वर से हैं, JNV फर्स्ट बैच के लूजर हैं. हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था और कुंडेश्वर में आपकी फर्स्ट पोस्टिंग थी, और क्या हम लोगों को पूरे गांव को इनलाइट किया था आपने. हम लोगों को कुछ भी अगर जरूरत होती थी, हमें याद है क्रिकेट का मैच खेलने के लिए हमें अगर सामान की जरूरत होती थी तो हम आपको अप्रोच करते थे, और आप कितने इजीली तरीके से हमको सामान देते थे. तो उस टाइम क्रिकेट की किट वगैरह उपलब्ध करा देते थे, और जो भी जरूरत गांव के लोगों को होती थी जोशी सर के पास जाते थे. उनके पास सबका हल था. वो एक सच्चे लीडर उस समय थे, हम लोगों की अभी भी स्मृति में वो हैं.
और आज की एलुमनी के लिए हम पूरी टीम एलुमनी को धन्यवाद करते हैं, अपने स्कूल की तरफ से, प्रिंसिपल सर की तरफ से, अपने सारे स्टाफ की तरफ से, और राघवेंद्र सर ने, उनकी जो टीम ने बहुत बढ़िया प्रयास एक अच्छा किया। और हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि इस तरह का कोई एक आयोजन बढ़िया तरीके का होना चाहिए। तो हमारे बच्चों के कई लोगों की बैटरी खत्म हो गई, सुनते सुनते कई लोगों का डाटा भी खत्म हो गया, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। और होपफुली जो सर ने कहा है JNV शिवपुरी, बस JNV शिवपुरी के लिए ही सब लोग जी रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसकी छवि और इसका जो विराट व्यक्तित्व आज हमें देखने को मिला, ये बना रहना चाहिए। हम भी यहाँ 2008 में आए थे, लाइब्रेरी की पोस्ट पर हैं, 12 साल से हम भी यहाँ सर्व कर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ के बच्चों में असीम प्रतिभा होती है, बस उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने, गाइड करने की जरूरत रहती है। बाकी ये लोग बहुत अच्छी अच्छी जगह निकलते रहे हैं और निकल रहे हैं। और सारी टीम एल्यूमिनी का अगर सहयोग रहेगा तो जैसे पहले स्कूल था उसी स्थिति में पहुंच जाएगा। हमारे प्रिंसिपल सर बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है। तो राघवेंद्र सर, आपके पेशेंस को, आपकी टीम के पेशेंस को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने ये वर्चुअल मीट की है। दिल की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद करते हैं और जोशी सर को भी प्रणाम करते हैं। उनका आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे। राघवेंद्र सर, धन्यवाद। Thank you, sir. So, and before we close, we just let you know that we are also recording this session. So even if somebody who not able to attend completely or not able to listen any particular alumni's their address, we will try to share the recording links as well. So that can be really useful for the students and alumni who missed it. I know it is a quite long sessions, nobody can continue, but on that line, this is what it happens, right? And I was just talking to one of other Navodayans who is from Jharkhand and USA itself, and what his experience was, they have scheduled they similar sort of schedule for 3 to 4 hours, and their meets ended 9 hours. So I was expecting that some similar, it is not going to finish in 3 hours what we planned for, and that is what happened. So we are almost close to 6 hours for continuously, and I appreciate to consistently help us to make it success, and all audience as well for making it smooth management of this meet. Otherwise, a lot of problems comes, especially at a large gathering of 100 to 200 people. So appreciate all the participants who patiently listens us, and whoever come forward to address. We try to touch different professions and whatever we could, but still few missed. So this is just a start, and being in the remote, now we will continue forward some such inspiring or motivational sessions for alumni and students going forward whenever get time. And with that, thank you for all of you for joining, and especially who alumni who help us, Pradeep consistently, and Rahul also help us for make this be successful, and all the coordinators whom I have shown the name from the different batches. They have cooperated, they have helped whenever in need. And I will say that it is not that whoever is want to come and join us, they are welcome. We have just tried to show what initiative we are working on, and going forward, if the more and more people will join, this will going to grow, because few of us cannot take it up to some heights, but obviously there are a lot of things we could not cover, and if more people will come, we can excel in whatever initiatives we are doing for JNV community. So thank you. I feel that we could not keep more on the Hindi, because that is what it's not tried, because we are not proper what I can say, हिंदी में वो उतना नहीं हो पाता, क्योंकि being in a profession of IT वो आदत सी हो गई है। तो मैं चाह रहा था कि मैंने कोशिश किया कि कोई साथ में हिंदी वाला एक coordinator मिल जाए, लेकिन we could not, but from next time onwards we will keep in mind, and so that it will be easy for convey to at larger level. So, Raghavendra ji, one minute I want to share. Yes, sure.
Good afternoon, all of you. Honorable Deputy Commissioner Vikram Joshi sir, and Honorable Bharat Yadav ji, Honorable Rameshwar sir, Honorable Ankit sir, and all alumni members, all my staff members. I express my heartfelt thanks from core of my heart, especially to Raghavendra ji, who has taken all the efforts. Okay. And these many days I have a sort of feeling that to contact Joshi sir personally, as today that feeling has left, as sir invited me for any purpose. Okay. So after seeing Joshi sir today, the hierarchy without maintaining that one, sir has come down to JNV Shivpuri to help that one. So I am very happy, sir. And not only happy, I am learning so many things, the way you interacted with us today, not only from sir and also from alumni. So in my almost from 94 onwards, I have been working in the Navodaya. As a Rangareddy school is the metropolitan city, many alumni students used to come. But after that, the highest number of students I saw from the JNV Shivpuri. I am very happy. And when I joined here, I have so much of disappointment. But the only motivation has come from staff as well as an alumni. So that make me to go forward. I have been working, striving for it. And definitely I take all the help and I coordinate all the members for keeping the JNV Shivpuri as it was earlier in the beginning batches when Joshi are working. It was my aim and I'm working for it. So thank you all of you. Thank you Joshi sir, and thank you all the alumni members and Raghavendra ji and my staff members. Thank you all of you. Thank you, sir. I think you requested for JNV Adilabad principal, but we could not, and Prasad, because we already have so much of backlog in process. But hopefully we will invite sometime in the next sessions if we will have, and looking forward for their blessings as well. Okay, so thank you all. With this, I think one more sentence from my side. So Kamle ma'am has waited for almost 4-5 hours, but we haven't got time and unmute her. So sorry on everyone's behalf. She is not online now. Her mobile battery down and she has to log out. Yeah. So, so really sorry from everyone's side. Yeah, that's it. Raga bhaiya. Yeah, I think we may have also missed somebody who have requested on the chat, because we are already on the backlog of the schedule. So we feel that